यार पिक्चर दाखल बैदे पिक्चर तಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮುಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ పిక్చర్ దగ్గర గుర్తుండేత పిక్చర్ దగ్గర మిలిటరీ దగ్గర తాత బేన్ తిండ్ರೆ సన్నీ నిగిలేదు ఓ దేవరే టాపిక్ చేంజ్ అనుపుగా ಜನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲವರ ಏರು Beautiful connect that is in the air and that is a boundary added to the scorecard in the very first legal delivery. A very good connect by Mr. Madhusudan, making no mistake in the very first legal delivery. He lost it in the air, certainly over the long mid-wicket region there. The second legal delivery in progress. Lofted again. That is another beautiful connect over the covers region. Possibly 2 more runs added to the scorecard, and the batsmen were eager to take that extra run, but fortunate enough, just 2 more runs added to the scorecard. That was a beautiful connect by Mr. Madhusudan, lofting it over the covers region. Another lofted again, high in the air, chance of a catch as well. The fielder underneath it, and he fumbles. He fumbles again. So another 2 more runs added to the scorecard. So 4 bowlers should be used. I repeat, the previous announcement will be changed. 4 bowlers to be used. One over each for each bowler. It's a dotted delivery, and fantastic delivery that was an off-cut one, possibly by Mr. Abhijit. I think Mr. Madhusudan trying to connect it, but unfortunately wasn't able to adjust the ball, I believe. Beauty, that is a ripper. Wonderful delivery again by Mr. Abhijit. After conceding 8 runs in the first 3 legal deliveries, he comes back with 2 dotted ones. Beautiful deliveries by him. I think Madhusudan unable to play that. Very good deliveries, certainly. And he plays it well again. Chance of wicket. The run out chance was on, but unfortunately the fielder again fumbled. So with that note, that's the completion of over number 1. The power play over is completed, and the score moves on to 9 on the board without any loss of a wicket. I repeat, 4 bowlers to be used, 1 over each for each bowler.
It's Mr. Divesh taking the responsibility of the second over for Team Kalakalki. Good delivery, very good delivery that was. Madhusudan trying to slice it but unable to do that. Possibly finding an edge, and a single has been added to the scorecard. I think the ground is certainly wet over there because of the weather. Low scoring match is definitely expected. We need to wait and watch how well the bowlers will come back in this match. And very good delivery. That is a very good delivery certainly, but Mr. Vaishak wasn't able to connect it well. Possibly the bye signal by the official, I believe. Good delivery. That is a pitch of a delivery by Mr. Divesh again. Madhusudan trying his best but unable to do that. Certainly, as I told earlier, this would be definitely a low scoring match, or as the tournament progresses, the scores will be really low because of the weather conditions and the ground here. A lot of moisture in the ground, so we are expecting some close finishes as well. Good delivery, very good delivery that was. Shravan, the keeper himself, definitely had a chance of a stumping. A slight smile in his face as well. Good delivery, very good delivery. Certainly that was targeted his pads, I believe. So another single added to the scorecard. With that note, it's the last legal delivery in progress. Good delivery, very good delivery. That is pretty much targeting the stumps. So with that note, that is the completion of over number 2, and the score moves on to 13 on the board. So it's the third over in progress. So it's Mr. Vishal taking the responsibility of the third over. Vaishak at the striker's end. So the third over in progress, Mr. Vishal to Mr. Vaishak. It's the first legal delivery in progress of the third over. The score has already moved up to 13 on the board. A certain planning's happening between the players of Team Kalakalki. Good delivery, very good delivery. That was a leg by signal by the official. So another single getting added to the scorecard. And the score now moves on to 14 on the board after the completion of the first legal delivery of the third over. Stuck! What a connect that was! A sloppy delivery by Mr. Vishal. Certainly down the leg side. Madhusudan making no mistake, lofting it over the fence, over the deep square leg region for a maximum. A wonderful connect to add 6 more runs to the scorecard of Team Skyhawk. 6 more runs added to the scorecard. And the score now moves on to 20 on the board. That was definitely a sloppy delivery down the leg side. Madhusudan making no mistake.
Again down the leg side. A sloppy fielding again. The chance of a run out as well, but fortunate enough, it's a wide +1. So 2 more runs getting added to the scorecard, and the score now moves on to 22 on the board. And chance of catch as well. That was pretty much closer to the fielder end. But fortunate enough, again a fumble. Again a fumble. This is not happening for Team Kalakalki. So 2 more runs getting added. I pardon, 3 more runs. Again, high in the air, top edge, field underneath it. Will he take it, Andy? That's again a drop. I repeat, things are definitely not going in the favor of Team Kalakalki here. The extras, the fumble between the fielders, the drop catches are definitely being costly for them. So far, it's 26 on the board after completion of 2.4 overs. Vaishak at the strikers end to face the 5th legal delivery of the 3rd over. Another short ball there, and it's given. It's wide, and the wicket gone. Vaishak has to depart. So the new man in comes is Mr. Swaroop for Team Skyhawks. So after the completion of the first 4 legal deliveries of over number 3, another short ball there. The batsman trying to pull it towards the deep square leg region. Certainly there's a chance for 2 runs as well, and a run out chance was definitely on. But fortunate enough, Madhusudan survives. Just a single getting added to the scorecard, and the score now moves on to 28 on the board. And he lost it. What a connect that was. That is definitely a calculative play by Mr. Madhusudan, shuffling himself across and lofting it over the fence, over the deep fine leg region for a maximum. This is what we call as a captain's knock here for Team Skyhawks. Wonderful batting performance so far, because in the first 3 overs, Skyhawks have already scored 34 runs. Isn't that a great total so far? It's a last over in progress. It's Mr. Arvind. Another short ball, he lofted in the air, chance of catch, will it be taken? And wonderful collect, and that was by Mr. Abhijit, making no mistake, running towards his left arm side and taking it really well. Swaroop departs.
So the new man in comes Mr. Prajwal at the strikers end for team Skyhawks. It's Arvind for the second time in the final over of this innings. Another short ball. Connected it really well towards the demitigated region. Certainly a single getting added to the scorecard. So another single getting added to the scorecard and the score moves on to 35 on the board. 4 more legal deliveries remaining. Can the bowlers of Team Kalakalki restrict and will help their batters to raise that target, because getting a high total in this weather is really difficult for them, and there's a chance of cheeky run by Mr. Madhusudan, but unfortunately he wasn't able to do that. Another short ball, and that's a wide. That's a wide call by the official there. So another extra run getting added to the scorecard, and the score now moves on to 36 on the board. Still 3 more to go. I repeat, 3 more legal deliveries remaining. And this time he connects it well, and the ball just travels toward the defined leg region for a boundary. Beautiful connection that was by Mr. Madhusudan, making no mistake. Shuffling himself across the line and connecting it really well for a boundary. So 4 more runs added to the scorecard, and the score now moves on to 40 on the board. It's the last legal delivery in progress of the first final over. Mr. Arvind to Mr. Madhusudan, captain leading from the front. The opener still facing the last legal delivery of this innings as well. Great connection, and this time it's huge. It's huge and really bigger than the previous one. Madhusudan. And that's the completion and the conclusion of the first innings. I pardon. Last 1 more to go. It's the last legal delivery in progress. Pardon for the mistake. Arvind to Madhusudan again. There was a chance, but fortunate enough for Madhusudan. So Madhusudan has to depart possibly. So with that note, that's the completion of over number 4, and the score moves on to 46 on about 47 is the target. I repeat, 47 is the target. 24 legal deliveries to go for Team Kalakalki.
Kalakalki, and their innings now going to start. Divesh, the opener, is now going to face the first delivery of their innings from the hands of Bipin, will be starting a fresh proceedings from the commentator box. And first ball of their innings is now coming up. This time just gone for a big one. और गेंद को इस वक्त खेलने ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट पिच विकेट पर। 1 रन का इजाफा हो चुका है और इस 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। तांडव प्रीमियर लीग 2023-2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला के दूसरे दिन का पहला मैच की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। और इस बीच गेंदबाज बिपिन बाएं हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, टॉप एज, मौका हो सकता है फील्डर के लिए। मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और एक बेहतरीन जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल। गेंद को इस वक्त उछाला था लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट। और गेंद हवा में उछले टॉप एज पर टकराने के बाद और 20 गज के दायरे के बाहर गेंद को इस वक्त लपक लिया गया फील्डर द्वारा अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए। तो पहला विकेट गिर चुका है कलाकल की क्रिकेटर्स का, तो 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और समर्थक पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए और इंतजार है इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज का। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 3 बैट्समैन। और नंबर 3 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए कलाकल की जो कि इस श्रृंखला से बाहर इस वक्त हो चुका है। पहले तीनों मैचेस में उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा है, तो यहाँ पर अगर 2 मैच भी वो जीत लेते हैं तो वहाँ पर नेट रन रेट के तौर पर 2 मैचेस को अगर उन्हें जीतते हैं तो बेहतर रन रेट के साथ उन्हें जीतना होगा। ये गेंद स्विंग किया, गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और जब तक गेंद को लंबा दौड़ लगाने के बाद फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। And this time he just hit that one after being getting right from the middle of the bat at the last moment। और 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और शरण अपना खाता इन 2 रनों के साथ खोल चुके हैं। बिपिन एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 4 रनों पर। जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त बिपिन जारी रखते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर। जबकि दिवेश सामना करते हुए इस बार जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट, बोल्ड स्लो डिलीवरी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन से इस बीच नहीं मिलेगा। जहां तक 47 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो इस वक्त कालाकल्की को चाहिए एक आक्रामक शुरुआत, एक्सप्लोसिव स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और अगली गेंद, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, केप्ट लोअर एट द लास्ट मोमेंट, वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड अ फैंटास्टिक ओवर केम टू एन एंड फ्रॉम बिपिन, कंसीडेड जस्ट 4 रन्स इन दिस ओवर। 4 रन सिर्फ बिपिन ने प्रदान किए, एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद कालाकल्की 47 रनों के लंबे से लक्ष्य का पीछा करते हुए इस वक्त सिर्फ 4 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। कल रात से सुबह तक जो घनी वर्षा जो कि हुई है उसके बदौलत यहाँ पर मैदान पर कुछ हद तक पानी यहाँ पर रुक चुका है, मैदान के ऑन साइड पर, लेग साइड पर, और लगभग पिच भी कुछ हद तक गीला हो चुका है, आउटफील्ड भी गीला हो चुका है और बल्लेबाजों को इस वक्त कुछ हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है खुलकर स्ट्रोक्स खेलने में। जमीन के सहारे गेंद ट्रैवल इस वक्त नहीं कर रही है ठीक तरह से। और यहाँ पर जो कि 43 रन बचे हुए 3 ओवर में जो इस वक्त कालाकल की क्रिकेटर्स को जो बनाने हैं, अगर बनाने हैं तो सिर्फ इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा उन्हें चौके और छक्के यहाँ पर लगाने होंगे, ज्यादातर चौके और छक्के उन्हें इस वक्त लगाने होंगे। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज की ओर किया, गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची लॉन्ग आउट की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, क्लीन पिकअप और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट V4 न्यूज़ 24/7 चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है श्रीमान मानिक इनके सारथ्य में। और कुल मिलाकर अगर इस श्रृंखला के बारे में कहा जाए तो इस बदली भरे वातावरण अंडर द क्लाउडी कंडीशंस ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करती हुई गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। Still they have a long way to go and 41 more runs now they have to score for victory। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गौरव गेंदबाजी करते हुए
ये के बॉल आउट ऑफ स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 गिर चुका है। मच स्ट्रेटर लाइन और गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहते थे लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करते हुए ऑफ स्टंप को उखाड़ कर ले गई और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो आउट होने वाले बल्लेबाज शरण आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए और 6 रनों के ऊपर दूसरा विकेट खो चुका है। कालागल की क्रिकेटर्स काफी संकट की स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ। नए बल्लेबाज अभी इस वक्त क्रीज पर मौजूद जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज गौरव जो कि एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार अभी के लिए दाहिने हाथ राउंड विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद तक पहुंचना चाहता और नहीं पहुंच पाए। गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। वेट कंडीशंस इस मैदान पर खासकर कल रात को जो वर्षा हुई है उसके कारण यहाँ पर लगभग मैदान भीग चुका है और इस बीच ये गेंद उछाला डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और ऐसा कहना पड़ेगा अब कालाकल की क्रिकेटर्स को सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। और गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त not quite mid wicket but he got a single for that stroke. One more good over in Skyhawks point of view came to an end. 4 runs came from this over as well like a first over and after 2 overs still the batsmen of Kalakalki searching for the right track. They managed to score only 8 runs on the board after completion of 2 overs. And 39 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs with the required run rate of exactly 19.5 runs per over. So what a fantastic tournament is now progressing here in the name of Tandav Premier League 2023 and a fantastic live coverage also we are just watching here on YouTube from V4NEWS 24/7 channel under the great leadership of Mr. Manik. और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला के मैचेस का तो आज इस श्रृंखला का दूसरे दिन का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता है। कुल मिलाकर आज 6 लीग मैचेस खेले जाएंगे। उसके बाद 3 प्ले ऑफ मैचेस क्वालिफायर नंबर 1 एलिमिनेटर क्वालिफायर नंबर 2 मैचेस खेले जाएंगे। उसके बाद आज शाम को यहाँ पर इस श्रृंखला का मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले जो कि यहाँ पर खेला जाएगा। तो हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि इस श्रृंखला इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला तांडव प्रीमियर लीग 2023-2023 के अंतर्गत आज हमें यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा इस बदली भरे वातावरण तले। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गुड वन दिस टाइम जस्ट वांटेड टू स्टीयरिंग इट विद द ऑफसाइड एरिया द लास्ट मोमेंट चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। रन से बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका इस वक्त 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद पटके हुई गेंद टॉप एज मौका हो सकता है मिड ऑन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को बाखूबी लपकने में सफल एक बेहतर जजमेंट के साथ। तो गेंद को उछालना चाहा था लेकिन मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद टॉप एज पर होती हुई सीधे मिड ऑन फील्डर द्वारा लपक ली गई और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका। तो अब ऐसा कहना पड़ेगा 10 गेंदें बाकी जो है उनमें बनाने उन्हें 49 रन और सिर्फ छक्के ही अब उन्हें इस मैच में वापस ला सकते हैं। 49 to get from remaining 10 deliveries. Lofted, straightforward catch into the hands of Whitish mid-on fielder. One more wicket fallen. तो विकेटों के ऊपर विकेट गिरते हुए और हर विकेट के पतन के साथ कालाकल की क्रिकेटर्स के ऊपर दबाव और बढ़ता हुआ। तो स्वरूप गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ। और तैयार lofted this time down to long on and one more wicket fallen. Consecutive wickets for the bowler and this is the wicket number 5 now for Kalkalki cricketers. 8 for the loss of 5 wicket. Disaster continuing here for the batsmen of Kalkalki cricketers now.
श्रवण का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए, और 9 गेंदों में अब चाहिए 49 रन, 39 रन चाहिए, माफ करना पड़ेगा, माफ कीजिए, 39 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 9 डिलीवरीज। इस बार स्टीयर किया बैकवर्ड पर जाने के बाद 1 रन के लिए श्रवण ने, और श्रवण के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 9 रनों पर, 5 विकेट के नुकसान पर, 9 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। स्वरूप बेहतर, absolutely fantastic one, get some extra bounce at the last moment and went into the hands of wicket keeper. Over number 3 has been Camstone, and just a single run conceded by Swaroop in this over and captured 2 wickets. And a fantastic over came student from him. 3 overs completed, 9 runs on the board, 5 wickets down, and now it's just a formalities remaining in this match. 38 to get from remaining 6 deliveries. अगर 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लगाते हैं तो निस्संदेह अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड यहां पर ना फेंकते इस अंतिम ओवर में तो यहां पर स्काई हॉक्स की विजय निश्चित है। और अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ, प्रज्वल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, श्रवण इस वक्त सब करने के लिए तैयार, और ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ ओवर द विकेट श्रवण के लिए, लेग स्टंप से बाहर, गेंद को छोड़ दिया इस वक्त, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर, स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू डबल फिगर्स, दैट मींस ऑन 10 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस बार उछालना चाहा श्रवण ने, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर, it's 11 for the loss of 5 wicket. 5 balls now left in overall calculation in their innings, 36 more runs now they have to score for victory. Edge and taken behind the stumps, has got a deflection on that at the last moment, and wicketkeeper behind the stumps finally made no mistake. 1 more wicket fallen, 11 for the loss of 6 wicket, and now just a formalities remaining in this match. तो मिथुन इस वक्त सामना करते हुए, बेहतर गेंद, absolutely fantastic one, went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 11 for the loss of 6 wickets. Just 3 balls left in their innings. फुल टॉस के तौर पर गेंद आई थी, लेकिन धीमी फुल टॉस, और गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। सिर्फ 2 गेंदें अब बाकी उनके बारे में। जस्ट 2 balls left in their innings. Edge and taken, 1 more wicket fallen, caught behind the wicket. This time the batsman got a nick on that at the last moment, and finally wicket keeper behind the stumps made no mistake. 11 for the loss of 7 wickets, and now just a last ball left in the innings. 36 runs required from last ball. Absolutely impossible task in front of the batsmen of Kalakalki cricketers. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕೂಡಲೇ this time misses, dot delivery, that's it. 35 runs comprehensive victory for team Skyhawks against Kalakalki cricketers, and with that 35 runs comprehensive victory, not they got a complete points, but they also increased their net run rate. So 35 runs comprehensive victory for them, big margin victory. And with that victory, they backed the complete points, and also increased their net run rate very well. So the next match, Golden Garuda will take over Mom Strikers, and that match starts with the Jeshwatwal. I request the
Shanmukh at the non-strikers end. Pranav at the non-strikers end. I pardon. Very good delivery by Mr. Vijay. The second legal delivery in progress. Vijay to Prathamesh. That's a beautiful delivery, certainly there. Wonderfully fielded by Mr. Pranam. Certainly the ball was just traveling away from the fielder, but certainly saved him an amount of runs for his team, I believe. So just a single added to the scorecard, and the score now moves on to 1 on the board after the completion of the first 2 legal deliveries. It's again Vijay for the third time. Right over. Good delivery, but that was a sloppy one. Definitely a sloppy delivery by Mr. Vijay. Certainly away from the batter. Down the leg side. Pranav making no mistake. Just angling it towards the deep fine leg region and rewarding with the 4 more runs to the scorecard. With that note, the score moves on to 5 on the board after the completion of the first 3 legal deliveries. So certainly field change is happening. Certain field change is happening here by the captain of team Monk Strikers. The match will be played for 4 overs. 1 bowler can bowl only 1 over, and the power play is on. It's a 4th legal delivery in progress, and beautiful delivery. That was pretty much in line onto the body line of Mr. Pranav. That is a dotted delivery by Mr. Vijay. Lofted in the air, chance of a catch. Will it be taken by Mr. Sachin? He wasn't able to reach to the ball as that was a power play over. The fielder was inside the 30-yard circle, but fortunate enough, just 2 more runs added to the scorecard. And the score now moves on to 7 on the board. It's the last legal delivery in progress of the first over. Power play is on. Last 1 legal delivery remaining. Will it be again utilized by the batters of Team Golden Garudas? Another short ball and lofted. That is handsomely lofted. Another maximum towards the deep square leg region. The little man proving his worth and adding some sensational shots to his books. So with that note, that's the completion of the over number 1. The score moves on to 13 on the board without any loss of a wicket. Certainly, this would be an expensive power play over for Team Monk Strikers. It's Ashwath taking the responsibility of the second over for Team Monk Strikers. Good delivery, very good delivery. That was a piece of delivery, I believe, by Mr. Ashwath, angling away from the batter. An outswinger, I can say. The bowler action is very much similar to Jasprit Bumrah, I believe. So with that note, it's the second legal delivery in progress of the second over. Ashwath to Prathamesh. Good delivery, very good delivery. Another dotted one.
Great comeback by the bowlers of a team among strikers so far. 1.2 overs up, 13 on the board. Definitely not a bad start for team among strikers here. And a good start for team Golden Garudas. It's the third legal delivery in progress of another good delivery, calculative line and length by Mr. Ashwath. The batsman is shuffling and the bowler is angling away from the batter, pretty much away from the batter towards the off stump. So now the score moves on to 14 on the board. 1.3 overs up. It's the fourth legal delivery in progress. Ashwath to Mr. Pranav for the fourth time. Right move. Another good delivery, another beautiful delivery away from the batter. Great line and length. Great line and length by Mr. Ashwath. Very much close to the wide line, but well inside the line. So that is definitely a legal delivery. A dotted one. Slower one. This time a slower delivery, but unfortunately he missed his line, trying to trick the batsman, but unfortunately he wasn't able to execute it really well. With that note, that was a wide delivery, a non-legal delivery, an extra one getting added to the scorecard. Another full toss delivery, but straight to the eyes of the fielder in deep square leg region. Chance of run out as well. That is the completion of the fifth legal delivery of the second over. Last one more to go. Score moves on to 16 on the board. The position is really not bad for both the teams here. It's Ashwath for the last time in the second over to Mr. Prathamesh. Good delivery, there was a chance for catch, straight towards the bowler. But fortunate enough, that is a single only added. So with that note, that's the completion of over number 2 and the score moves on to 17 on the board for the loss of none. So it's Mr. Sagar taking the responsibility of the third over. It's Prathamesh at the strikers in to face the first legal delivery of the third over. Sagar to Prathamesh. Shot! And that is a maximum! Yes! A wonderful connect, a short-arm delivery. Prathamesh making no mistake. Striking it really well towards the deep mid-wicket region for a maximum. So 6 more runs added to the scorecard and the score now moves on to 23. 23. So it's the second legal delivery in progress, I think. Sagar. The very first legal delivery after conceding a maximum. Will he come back well? Another short delivery. High in the air. Chance of a catch. Fielder be taken it. Yes. This time, Prathamesh departs. Unfortunately, he wasn't able to do much for his team. But one maximum would definitely help his team. So with that note, he's walking back to the pavilion. And the new man in comes is Mr. Supreet. So the new man in comes as Mr. Supreet in place of Prathamesh for team Golden Garudas.
It's the third legal delivery in progress of the third over. Good delivery, very good delivery. That was straight to the hands of the fielder, but a fumble possibly rewarding an extra run. Unfortunately, maybe the fielder wasn't able to collect it really well. A fumble happened and an extra run conceded. So with that, now the score moves on to a 25 on the board. Still 3 more legal deliveries remaining in the third over. Saga to Mr. Supreet. Good delivery, very good delivery. That was a calculative line and length straight to the keeper's hands. I think the batsman trying to chop it over the covers region, but unfortunately wasn't able to do that either. So the 5th legal delivery in progress. Another short ball, high in the air. Chance of a catch and taken. A comfortable catch. A comfortable catch for Mr. URWA and another wicket down. Supreet is walking back to the pavilion. The score moves on to a 25. 25 on the board after the loss of 2 wickets. Of the completion of 2.5 overs. And the new man in comes is Mr. Shanmukh. The 2 little masters in the middle. Shanmukh and Pranav. It's the last legal delivery in progress. Struck really well, but is it? Yes, the ball just travels and lands in the safer hands of the fielder, Mr. Vijay Saurav Gowda. So with that note, that's a completion of over number 3 and the score moves on to 25 on the board. Last 1 more over remaining. I believe it's Mr. Lakshmesh Malya taking the responsibility of the final over for Team Monk Strikers. The new man in comes Mr. Anish in place of Shanmukh. Struck well in the gap. Very well fielded by Mr. Vijay as well. Certainly the batsman had really hit hard in the gap, but I think Vijay had to cover up a lot of ground and collected it really well. Just conceded 2 more runs to the scorecard. It's the second legal delivery in the progress of the 4th over. Good delivery, very good delivery that was. What a running between the wickets that was. It's a wide and given. It's a wide and a run out. So 2 runs getting added to the scorecard. So the second legal delivery in progress. Struck in the air, shot of a catch and taken. Pranav is walking back again to the pavilion there. The new man at the non-striker's end was
So the new man in comes is Mr. Pratham at the striker's end in place of Pranav. Still 4 more legal deliveries remaining. With the third legal delivery in progress, Lakshmi is to Pratham. And that's a wide call by the official. It's a wide +1. So 2 more runs getting added to the scorecard. The score now moves on to 30. 31 on the board. I pardon, that was 30 on the board. So now the single getting added to the scorecard. Leg by signal with the officials as well. Struck. Very well struck, probably in the gap. Again, there was a chance of a run out, but because of the ground condition, I think the fielders are not able to do their best as per the requirement. I think last 2 more to go. Good delivery, very good delivery that was. A leg by signal by the official. It's a last legal delivery in progress. It's the last legal delivery in progress. Obeyed at the striker's end. 34 on the board. Muvattanalku. Struck in the end. Chance of a catch and taken really well. So that's another wicket down. So another wicket down. With that note, that's the completion of over number 4 and the completion of this innings as well. 34 on the board. 35 is a target in the next 24 legal deliveries for team Monk Strikers. यार पिक्चर दाखल बाई पिक्चर तಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮುಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ పిక్చర్ తక్కువ గుర్తుండేత పిక్చర్ తగలత్త మిలిటరీ తగలత్త బేన్ తిండ్ರೆ సన్నీ నిగిలేదు ఓ దేవరే టాపిక్ చేంజ్ అనుపుగా ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ
Right, the target is 35 for Mom Striker set by Golden Garuda, and the inning start. First ball cracks it away through the offside into the gap as well, and he's got the boundary for that. Just stroked on the back foot and punched it away through the offside between cover and extra cover by the batsman. And because of that, he's got a boundary. This is an absolutely positive start. Just stand and delivered. And that boundary brings the runs account open now for Mount Strikers. And next one from the bowler. इस बार again the सीधे विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. गेंद हालांकि थोड़ी सी उछाल लेते हुए अंतिम क्षण में गेंद को उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहता जिस तरीके की का स्ट्रोक पिछले गेंद पर उन्होंने खेला था, लेकिन इस बार गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए बल्ले का बाहरी किनारा टकराया और विकेट कीपर जो विकेट के पीछे गेंद की ताक में थे उन्होंने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है. पहला विकेट गिर चुका है मॉम स्ट्राइकर्स का. विजय की पारी समाप्त. 4 रन बनाने के बाद वो पेविलियन वापस लौटते हुए और मॉम स्ट्राइकर्स अपना पहला विकेट खो चुका है. तो जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट तांडव प्रीमियर लीग 2023-2023 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए और इस श्रृंखला का दूसरे दिन का दूसरा मैच का द्वितीयार्ध यहां पर खेला जाता हुआ और इस वक्त संघर्ष जारी है गोल्डन गरुडास और मॉम स्ट्राइकर्स के बीच में. दोनों टीमों के लिए ये मैच इस वक्त काफी जरूरी हो चुका है और कुल मिलाकर इस श्रृंखला के टीमों के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो 6 प्रतिष्ठित टीमें 6 प्रेस्टिजियस टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट. और इस बीच बेहतर गेंद, इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन से नहीं मिलेगा. दर्शन नए बल्लेबाज जो कि अपना पहली गेंद वो खेल चुके हैं. दाहिना तरफ विकेट, ये गेंद टप है, मौका फील्डर के लिए, मिड ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे आते हैं और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. टॉप पे जो विकेट निकले थे और आखिरकार मिड ऑफ 20 गज के दायरे के कुछ बाहर इस कैच को बेहतर तरीके से लपका फील्डर ने और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है. जश्न इस वक्त बनाते हुए गोल्डन गरुडास के खिलाड़ी और जहां तक सवाल है गोल्डन गरुडास के डगआउट में जो कि गोल्डन गरुडास के जो कि झंडे इस वक्त लहराते हुए खुशी के साथ लहराते हुए ये झंडे और निस्संदेह अपने टीम के खिलाड़ियों का मनोबल यहां पर बढ़ाते हुए 2 विकेटें 4 रनों पर खो चुका है और निस्संदेह जैसे नीलाकाश तले बादल इस वक्त पूरी तरह नीलाकाश को ढक चुके हैं, उसी तरह परेशानियों के बादल इस वक्त यहां पर मॉम स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों पर मंडराते हुए. सागर नए बल्लेबाज ड्राइव किया, स्ट्रोक्स के साथ दौड़ पड़े, रन मिलेगा. इस बीच 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर. निस्संदेह मॉम स्ट्राइकर्स का जहां तक सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर शुरुआत. अगर उन्हें 35 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निर्धारित 4 ओवर में. और इस बीच षणमुख गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार पहली बार सचिन सामना करने के लिए तैयार. ड्राइव किया खूबसूरती के साथ वाइडिश लॉन्ग की दिशा में, 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, कुछ दौड़ लगाने के बाद वाइडिश लॉन्ग सीमा रेखा के अंदर फील्डर जब तक गेंद को रोके बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. 7 for the loss of 2 wicket. First over completed, 28 to get, 3 overs remaining. The present run rate is 7. Required run rate is exactly 9.33. That means they have to score 28 in 18 deliveries with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और यहाँ पर देखते हैं अगले 3 ओवर में मैच किसकी ओर पलटता है. तो गेंदबाज the bowler starts the fresh proceedings from that side and is wearing a number 31 jersey. The bowler starts the fresh proceedings. दर्शन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सागर. और जहां तक का सवाल है, पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और दूसरा ओवर मॉन्क स्ट्राइकर्स की पारी में इस वक्त शुरू होता हुआ. मॉन्क स्ट्राइकर्स को इस वक्त बनाने 28 रन बचे हुए 18 गेंदों में. तो दर्शन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. सागर सामना करते हुए बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है. नीलाकाश को पूरी तरह बादले इस वक्त ढक चुके हैं और वर्षा की संभावना हो सकती है, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जब तक ये श्रृंखला आज शाम तक समाप्त ना हो, वर्षा ना आए. तो जहां तक
सवाल है नई ओवर की पहली गेंद का। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए पहली गेंद हल्के से गेंद को पुश किया और जब तक गेंद को गली की दिशा में फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और दर्शन फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट सचिन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इनसाइड एज, लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट। और जहां तक सवाल है रनों का तो रन्स मिले 1। The next match, Kings will take over Garuda Gang, and because of that, I request the captains of these two teams to please to report to the stage immediately for the toss procedure with organizers. और जहां तक सवाल है ये गेंद bowled out. This time the ball just kissing the off stump and bells are disturbed. तो गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप को छू कर निकल चुके थे, बेल्स डिस्टर्ब हो चुके थे और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। सागर का विकेट गिर चुका है गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और यहां पर गेंद ऑफ स्टंप को छू कर निकल गई और एक और विकेट गिर चुका, तीसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಗರುಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. और गेंदबाज दर्शन I think is gone. I think it's got an inside edge on that, and the ball stuck to his middle of stump, just top of the stumps. Bells are disturbed, and one more wicket fallen. So consecutive wickets for the batsman, for the bowler, in fact. And now, Monk strikers are now looking deep in trouble. 9 for the loss of 4 wicket. Second over in progress. Really a testing time continuing here for the batsmen of Monk strikers now. जब पहली गेंद पर विजय ने चौका झड़ा था तब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि मॉन्क्स क्रिकेटर्स के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद बेहतरीन वापसी करते हुए यहां पर गोल्डन गरुडास के गेंदबाजों ने परिस्थिति को अपने नियंत्रण में करने में सफल हो चुके हैं अब तक। और दर्शन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मीश सामना करने के लिए तैयार, नए बल्लेबाज और दर्शन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए delivery, and comparing to the previous two deliveries, this is a much better one. The ball just passed between his batted leg, much straighter leg, deviating a little bit, and just stuck to his middle off stump. Bells are disturbed. So hat trick for Darshan, and this is an absolutely perfect hat trick. 3 clean bowls in 3 successive deliveries, 3 consecutive deliveries, and because of that, he's got the hat trick in this tournament. Absolutely fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowler Darshan. In fact, it's a 9 for the loss of 5 wicket. A difficult time continuing here for the batsmen of Monk strikers at this situation. जहां तक सवाल है देखते हैं अपना चौथा विकेट ले पाते हैं या नहीं दर्शन। अगली गेंद ये गेंद फुल टॉस, जस्ट टर्न्स इट अवे दिस टाइम, गॉट इज आउट ऑफ द बैट और गली पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। Scoreboard moving up to double figures, that means on 10 for the loss of 5 wicket. 2 overs completed, and after 2 overs still the batsmen of Monk strikers just searching for the right track. So 25 to get in remaining 2 overs, that means in 12 deliveries with a required run rate of exactly 12.5 runs per over. Still they have a long way to go. Pranav
The bowler is now brought into the attack wearing number 33 jersey. Is now going to start the fresh proceedings from the commentator box end और वो इस वक्त तक गेंदबाजी करेंगे लंबे कद के खिलाड़ी जो कि इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। प्रीतम जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 25 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी। निस्संदेह जहां तक चौके और छक्कों की जरूरत है, छक्कों का सवाल है, यहाँ पर चौके और छक्कों की जरूरत है मॉन्क्स क्रिकेटर्स को, मॉन्क्स स्ट्राइकर्स को इस मैच में वापस आने के लिए। बैकफुट पर गए, गेंद को इस वक्त दिशा दी, एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 24 नीडेड इन रिमेनिंग 11 बॉल्स नाउ। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार lofted but not quite mid-wicket and he just paid the penalty for that. Long on fielder made no mistake. 1 more wicket fallen. The problems are now more building up for them. 11 for the loss of 6 wickets and they are looking deep in trouble. So Pranav got the breakthrough and the number 6 batsman of Monk Strikers is now back into the pavilion. We are just waiting for the number 8 batsman. 24 needed in remaining 10 balls. Big strokes are badly required for the batsmen of Monk Strikers to get back into this match. और नए बल्लेबाज नंबर 8 batsman is now comes out to the middle for Monk Strikers और वो इस वक्त स्ट्राइकर रन की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए प्रणव गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज प्रणाम का आगमन यहां पर हो चुका है और प्रणव इस वक्त प्रणाम के लिए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद पटके विकेट टॉप एज गेंद को इस वक्त पुल किया था खूबसूरती के साथ, गैप चुनते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे लेकिन 2 स्क्वायरर काफी स्क्वायरर और दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक लपकने में असफल, गेंद तक पहुंचने में असफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 15 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे ही चंद और स्ट्रोक्स की जरूरत इस वक्त मॉन्क स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को इस मैच में कमबैक करने के लिए। प्रणव इस बार ड्राइव किया हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। 19 रन चाहिए, 8 गेंदें बाकी, 8 बॉल्स लेफ्ट, 19 रन रिक्वायर्ड और चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत है मॉन्क स्ट्राइकर्स को, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं। और इस वक्त प्रणव अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इनटू द गैप एज वेल और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। सेकंड बाउंड्री इन दिस ओवर और ये चौका ऐसा कहना पड़ेगा मॉन्क स्ट्राइकर्स के उम्मीदों को यहां पर बरकरार रख चुका है। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ प्रीतम के बल्ले से थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाला खूबसूरती के साथ, वाइड लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच गैप पर और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है। 20 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 15 रिक्वायर्ड, 7 बॉल्स लेफ्ट। व्हाट अ मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर और इस बीच अंतिम बार इस ओवर में प्रणव गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। इस बीच ये गेंद इस बार चूंकि सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा था, गेंद पैरों पर टकराई और लेग बाय का इशारा, 1 रन का इजाफा। 21 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 3 ओवर्स कंप्लीटेड, 14 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट ओवर नाउ, दैट मींस इन 60 ओवर्स। तो 14 रन अंतिम ओवर में बनाने हैं। जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, ऐसा कहना पड़ेगा 1 या 2 चौका या छक्का यहां पर जरूर लगाना होगा मॉन्क स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को कमबैक करने के लिए इस अंतिम ओवर में। जहां तक सवाल है इस वक्त गोल्डन गरुड़ास के गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए काफी नपी तुली यानी किफायती गेंदबाजी इस अंतिम ओवर में। So in the next match, Kings after won the toss, they elected to field first against Garuda Gang. The match number 12 of this tournament coming up live exclusively right in front of you right after this match. So back to this game, 14 needed from last over. और इस बीच फील्डिंग में जमावट करते हुए गेंदबाज प्रथमेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइकर एंड का, तो प्रीतम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और
4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और इस बीच पहली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रथमेश। यह गेंद ढीली गेंद थी लेकिन गेंद को इस वक्त पुल करने में असफल, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 21 रनों पर। 21 for the loss of 6 wickets. 22 in fact, 22 for the loss of 6 wickets. 13 required from 5 deliveries. 12 for tie, 13 for win, and 5 balls left in overall calculation in their innings. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार था इन हाथों पर तो विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार टॉप एज मौका हो सकता है, फील्डर जी नहीं गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्ड और बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। गेंद जमीन पर टिप्पा खाने के बाद मिड ऑफ पर अपने दिशा को कुछ हद तक बदली, दाईं ओर गई, जब तक इनको फील्ड करके कुछ हड़बड़ाहट के साथ कुछ मिस फील्ड के बाद फील्डर थ्रो करे, बल्लेबाज 2 रन पूर्ण कर चुके थे। 24 नाउ, 11 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट 4 balls, 10 for tie, 11 for win, and 4 balls remaining. Prathamesh, this time just gone for a big one, but not succeeded. हालांकि विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटकाए लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद ब्लैक बैक लेग जिसे कहते हैं और सब कुछ सुरक्षित उसके लिए, लेकिन डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। 3 गेंदें बाकी, 11 रन चाहिए। 11 runs required from 3 deliveries. अब ऐसा कहना पड़ेगा मॉन्क्स स्ट्राइकर्स को इस मैच में चौके छक्के ही विजय दिला सकते हैं इन बचे हुए 3 गेंदों में। प्रथमेश लॉफ्ट डाउन टू लॉन्ग ऑन, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। 6 and a boundary required in the last 2 deliveries. 10 runs to get from last 2 balls. And this is the last chance in front of the batsmen of Monk strikers. 10 required of last 2 deliveries. Prathamesh dotted, beaten, gone through for a quick single and get it comfortably. And now it's almost all over for Monk strikers if the bowler cannot bowl no ball or void in this last delivery of their innings. 9 runs to get from last ball, 8 for tie, 9 for win, and the last ball of the match is now coming up. Prathamesh bowls. Is bar, off the bar, spectra wide, 8 required. अगर एक और वाइड यहाँ पर फेंकते तो शायद यहाँ पर मौका हो सकता है मॉन्क स्ट्राइकर्स को मैच से टाई करने का, क्योंकि एक और वाइड गिरता है तो 6 रन अंतिम ओवर में टाई के लिए बनाने होंगे। जी नहीं, इस बार उछाला लगो by 1 run, just a single run short from their target, and a 1 run thrilling victory for Golden Garuda against Monk strikers. And with that single run thrilling victory, Monk strikers are back the complete points. So a fantastic match ended. Match number 11 of this tournament ended just short while ago. At match number 12 of this tournament is now coming up live exclusively right in front of you with the just short while between Garuda Gang versus Kings.
So yes, the match will commence between Garuda Gang versus Team Kings. It's Nishant at the strikers end, Yashwan at the non-strikers end, Rakshit to start the proceedings for Team Kings. Good delivery, very good delivery that was. A leg cut to one. And it was expected by the keeper as well. Unfortunately, Nishant wasn't able to connect it either. So that is a dotted delivery to start this innings. A very good bowling that was by Mr. Rakshit. The second legal delivery in progress of the first over. Lofted in the air, chance of a catch. Will it be taken by Mr. Nagaraj? And he takes it well. Nishant is walking back to the pavilion. That was another very good delivery. A leg cut to one. Nishant wasn't able to loft it or slice it over the covers region. Unfortunately, the ball just lands in the safe hands of the fielder, Mr. Nagaraj. And the first wicket down, the first breakthrough, the first blood has been taken by Mr. Rakshit. It's a third legal delivery in progress. And that is another boundary. And the very first legal delivery faced by Mr. Jatin. He was predetermined with that. Read the bowler's mind really well. Shuffled himself across the wickets and played it really well towards the deep square leg region for a boundary. So 4 more runs added to the scorecard, and the score now moves on to 4 on the board after the completion of the first 3 legal deliveries. And that's a wide. That is a wide call by the officials. Away from the batter, certainly. So, a non-legal delivery. An extra run getting added to the scorecard. Good delivery, very good delivery that was. Pretty much onto the block hole, straight to the fielder's hands as well. It was straight towards Mr. Lingaraj. But certainly a single only added to the scorecard, and the score now moves on to 6 on the board. It's Yashwan at the striker's end. Rakshit for the 5th time. A good delivery, very good delivery that was again by Mr. Rakshit. An off-cutter one this time. Yashwan was happy with the single, a gentle touch and run. Good delivery, very good delivery that was. And that's a dotted delivery, so that's a completion of over number 1. I request Mr. Darshan to please come in and collect a man of the match award of Team Golden Garudas.
And the score moves on to 7 on the board after completion of the first over for the loss of 1. So it's Mr. Suresh taking the responsibility of the second over for Team Kings. I request officials to please continue the match as soon as possible. The second over in progress, Mr. Suresh to Mr. Yashwan. Good delivery, very good delivery that was. Angling towards the stumps, I believe, by Mr. Suresh. And Yashwan was happy with that. Single again, a gentle touch and run. He's not making any sort of experimental connects here. He's just giving away the strikes, rotating the strikes and giving the strike back to Mr. Jatin. And that man is trying his best there, circling the gap, and that is about to add it to the scorecard. The batsman, apart in the fielder at the deep long off region, certainly had a chance. But unfortunately, he wasn't able to reach the ball, and the ball just traveled, and the fumble maybe rewarded those extra 4 runs to the scorecard, and the score now moves on to 12 on the board. This 2 legal deliveries completed in the second over. Good delivery, very good delivery. That was a low full toss one, but the pace was filled in by Mr. Suresh. Good delivery, very good delivery. That was a short one on good length, I believe, by Mr. Suresh. Fortunately, the batsman wasn't able to execute it, and he tries his best, but the ball just travels towards the keeper's hands, and that is the dotted delivery registered towards the scorecard of team Golden Garudas. Strikes in the air, a chance of a catch, and will it be taken? Yes! A wonderful catch taken by Mr. Haim. A good effort, certainly. Sending back Mr. Yashwan back to the pavilion. So the new man in comes is Mr. Nitin. Will place off for Yashwan. It's the last legal delivery in progress of the second over by Mr. Suresh. And the next match will be played between team Skyhawks and Golden Garudas. I request the players of both the teams, please be ready for the next match. Good delivery, very good delivery. That was again Mr. Nitin trying his best. Mr. Nitin trying his best to check. So with that note, that's the completion of over number 2, and the score moves on to 14 on the board. So the new bowler in comes is Mr. Adesh.
With the third over in progress, Mr. Adish to take the responsibility of the third over to Mr. Nitin. Full toss, and that is a sloppy. That is a sloppy delivery by Mr. Adish, making the mistake and getting punished by Mr. Nitin. The batsman making no mistake, lofting it over the fence, over the deep square leg region, certainly for a maximum. So 6 more runs added to the scorecard, and the score now moves on to 20 on the board after the completion of 2.1 overs. It's a second legal delivery in progress. It's a second legal delivery to Mr. Nitin by Mr. Adish. The score has already moved up to 20 on the board so far. Good delivery, but away from the batter, down the leg side, wide call by the official. I think certainly the Kings bowlers are giving away some extra runs here. Some sloppy deliveries, some non-legal deliveries, and good delivery, very good delivery that was. The fielder fumbled. Very good effort, very good fielding effort that was by Mr. Hrithwik, but certainly the fielder at the 30-yard circle missed his effort because of fumble, probably because the ground and the condition is definitely not in the favor of the fielders. Struck in the air, chance of catch, Rakshit. Fumble, that was a very good effort there. That was a very good effort by Mr. Rakshit, certainly trying his best, running from the keeper's end towards the edge of the 30-yard circle, but unfortunately he wasn't able to hold on to that. He made his ground. So nevertheless, a life given to Mr. Nitin. Again, 2 more runs getting added to the scorecard, and the score moves on to 25 on the board at the completion of 2.3 overs. Good delivery, very good delivery. That was a judgmental one because the batsman was ready for a reverse hit or a switch hit. And the bowler made some mind game here, bowling away from the batter. Good delivery and down the leg side, and again a fumble by the fielder there. That was down the fine leg region. A fumble again by the fielder. Another boundary getting added to the scorecard. The fielders are fumbling again and again. They are giving away runs in the form of extras, in the form of sloppy fielding, missing the line in length. The score moves on to 29. 29 on the board. Last legal delivery in progress of the third over. Struck. Chance of a catch. Hrithwik. And fumbled. Again fumbled. What are the fielders of Team Kings doing? They're leaving their catches. They're dropping catches. They're dropping boundaries here. I think Garuda gang are living with luck. Aren't they? Each and every delivery, each and every runs has been somewhere in the lucky charm for them.
drop catches, fumble in the fields, extra deliveries. I think the things aren't going in the favor of Kings so far. So after the completion of 3 overs, the score moves on to 31. 31. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 31. Still 1 more over remaining. 6 more legal deliveries remaining. It's Mr. Nagaraj taking the responsibility of the final over. And he strikes. That was another cheeky play by Mr. Jatin. Shuffling across away from the wickets. Challenging the bowler and striking it well toward the define leg region for another boundary. This is certainly going above the expectations of Team Kings here. 35 so far. Nevertheless, they can still restrict the batters from here because 35 is not at all a big score so far. Another reverse sweep, but fortunate enough that is the dotted delivery straight towards the keeper's hands. Good connection, good calculation by Mr. Nagaraj again. Following the batsman, though Mr. Jatin shuffled himself. It's a 4th legal delivery in progress. Another good delivery, another good over. Certainly Mr. Nagaraj doing his best. In the first 4 legal deliveries, though the first ball was of a cheeky connection by Mr. Jatin, in the next 3 legal deliveries, they have just given 2 runs. He is pretty much economical so far, finding his line and length cleanly for Team Kings. And struck. This is huge. This is definitely huge by Mr. Jatin. Very good delivery. But Jatin had a different answer. Very good connection over the long on region for a maximum away from the fielders. Certainly, it's the last legal delivery in progress of the final over. $43 on the board. It's the last legal delivery in progress. 43. Strikes it well. Straight to the fielder there. Again, a certain fumble by the fielders, but 2 more runs added to the scorecard. With that note, that's the completion of over number 4. That's the completion of the first innings. The score moves on to 45 on the board. 46 is the target. 24 ಓಟಗಳ ಗುರಿ. So I request the captains of Team Skyhawks and Golden Garudas. Get set for the laughter. यार पिक्चर दाखल बैदे पिक्चर तಪ್ಪುದರ್ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ मुझे ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮೀಟರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅನ್ಪುಗ
ತಿರುಗಿತ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರೇ So, their openers are the crease and the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद उनकी पारी का लेकर इस वक्त तैयार 40 रन बनाने हैं निर्धारित 4 ओवर में और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। यह गेंद टॉप इस बार गेंद को उछाला है, गेंद मिड विकेट सीमा लगा बाहर हो चुकी है यहाँ पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त खेलते हुए और इस बार थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाला खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है। रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है 6 रनों के लिए और जहां तक सवाल है इस वक्त 6 रनों का तो एक बेहतर शुरुआत यहां पर बल्लेबाज कर चुके हैं। लिंगराज छक्के के साथ अपना खाता खोल चुके हैं और निशांत एक बार फिर से तैयार था इन ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लंगोल पर लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। इस बार दूसरा छक्का लगातार लगाना चाहता लेकिन इस बार मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं और प्लेसमेंट भी गलत और आखिरकार लगॉन के फील्डर ने कोई गलती नहीं की तो 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का तो इस वक्त इंतजार है नए बल्लेबाज का नंबर 3 बल्लेबाज का और देखते हैं कौन से बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी पर उतरते हैं। नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ निस्संदेह जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका 46 रनों के लंबे से लक्ष्य तक अगर पहुंचना है तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक विस्फोटक बल्लेबाजी एक्सप्लोसिव बैटिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में और गेंदबाज इस वक्त तैयार था तो ओवर द विकेट ये गेंद बेहतर एब्सोल्युटली फुल लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद का पीछा करना चाहा चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंदबाजी और फिर से एक बार निशांत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाला इस वक्त वाइड गोल की दिशा में गेंद वहां पर लपक ली जा चुकी है और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। थोड़े से सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाला था लेकिन आखिरकार
जहां तक सवाल है खाली क्षेत्र का, तो खाली क्षेत्र ढूंढने में असफल और आखिरकार गेंद को लपक लिया गया इस वक्त वाडिस लॉन्गॉन पर। दूसरा विकेट इस ओवर में गिर चुका है, निशांत की गेंद पर यह विकेट गिर चुका है। 2 विकेट निशांत इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं लिंगराज और ऋत्विक के रूप में, और 6 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, नंबर 4 बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है और 2 विकेटें पहले ओवर में गिर जाने के बाद दबाव कुछ हद तक इस वक्त दिखाई देता है किंग्स के बल्लेबाजों के ऊपर। जहां तक एक साझेदारी का सवाल है, जस्ट टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप, इस वक्त उन्हें जरूरत है एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की, अगर उन्हें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तो। दोपहर का वक्त 12 इस वक्त बज चुके हैं और बादलों से इस वक्त नीलाकाश ढक चुका है, बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। वर्षा की चंद बूंदे इस वक्त मैदान पर गिरते हुए, लेकिन कुछ ज्यादा वर्षा इस वक्त नहीं गिर रही है और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा खेल के लिए पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। नए बल्लेबाज आदेश यानी आदि इस वक्त क्रीज पर मौजूद और निशांत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथों पर द विकेट, फुल टॉस, बल्ले का बाहरी किनारा, नॉट क्वाइट मिडल गेट, गली पर गेंद पहुंची, रन नहीं मिलेगा। आदेश ने मना किया नॉट सेकंड बल्लेबाज को रन लेने को आने से और आखिरकार कोई क्षति नहीं। फिर से एक बार निशांत गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद का पीछा करना चाहता, पहले पूरी तरह सफल हो गए थे लेकिन गेंद को अंतिम क्षण में विकेट से हटते हुए गेंद को इस वक्त पुल करना चाहा, चूंकि गेंद उनके पहुंच से बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फुल टॉस, लॉफ्ट इट, दिस टाइम आई थिंक इट्स गॉट द डिस्टेंस, यस इट डज, इट्स अ बिग मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट किया था गेंद को और खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त उछाल दिया लंग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। गेंद सीधे कमेंटेटर बॉक्स के दीवार पर इस वक्त आकर टकरा चुकी है। एक बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आदेश के बल्ले से लगता हुआ। 13 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 13 for the loss of 2 wicket and 33 required in remaining 3 overs. 3 overs, 33 required. The required run rate for them is exactly 11 runs per over at this situation. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर यहां पर उतरते हैं। तो हमसे दूर वाले छोर से जर्सी नंबर 19 पहने हुए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार सुप्रीत, जिन्होंने कोई गेंद का अब तक सामना नहीं किया है और फील्डिंग में जमावट चलते हुए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। 6 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है। टीम स्काई हॉक्स, टीम गोल्डन गरुडास, टीम कालाकल की किंग्स गरुड़ा गैंग और मॉन्क स्ट्राइकर्स। 6 प्रतिष्ठित टीमें, 6 prestigious teams are participating in this tournament in a league stage। और जहां तक सवाल है नई ओवर की पहली गेंद, गेंदबाज ये गेंद इस बार जब किया जस्ट ओवर द कवर फील्डर सेट डाउन टू अ डीप कवर पॉइंट। और जब तक गेंद को डीप कवर पॉइंट पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। कवर पॉइंट फील्डर के दाईं ओर से गेंद इस वक्त निकले थे और आखिरकार 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। 17 गेंदें बाकी और 32 रन चाहिए। 32 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 17 बॉल्स। और आदि इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडल गेट, बल्ले के बीचों बीच गेंद को कनेक्शन करने में सफल। आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ठीक तरह से खेल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन से इस पिच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 14 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज सौरभ गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लंबे रन अप के साथ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार आदि के लिए।
रिवर्स शॉट खेलना चाहा शायद बल्ले का बाहरी किनारा, बल्ले का किनारा इस वक्त टकराया था। जिस तरह से विकेट कीपर ने अपने हाथ सिर पर धर लिए, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेंद और बल्ले का संपर्क यहां पर हुआ था। और लेकिन इस कैच को विकेट कीपर छोड़ चुके हैं और इस बीच कोई क्षति नहीं बल्लेबाज के लिए। स्कोर बोर्ड स्टेज एट 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ किंग्स के बल्लेबाजों के ऊपर। और सौरभ एक बार फिर से तैयार, ये गेंद चूके एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी। हालांकि पहले गेंदबाज को विचलित करने का प्रयास किया था, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयत्न में, पहले रिवर्स शॉट खेलने के प्रयत्न में वो मुड़ गए पूरी तरफ, लेकिन आखिरकार गेंद को स्ट्रेट बैटेड खेलना चाहा अपने इरादे को बदलते हुए, लेकिन गेंद पर वो स्ट्रेट बैटेड स्ट्रोक्स इससे पहले खेले, गेंद के बल्ले को वंचित करते हुए स्टंप्स से ऊपर की ओर से होते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। इस बार यह गेंद, इस बार स्ट्रोक खूबसूरत इनटू द गैप, 1 बाउंस इनटू द फेंस। So at last, Adesh breaking the shackles after being playing a 3 consecutive dot deliveries. This time has got the boundary for that. In this delivery, लंबा ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच इस वक्त खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ। डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 13 बॉल्स रिमाइनिंग, 28 रन्स मोर रिक्वायर्ड। और सौरभ एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद रिवर्स शॉट टॉप एज, लेकिन गेंद निकल चुकी है फाइन इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए और हालांकि गेंद टॉप एज पर टकराए थे, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के सिर के ऊपर से निकली और काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में सफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। चौका नंबर 2 इस ओवर में लगता हुआ आदेश यानी आदि के बल्ले से और इस चौके के साथ ऐसा कहना पड़ेगा किंग्स अपने इरादों को, उम्मीदों को बरकरार रख चुका है। 2 ओवर की समाप्ति 22 रन, 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। 2 विकेट के नुकसान पर 24 टू गेट इन रिमेनिंग 12 बॉल्स। 12 गेंदे 24 रन बनाने हैं और इस ओवर में कम से कम अगर 15 रन बटोरता है किंग्स 11 तो इस मैच में वापस आ सकता है। और देखते हैं यहां पर गेंदबाजी का क्रम कौन जारी रखता है कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से। दर्शकों की तादाद इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट तांडव प्रीमियर लीग 2023 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई इस बदली भरे वातावरण में एक एक्सक्यूजिट बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट V4 न्यूज 24/7 चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है श्रीमान मानिक इनके सारथ्य में। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए विजय के लिए कड़ा संघर्ष इस वक्त जारी है इस मैच में किंग्स और गरुड़ा गैंग के बीच में। गेंदबाज नंबर 10 जर्सी पहने हुए इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स की ओर से जतिन। फुल टॉस, गॉल इज आउटसाइड एज और इस बार विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए। 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 रन द स्कोर, 23 स्टिल मोर रन दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। 23 रन बन चुके हैं, 23 रन और बनाने हैं और गेंदे बाकी है सिर्फ 11। आदि स्ट्राइक पर आ चुके हैं इस वक्त। ये गेंद पटके हुई गेंद टॉप एज और आसान सा कैच शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में। गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा था आदेश ने, लेकिन बल्लेबाज से जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया था उससे कुछ ज्यादा गेंद उछाल लेते हुए टॉप एज पर टकराई। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर ने कोई गलती नहीं की और आदि यानी आदेश की पारी पर यहां पर पर्दा गिर चुका है। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 23 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 10 बॉल्स नाउ। द इक्वेशन सीम्स टू बी मच स्टिफर फॉर देम। हेम नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त किंग्स को सिर्फ चौके या छक्के ही अब इस मैच में वापस ला सकते हैं। जतिन
फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त तैयार नए बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन हेम इस वक्त सामना करते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और जतिन दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए हेम के लिए अगली गेंद इस बार उछालना चाहा, चूंकि बेहतर गेंद थी, कुछ ज्यादा तकफ सबसे बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। कदम का इस्तेमाल करते हुए 2 कदम आगे जरूर निकले बल्लेबाज ने गेंद को उछालना चाहा, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन्स नहीं मिला। डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ 9 गेंदें बाकी 23 रन चाहिए और जतिन इस बार उछाला लगोल पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन शायद कैच को वहां पर लपक नहीं पाए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, तो वहां पर एक बेहतर प्रयत्न किया। इस वक्त शायद सीमा रेखा के अंदर गेंद को उन्होंने रोका। जिस तरीके से गेंदबाज ने ताली बजाकर लंगॉन फील्डर का अभिवादन किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर गेंद को रोका गया था बेहतर तरीके से सीमा रेखा के अंदर। सिर्फ एक मात्र रन उनके खाते में जुड़ता हुआ 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 22 needed and 8 balls now left in their innings. Just 8 balls left in their innings. जतिन अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। ना तो ओवर द विकेट फुल टॉस स्विंग किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर वहां पर मौजूद, क्लीन कलेक्शन, 1 रन मिलेगा, 1 ही रन मिलेगा। शायद दूसरा रन मिल सकता था अगर बल्लेबाज दौड़ते, लेकिन बल्लेबाज ने कुछ ज्यादा जोखिम उठाना यहां पर मुनासिब नहीं समझा और इस वजह से सिर्फ 1 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 7 balls left, 21 required. Still the problems are continuing here for the batsmen of Kings now. और जतिन इस वक्त तैयार था ना तो ओवर द विकेट, ये गेंद टॉप एज, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे गली पर रन्स नहीं मिलेगा। डॉट गेंद और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है। सो डॉट बॉल टू एंड द ओवर, 3 overs gone, 25 for the loss of 3 wicket, 21 required from last over now. यशवंत गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ किंग्स की पारी में 21 रन बनाने, 21 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट ओवर और ऐसा कहना पड़ेगा किंग्स को अब चौके या छक्के इस मैच में वापस ला सकते हैं और यशवंत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। सुप्रीत जो कि आरंभिक बल्लेबाज के हैसियत से मैदान पर उतरते अभी तक क्रीज पर डटे हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त यशवंत की गेंदों का। ओवर की पहली गेंद इस बार ढीली गेंद जरूर थी, स्टंप्स एक्सपोज करके चलना चाहता, रन के लिए दौड़ पड़े। ओवर थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। मौका वहां पर जरूर था लेकिन गंवाते हुए विकेट कीपर और 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 19 रन अब चाहिए, 5 गेंदें बाकी, 19 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग ओनली 5 डिलीवरीज और इस वक्त अगली गेंद लेकर यशवंत तैयार था। इन्हें हाथों पर था विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछलना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। 28 नाउ, 18 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 4 डिलीवरीज। चौके और छक्कों की सख्त दरकार इस वक्त किंग्स 11 को इस मैच में वापस आने के लिए और इस बीच फील्डिंग में जमावट करते हुए गेंदबाज यशवंत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। लेफ्टी बैट्समैन बाएं हाथ के बल्लेबाज हेम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। हेम के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ठीक सीमा रेखा के पास एक फील्डर तैनात इस वक्त किया गया है। डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी ठीक सीमा रेखा के पास तैनात। बाएं हाथ के बल्लेबाज हेम के लिए फुल टॉस, लेकिन गेंद को उछालना चाहा, चूंकि धीमी गेंद थी परिवर्तन के तौर पर और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। अब अंतिम अवकाश, द लास्ट चांस, 3 sixes रिक्वायर्ड इन द लास्ट 3 डिलीवरीज। 3 छक्कों की जरूरत बचे हुए 3 गेंदों में। इस बार स्विंग किया डीप मिड विकेट पर मिसफील्ड और बल्लेबाज इस बीच 2 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 16 रन चाहिए अब 2 गेंदों में
अब ऐसा कहना पड़ेगा इन बचे हुए 2 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो निस्संदेह यहाँ पर गरुड़ा गैंग की विजय निश्चित है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए। और देखते हैं यहाँ पर गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। बचे हुए 2 गेंदों में सही गेंद, इस बार टॉप एज और आसान सा कैच स्वयं गेंदबाज द्वारा फॉलो थ्रू में कॉट एंड बोल्ड। एंड नाउ it's almost all over for Kings. 16 required from last ball. Absolutely impossible task in front of them. तो अंतिम गेंद बाकी है और उस अंतिम गेंद का सामना करने के लिए नए बल्लेबाज नागराज का आगमन यहां पर हो चुका है। The last ball of the match is now coming up. और यशवंत इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार नागराज के लिए। सिर्फ औपचारिकताएं ही अब इस मैच में बाकी रह गई है। 16 रन चाहिए अंतिम गेंद पर यशवंत नागराज के लिए। टफ एज simply taken just inside the fence. One more wicket fallen. That's it. Comprehensive victory by 15 runs for Garuda Gang against the Kings, and with that 15 runs comprehensive victory, they back the complete points. So match number 3 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Tandav Premier League 2023 has been came to an end, which won by Garuda Gang by 15 runs, defeated Kings, and with that victory they back the complete point. Next match number 13 of this tournament is now coming up now exclusively just in front of you, between Team Skyhawks versus the Golden Garuda, and that match is now coming up loud exclusively right in front of you. The match number 13 of this tournament. Selshade, Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. Get set for the lobster. यार पिक्चर दाखल भाई दे पिक्चर तो पुदर सर्कस ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ आतेना मुझे प्राणीला ఇచ్చప్ప ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮೀಟರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗ್ತೆ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ Selshade, Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore.
यार पिक्चर दाखल बाई देत पिक्चर द पुदर सर्कस ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ आतेना मुझे प्राणीला ఇచ్చప్ప ಎಂಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲೆ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ Full toss delivery and lofted. In the end, chance of a catch. Will it be taken? A great effort coming up, and that is an exceptional effort. 30-yard circle to running up towards the deep intricate fence and taking that catch was an exceptional effort by Mr. Darshan. What a catch that was! Because that kind of catch is highly applauded, because running from the 30-yard circle towards the boundary line of deep intricate region and taking that high catch is a very good effort by the bowler, by the fielder of team Golden Garudas. A big round of applause to him. So adding to that, the new man in comes is Mr. The new man in comes Swaroop. Well played, straight to the hands of the fielder, their chance of run out as well, and another single getting added to the scorecard. So with that note, after the completion of the first two illegal deliveries, one on the board so far. And that's a legal delivery. That is a legal delivery. Well inside the line. Good delivery, very good delivery that was. Fumble by the fielder, but certainly it's only the single getting added. Another short ball, and that is in the gap, probably going towards the fence there. Will it be the boundary? Yes. Greatly sliced by Mr. Swaroop and over the fielder's head. A boundary getting added to the scorecard. It's a no ball, is it? Yes. No ball, boundary, so free hit is on. Lofted in the air. No ball, and that was a free hit chance. So single again getting added. Very good delivery that is. Officials. 5 balls up, last one more to go. Over. I pardon, over. It's Darshan. The score moves on to 8 on the board after completion of the first over. It's Darshan taking the responsibility of the second over. It's Darshan to Mr. Swaroop. I request the captains to please continue the match as soon as possible. We are running short of time already.
And that's down the leg side. That's away from the batter. A wide call with official. So the next run getting added to the scorecard. It's again a good delivery, chance of run out as well, and a very good fielding efforts happening by the fielders of Team Golden Garuda. Certainly single only getting added to the scorecards, and the score now moves on to 10 on the board at the completion of the first illegal delivery of the second over. Another short ball, and the batsman trying to slice it over the covers region but unable to do that. Good delivery, very good delivery that was. The deflection of the bats certainly giving another run. I think the bowlers of Team Golden Garudas are doing their job really well, finding their line and length right, not allowing the batsmen to free their arms and connect some good shots. Maybe they are finding the body line of the batter and following the bowler. Struck well. Probably in the gap, but towards the deep square leg region. A very good fielding effort by Mr. Anish again. It's the fifth legal delivery in progress of the second over. Good delivery. The batsman was trying to play a beautiful try towards the covers region, but finding an edge, and it's a single added to the scorecard. It's the last legal delivery in progress. It's 12 on the board. Last one more to... 13 on the board. Last one more to go. Good delivery. Very good delivery there. And that's the over number 2 completed. 13 on the board. Great spell by both the bowlers. The first 2 overs for Team Golden Garudas. Score moves on to 13 on the board after completion of the first 2 overs. It's a third over in progress of match number Match number 13. For the next match, I request Team Kalakalki and Team Kings to please be ready. Lofted in the air and straight to the hands of the fielder, Mr. Darshan again. And another wicket down. Mr. Vaishak is walking back to the pavilion. Darshan. The new man in comes is Mr. Prajwal in place of Vaishak.
So the second legal delivery in progress. ಹಲೋ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿರ್ನ ಕುಡರಿಗು ಪೋಡಿದ ಕಡಲು ಜಾರದು ಉಡಲು ಬುಲೆಯಿನ ಯೋಂಜೆ ನಾಡಿದು ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಗು ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಮೆರೆಗು ಭವಿಷ್ಯಟ್ಟಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೋಕೆದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಅರಿನು ಎದುಕೊನೊಡಂದು ಕುಡೋರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. Officials, please continue. Officials, we'll just pause the match from here. We'll just pause the match from here. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಚಿನ್ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿಡ್ ಅರಿಗು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೊಡಂದು ಬಿನೈ ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಾಗರಾಜಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳದೇವಿ. ಓ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ತಾಯಿ. Yes, officials, let's get back with the match here. So the third over in progress after completion of 2.3 overs. The score was out of 15 on the board. It's Pranav to Mr. Jnanesh. It's again a single getting added to the scorecard, and the score now moves on to 15 on the board. In comes Prajwal at the strikers end to face the fifth legal delivery of the second over. Pardon, the third over.
Good delivery, very good delivery. That was pretty much onto the block hole, but certainly the batsman wasn't able to drive it well. Probably he was trying to strike a big one. Struck well, straight overs the bowler's head, but the fielder was very well placed. And the ball just lands in the safe hands of the fielder at long off region, and Pranav strikes. So that's the completion of over number 3, and the score moves on to 16 on the board. It's the last over in progress, and the score is 16 only after the completion of the 3 overs for Team Skyhawks. So the new bowler in comes Mr. Prathamesh to bowl the final over for Team Golden Garudas. I request officials to please continue the match as soon as possible. It's taking a lot of time here. We have to finish probably 6 more matches for the dates. So we don't have much time to spare. Good delivery, very good delivery away from the batter, and that is a legal delivery. So a dotted one to start this over by Mr. Prathamesh. The score was on to 16 on the board after completion of 3.1 overs. Good delivery, very good delivery that is. I think the decent line in length has been bowling by the bowlers of Team Golden Garudas. We need to wait and watch. Can the batters of Team Skyhawks deliver one big hit? At least one big hit at this point of time to accelerate their scorecard. That was a clear plum. But fortunate enough, the LBW is not there in this tournament. So with that note, it's again a single added to the scorecard. The deflection of the bats being saved, Mr. Datta. And he strikes. Is it a big one? And yes, that was very well struck by Mr. Rajwal over the long off region for a maximum. This was anticipated by Team Skyhawks. They were expecting this from their batters, and that is a maximum added to the scorecard, and the score now moves on to 24 on the board. It's still 2 more legal deliveries remaining in this innings. Another big hit, can we expect? And that's a wide. That is a wide call by the officials away from the batter. The pressure is on the bowler. One big hit and the pressure has changed towards the bowler. So 2 more to go. 25 on the board. And that was a good one. And that's a wide call by the officials as well. Away from the batter, away from the wide line. And 2 back-to-back non-legal deliveries. The bowler trying to go away from the batter, and that is going more away. Straight to the fielder's hand. Certainly a very good effort that was. And a run out. Mr. Datta has to depart, but fortunate enough, a single has been added to the scorecard, and Prajwal gets back the strike to face the final delivery of the final over of this innings. It's 26 on the board. 27 on the board. So it's the last legal delivery in progress. Prajwal.
and gone. A very good keeping effort that was by Mr. Shanmukh, I believe. So that's a completion of over number 4, and the score moves on to 27 on the board. 28 is the target. Not at all a bad target for team Golden Garudas. I think Skyhawks have a very good bowling lineup where they can defend this total. So let's wait and watch with the next innings. So we then we'll take a short break. I also request the captains of our team Kalakalki and Team Kings. The captains of Team Kalakalki and Team Kings, please report at the commentators desk for the toss. Get set for the lobster. यार पिक्चर दाखल भाई देर पिक्चर द पुदर सर्कस ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ आतेना मुझे प्राणीला ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿದ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ Sunshine Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. Now the target is 28 and the innings now going to start. First ball of the innings is now coming up. पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. गोल्डन गरुड़ा के लिए 28 रन निर्धारित 4 ओवर में उन्हें बनाने हैं. They have to score 28 runs in the stipulated 4 overs with a required run rate of exactly 7 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. यह गेंद रिवर्स शॉट इन द एयर एंड टेकन कंफर्टेबली. Not quite middling it, and because of that he just paid the penalty for that. और गेंद सीधे पहुंचे इस वक्त पॉइंट फील्डर के हाथों में. आखिरकार पॉइंट फील्डर ने कोई गलती नहीं की तो इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है 1 रनों के योग पर गोल्डन गरुड़ा का. और पहला ओवर उनका यहां पर प्रगति पर. मिनट पर रिक्वेस्ट द कैप्टन्स ऑफ टीम कालाकलकी एंड टीम किंग्स प्लीज टू बी रिपोर्टेड हियर फॉर द टॉस प्रोसीजर. So they lost their first wicket just short while ago, and now they are 1 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Still 27 more runs now they have to score for victory in remaining 3.4 overs. That means in 22 deliveries. और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का तो प्रथम आगमन हो चुका है. मैच नंबर 4 of the day 2 of this prestigious cricket tournament Tandav Premier League 2023 is now progressing here. और नए बल्लेबाज इस वक्त प्रथम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई पहला ओवर एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. बाएं हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव आफ्टर बीइंग कवरिंग द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट. नॉट सक्सीडेड. द बॉल kept lower at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman. और जहां तक रनों का सवाल है रन से स्पीच नहीं मिला और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए
एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज बिपिन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बाउल्स, full toss, left side, and I think it could be taken just inside defense. In fact, it's taken. गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन not quite get that one from the middle of the bat. Not so power in that stroke also, and because of that, it held comfortably just inside the fence by the feeder at wide is long on. और इसी के साथ विकेट नंबर 2 गिर चुका है, प्रथम का विकेट गिर चुका है. They are looking deep in trouble now for Golden Garudas. It's 1 for the loss of 2 wicket in the over number first in progress. एक बेहतर ओवर इस वक्त प्रगति पर बिपिन का, 2 विकेट अब तक वो इस ओवर में प्राप्त कर चुके हैं और सिर्फ एकमात्र रन अब तक उन्होंने प्रदान किया है इस ओवर में। सुप्रीत का आगमन होता हुआ इन मुश्किल से हालातों में और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बिपिन की ओर की अगली गेंद का बाएं हाथ राउंड द विकेट बिपिन, यह गेंद इस बार swings it away into the gap as well. I think it's got a couple for that. In fact, it could be no. In fact, it's gone over the fence for a boundary. Just we have to wait for the umpire signal. Yes, it does. It's gone over the fence. वहां पर गेंद तक पहुंच गए थे जरूर, लेकिन गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में असफल और इस बीच 4 रन प्राप्त करते हुए बेहतर स्ट्रोक इस वक्त खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को खेला था वाइड स्लॉन्ग और डीप विकेट के दरमियान और आखिरकार चौका प्राप्त करते हुए बल्लेबाज इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त सुप्रीत के पल्ले से लगता हुआ, एक बार फिर से गेंदबाज बिपिन तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ड्राइव किया जगह बनाते हुए, लेकिन गेंद पहुंची मिड ऑन पर और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। निस्संदेह एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप का सवाल है इस वक्त, एक साझेदारी की जरूरत यहाँ पर गोल्डन गरुडास के बल्लेबाजों को अगर उन्हें मंजिल की ओर अग्रसर होना है तो यहाँ पर गेंदबाज बिपिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। पहली बार इस मैच में प्रणव सामना करते हुए बिपिन का और बिपिन बाएं हाथ राउंड द विकेट, गुड वन, डिलिकेटली प्लेड, एब्सोल्युटली सेंसिबल गेंद इनसाइड आउट क्रिकेट इस वक्त खेला था, स्टंप्स को थोड़ी सी छोड़ते हुए गेंद की गति को भापते हुए मिड और लेग स्टंप पर गेंद थी और खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 7 for the loss of 2 wicket. 7 for the loss of 2 wicket after completion of first over. So first over completed, 7 runs on the board. And let's straight away coming back to the equation. 28 minus 7, that means 21 more runs now they have to score for victory. The present run rate is now 7 and required run rate is now also 7. 21 they have to score in remaining 3 overs with the required run rate of exactly 7 runs per over. Still they got 8 wickets kept intact. 8 wickets they got in their hand. I request Mr. Shashank please to be reported here. Mr. Shashank. So 21 required, 18 balls left. The equal battle is now continuing here. और गेंदबाज गौरव इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। गौरव दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद द बॉल में जस्ट वाइड ऑफ द लेग स्टंप, द लास्ट मूवमेंट वाइड का इशारा यहाँ पर हो चुका है, पूरी तरह शफल हो चुके थे। स्टंप्स को एक्सपोज करने के बाद गेंद को साइड पर उछालना चाहा था और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 9 for the loss of 2 wicket at the start of the second over in fact. और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, सही गेंद घोषित, कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर रन नहीं निकल रहे थे और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 रनों पर। 19 रन और चाहिए विजय के लिए और गेंदबाज गौरव गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए यह गेंद टॉप एज और विकेट कीपर बिपिन वहां पर मौजूद थे, आसान सा मौका था और इस मौके को वो गवा चुके हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। गेंद पर थोड़ी सी मिस जजमेंट कर पाए थे और यहां पर गेंद उनके हाथों से छूटता हुआ और बल्लेबाज यहां पर जीवदान न प्राप्त करते हुए और
तो स्कोर इस वक्त हो चुका है 9 रन और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बच चुके हैं। गौरव एक बार फिर से तैयार, ये गेंद बॉल डाउन। इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, चूंकि बल्ले और पैर के बीच में अंतर और उस गैप से, उस अंतर से गेंद निकलते हुए सीधे लेग स्टंप को बिखेर कर ले गई, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 गिर चुका है। सुप्रीत की पारी समाप्त, 5 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौटते हुए, और गोल्डन गरुड़ा अपना तीसरा विकेट खो चुका है 9 रनों के ऊपर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। So number 5 batsman Anis is now comes out to the middle, और वो सामना इस वक्त करेंगे गौरव की गेंदों का। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गौरव की गेंद, ओह बेहतर गेंद थी इस वक्त, बैकवर्ड पर जाकर गेंद को कट करना चाहता, गेंद पर छेड़ता नहीं करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकल रहे थे, और आखिरकार रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 9 रनों पर, तो विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। गौरव एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद बेटर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, द सेम लाइन, और इस बार भी गेंद को खेलने के प्रयास में चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। 2 बेहतर गेंदें इस वक्त गौरव फेंक चुके हैं, दोनों गेंदें ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ, और आखिरकार दोनों गेंदों पर स्ट्रोक्स खेलने में चूके बल्लेबाज। और फिर से एक बार गौरव गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, इस बार फुल टॉस ऑन साइड पर स्विंग किया, लेकिन नॉट मोर देन अ स्विंग, ओह मिसफील्ड इस बीच, लेकिन दूसरे के लिए दौड़ पड़े नजदीकी मामला, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। He fell just short out of his crease, सीधा थ्रो, फ्लैट थ्रो, स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स पहुंचता हुआ, और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम किया थ्रो को रिसीव करने के बाद। So one more wicket fall, and they are looking deep in trouble now. Golden Garuda 10 for the loss of 4 wicket. So absolutely a difficult time is now continuing here for the batsmen of Golden Garuda. They lost their 4 top in this wicket for adding just 10 runs on the board, and still 18 more runs now they have to score for victory. 2 overs completed, 10 runs on the board, 18 needed in remaining last 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. तो तीसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, प्रज्वल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और दाहिने हाथ के बल्लेबाजी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तख्ता कुछ हद तक टीम स्काई हाउस का इस वक्त भारी लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त गोल्डन गरुड़ा के बल्लेबाजों के लिए। और इस ओवर में कम से कम 10 से 12 रन अगर बनते हैं तो निस्संदेह गोल्डन गरुड़ा इस मैच में वापस आ सकता है। पहली गेंद प्रज्वल, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई, शॉर्ट थर्ड बैट फील्डर को थोड़ा सा स्ट्राइटर इस वक्त तैनात किया गया है। फर्स्ट बॉल, ये गेंद टॉप एट, मौका इस वक्त, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, और इस बीच बल्लेबाज के बाद मौका, 1 रन, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज वहीं पर खड़े रहे थे, और जैसे ही नॉन सेकंड बल्लेबाज ने 2 कदम आगे बढ़ाए, स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने भी 2 कदम आगे बढ़ाए, और इससे पहले कि थ्रो वहां पर पहुंच चुका था, और वहां पर फील्डर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिए। तो यहां पर ये विकेट गिर चुका है, 5वां विकेट, एंड नाउ दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। 11 for the loss of 5 wicket, 17 to get from 11 balls now. Still they got 5 wickets in hand. Still they got 5 wickets kept intact. So battle is now continuing here. Match number 2 of the day, match number 4 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Tandav Premier League 2023 is now progressing here in this cloudy afternoon. और नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन, नंबर 7 बैट्समैन दत्ता इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और वो इस वक्त सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल की गेंदों का, बाएं हाथ के गेंदबाज कहना पड़ेगा प्रज्वल की गेंदों का।
और प्रज्वल अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दत्ता सामना करते हुए, बाएं हाथ ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को खेला मिड ऑन पर, रन आउट का खतरा, ओ थ्रो को रिसीव नहीं कर पाए, थ्रो को रिसीव नहीं कर पाए यहां पर, और आखिरकार बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बच चुके हैं. Certainly that was in a रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड, लेकिन अंतिम क्षण में थ्रो को रिसीव करने में असफल, और इस बीच बल्लेबाज एक रन सुरक्षित पूर्ण करते हुए. 12 for the loss of 5 wickets, 16 to get, 10 balls remaining. What a match is now progressing here. और इस बीच प्रज्वल रन पे कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार, बाएं हाथ अराउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, फुल टॉस, कट किया, it's gone fine, he gets at least couple for that, in fact the chase for the fielder, he won't, in fact it cuts off just inside the fence, and the batsman come back for the third run, और इस बार निशाना लग चुका है, and he is backing to pavilion, Datta is backing to pavilion, just trying to complete the third run at the last moment, it fell just short out of his crease, when bells are disturbed from the ball, and he is now backing to pavilion. He's quite unhappy with that decision, but he has to go, and one more wicket lost, 6 wicket down. $14 for the loss of 6 wickets. 3 balls left in this over, 9 balls left in overall calculation. So still some discussion is going on there at the middle of the pitch. So match is now stopped for a while, and let's straight away coming back to the equation. 14 runs required. 9 balls remaining.
So 9 balls remaining and 14 runs required. And the new batsman is now comes out to the middle. दर्शन और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज की ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद गई ऑफ साइड पर, शॉर्ट टच पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। एंड विद दैट सिंगल द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 15 for the loss of 6 wickets. 13 required and 8 balls remaining. What a fantastic match is now progressing here. और प्रज्वल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट, गेंद को खेल दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद जाती हुई एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, रस्सी की मामला हो सकता है, थ्रो पहुंच चुका है लेकिन इस बार अंपायर ने कहा जी हां ये आउट है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। सीधा थ्रो पहुंचता हुआ आफ्टर फर्स्ट बाउंस, पहले टिप्पे के बाद स्ट्राइट ओवर द स्टंप्स और गेंद को रिसीव करते ही, थ्रो को रिसीव करते हुए गेंदबाज ने विकेट यहां पर चटका दिया और बल्लेबाज अपने क्रीज से कुछ इंच बाहर रह गए। ही फेल जस्ट शॉर्ट आउट ऑफ हिज क्रीज द बैट्समैन और इसी के साथ रनआउट के रूप में विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 12 नीडेड, 7 balls remaining and we are just waiting for the number 9 batsman at this situation. हर गेंद में संघर्ष यहां पर दिखाई देता। वाह, गेंद और बल्ले के बीच और निस्संदेह विजय के लिए जी तोड़ कोशिश इस वक्त करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी। Sixteen score, 12 runs required, 7 balls remaining. Seven balls, 12 runs. 7 balls remaining, 12 runs required. So it could be anybody's game at this situation. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज तैयार प्रज्वल। The pressure is now building up on both sides. So tidy contest is now progressing here. Here we go. प्रज्वल इस बार विकेट जरूर उन्होंने चटका है नॉन स्ट्राइकर एंड पर लेकिन बल्लेबाज इस वक्त सुरक्षित और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज प्रज्वल तैयार। For the last time in this over, Prajwal bowls. 12 of 7. Here we go. इस बार पुश करना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। अब the scoreboard moving up to 17 for the loss of 6 wickets and now 11 required of last over. 11 रन चाहिए अंतिम ओवर में। और जहां तक सवाल है इस वक्त बैटिंग साइड का गोल्डन गरुड़ा का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए कम से कम एक चौका या छक्का इस मैच पे वापसी करने के लिए, जबकि इस वक्त स्काई हॉक्स के गेंदबाज को इस वक्त चाहिए डॉट गेंदे और विकेटें यहां पर इस अंतिम ओवर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। और मैच निर्धारित ओवर यहां पर शुरू होता हुआ, गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी शुरू करते हुए स्वरूप इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए प्रणव इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 11 ऑफ लास्ट ओवर, फर्स्ट बॉल, हियर ही कम्स। इस बार गेंद को खेला, गेंद जाती है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद, थ्रो पहुंचा इस वक्त और रन का खतरा और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। दूसरा रन चुराने की जोखिम उठाई थी इस वक्त बल्लेबाज ने और सीधा थ्रो पहुंचता हुआ विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम किया यहां पर और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 8th wicket down. 18 for the loss of 8 wickets.
10 required, 5 balls remaining, 2 wickets got, just 2 wickets they got in their hand. What a match is now progressing here. Number 10 batsman is now comes out to the middle, Gagan. और गेंदबाजी इस वक्त करते हुए स्वरूप दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद मार स्ट्राइट टू द ग्राउंड गेंद को खेला गेंद जाती हुई इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर स्ट्राइट हिट एरिया पर कहना पड़ेगा लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान नॉट मोर देन अ सिंगल एंड द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 19 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स 9 नीडेड 4 balls remaining 8 for tie 9 for win और स्वरूप इस वक्त तैयार प्रणव इस वक्त सामना करते हुए ड्राइव किया इनटू द गैप एज वेल ही गेट्स एट लीस्ट कपल फॉर 23 now for the loss of 8 wicket. A fantastic struck came from the bat of Pranav. Rocked on the back foot. Played that one squarely into the gap as well. और deep extra cover आखिरकार फील्डर आखिरकार गेंद को रोक नहीं पाए 4 रन प्राप्त करते हैं अब 3 गेंदें बाकी 5 रन चाहिए विजय के लिए 5 runs to get from 3 balls 4 for tie 5 for win and just 2 wickets remaining. The pressure is now building up on both sides players. Here we go. Ugly again. His ball can go bola into the gap as well. He gets a single. In fact, they're looking for the second. In comes the throw. This could be in trouble. In fact, he misses. He misses. And now 3 required and the 2 balls remaining. The match is now, the tide is now turned. And this is turning out to be a fantastic over in Golden Garuda side. तो यहां पर 2 गेंदें बाकी 3 रन चाहिए 3 runs to get 2 for tie 3 for win 2 balls remaining 2 wickets remaining and now the second last ball of the match is now coming up और इस वक्त गोल्डन गरुड़ा को चाहिए रन्स जबकि स्काई हॉक्स को चाहिए डॉट गेंदे या फिर विकेट और गेंदबाज इस वक्त तैयार स्वरूप और सामना करते हुए प्रणव जो कि आरंभिक बल्लेबाज की हैसियत से उतरे थे अभी भी क्रीज पर मौजूद और इस भी तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार कट किया बैटफुट पर डालने के बाद इनटू द गैप एज वेल ही गेट्स अ सिंगल इन फैक्ट लुकिंग फॉर द सेकंड थ्रो फॉर द स्ट्राइकर एंड पर 2 रन एट द just a single run required from last ball. So this is turning out to be a fantastic over in the Golden Garuda's point of view. 11 runs scored from 5 deliveries. And now last ball and the last run. अगर मैच टाई होता है तो अंक बांट दिया जाएगा. If the match ended in a tie, points will be shared. So यहां पर अंतिम गेंद पर 1 रन चाहिए गोल्डन गरुडास को जबकि यहां पर टीम स्काई हॉक्स को चाहिए डॉट गेंद. काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई और देखना यह है कि इस अंतिम गेंद पर टीम स्काई हॉक्स के फील्डर्स किस तरीके की फील्डिंग की सजावट यहां पर करते हैं. क्या वो सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाते हैं या फिर फील्डर को स्प्रेड करते हैं देखना पड़ेगा. 1 गेंद 1 रन और 2 विकेट निस्संदेह इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का बेहतरीन मैच यहां पर प्रगति पर. मैच निर्धारित गेंद the match deciding ball comes last ball 1 run. Here we go right arm over the wicket again but give it and with that a thrilling victory they back the complete punch. So a last ball victory for Golden Garuda and they managed to score 12 runs from last over with just two wickets to spare and with that a thrilling victory they back the complete points against team Skyhawks. So fantastic match ended and now the next match will now going to begin within just a short while and we'll be back right after the short break with Shashank in English when the next match will going to start within just a short while. And now it's time for break and it's over to Shashank. So yes, the well-awaited moment here, the trophy will be launched, coming into the ground within a short while. The trophy launch ceremony will commence within a short time. And it's time for that moment, the well-awaited moment of all the players here to witness that big trophy, that wonderful trophy coming into this field.
just right at the ground. Lingaraj. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಆಗಿರುವ ಉರ್ವದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಎಲ್ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಡುವೆ ಇದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ 6 ಟೀಮ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ 1 ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ applause. Team Kings, your decision please. ಒರ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಟ್ರೋಫಿನ ಅರ್ತಿಡು ಆದೆಡ್ತಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಎದುಕೊನಡಂದು ಕೇನೋದುಲ್ಲೆ.
So yes, getting back to the game. Match number 14 between Team Kalakalki and Team Kings. Team Kings have won the toss and elected to field first. So I request both the teams to please take the field as soon as possible. The officials are ready to commence the match. That is match number 14 of Team Tandav presents Tandav Premier League in this beautiful venue, that is UCG. I also request Mr. Pranav to please come in and collect the Man of the Match award from the dais. I request Mr. Pranav to please come in and collect the Man of the Match over the dais. यार पिक्चर दाखल पाहिजे पिक्चर तಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮುಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ I just appreciate you please start the match as soon as possible. I request the Team King and Team Kalakalki please take the field as soon as possible. They are running out of time already, so ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿದ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ Selshade Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. यार पिक्चर दाखल पाहिजे ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ This time ಪ್ರಾಣಿಲ್ the opportunity is back to Mr. Suresh to take the responsibility of the power play. It's Sharan at the striker's end and Shravan at the non-striker's end. Good delivery again, a very good delivery again, targeting the stumps. And the batsman trying to nick it towards the square leg region, but fortunately enough, that's the deflection of the bats. And that is a dotted delivery added to the scorecard. And that's a wide. Definitely yes, and the fumble by the fielder as well, and the ball is traveling towards the fence, certainly. Very good effort there by the fielder to certainly save some runs.
It's a wide +2. So 3 more runs added to the scorecard, and the score now moves down to 3 on the board at the completion of the first 2 legal deliveries. It's a third legal delivery in progress. Suresh to Sharan. Another short ball there. Good running between the wickets. They certainly had a chance of a run out, but fortunately enough, Rakshit wasn't able to collect that delivery. Good delivery, very good delivery. Chance of a run out as well, and the chance of a run out. Shot high in the air, chance of a catch. Very well taken by the fielder, Mr. Lingaraj. So certainly sending back Mr. Shravan back to the pavilion. He tried his best probably, but unfortunately wasn't able to connect it well. With that note, so last legal delivery in progress. Suresh to Mr. It's Divish. So again another single added to the scorecard, and with that note, that's the completion of the first over. So after the completion of the first over, the score moves on to 4 on the board. I pardon, 5 on the board. I pardon. It's 5 on the board. So the second over in progress, Rakshit taking the responsibility of the second over for Team Kings. So after the completion of the first over, the score moves on to 5 on the board. So that's a dodge delivery added to the scorecard. Played it well. Towards the deep square leg region, certainly just a single getting added to the scorecard. So after the completion of the first 2 legal deliveries of the second. First dot, dead. I pardon, that was a no ball, so it's only 1 ball up.
Well struck over the heads of the bowler himself. So another single getting added to the scorecard. Good delivery, very good delivery. That wasn't a wide call by the official. That was a tricky single. The non-legal delivery ball by Mr. Rakshit. Struck in the air, and that is a maximum. The wish strikes finally for Team Kalakalki. A wonderful connect over the fence, probably towards the deep long on region, and 6 more runs getting added to the scorecard. 15 on the board after the completion of 1.4 overs. So last 2 more legal deliveries remaining in the second over. The score moves on to 15 on the board. Well played, probably straight to the hands of the fielder, Mr. Bharat. Certainly a single only getting added to the scorecard, and now the score moves on to 16. And gone. Sharan trying to loft it over the cover region, but unfortunately the ball just flights it over in the air and finds the fielder, Mr. Hema. So with that note, that's the completion of over number 2, and the score moves on to 16 on the board. So the new man in comes Mr. Samarth. So the new man to bowl the third over is Mr. Radesh for Team Kings. So now the score moves on to 16 on the board. Radesh to Mr. Divesh. Good delivery. What a delivery that was. A beat of a delivery. A leg cut to one. That was a ripper from Mr. Radesh. That was definitely a treat to watch to all the spectators, I believe. If you're watching in the replay as well in the live, that is from good delivery. That is another ripper. What a delivery that was by Mr. Radesh. Again, 2 back-to-back leg cutter ones. Divesh just leaving the delivery, but the ball is just diverting towards the stumps. And now the score moves on to 16 again. It's another good delivery there. So it's a third legal delivery in progress by Mr. Radesh to Divesh. Good delivery, very good delivery. Again, chance for run out as well. And that was a fumble by the fielders. There was an ample of opportunity for run out at both the ends. But that was a missed
effort by the fielders of Team Kings. So certainly a single getting added to the scorecard. So it's a fourth legal delivery in progress of the third over. Good delivery, very good delivery that was. The batsman trying to reverse sweep, but the bowler himself following the batter. So another single getting added. Nevertheless, maybe the fumble by the keeper, but fortunate enough, it's a really good bowling performance so far by the bowlers of Team Kings. It's 18 so far, 2 more to go. Good delivery, another piece of a delivery. I think Adish is definitely trying to trick the batsmen here in each and every delivery, those leg cutter ones. Last, one more legal delivery remaining in the third over. But fortunate enough, Adish is definitely making some sort of difference for Team Kings at this point of time. It's a must-win game for them. Good delivery, very good delivery again. Chance for another as well. So certainly that's again another single getting added, and the completion of over number 3, and the score moves on to 19 on the board. It's the last over in progress. Probably it will be Mr. Nagaraj taking the responsibility of the final over for Team Kings. We need to wait and watch. Will the batsmen of Team Kalakalki accelerate themselves and put up still better total on board? It's only 19 after the completion of the first 3 legal overs. So it's Nagaraj taking the responsibility of the final over for Team Kings there. It's Divesh at the striker's end to face the first legal delivery. Score moves on to 19 on the board. Will it be a huge total for Team Kings to chase in the next 6 legal deliveries, or will it be below par score happening? Good delivery, very good delivery. A decent pace and line by Mr. Nagaraj. Certain field changes also happening by the fielders. So certain field changes happening again and again by the keeper, by the fielder as well. We're just confused who's the captain here. So nevertheless, it's the second legal delivery in progress of the final over. Nagaraj to Samarth. Full toss delivery behind the edge, shot the catch. And that is maximum, because Suresh wasn't able to hold on to himself and he just traveled towards the boundary line, and that is a maximum added to the scorecard, and the score now moves on to 25 on the board. I pardon, 26 on the board. It's a third legal delivery in progress of the final over. Nagaraj to Samarth. Another good delivery that was, but straight to the hands of the fielder, Mr. Ritvik. Certainly a single getting added. A very good effort there by the batters of Kalakalki so far. Good delivery that was. A request the captains of Team Garuda Gang and Monk Strikers. I request the captains of Garuda Gang and Monk Strikers
to please report at the commentator's desk for the toss. It's the fifth legal delivery in progress of the final over. Another shot for Landers. Sent out of the park. Delivered cleanly. I think Team Kalakalki would have been expected these kind of connections in their previous matches. Because in this match it wouldn't count much for them. But nevertheless, they would be happy with their performance in this match. I believe 2 back-to-back sixes by Mr. Divesh. It's the last legal delivery in progress. 30. And given. So that's the completion and that's the conclusion. So 35 on the board, 36 is the target for Team Kings in the next 24 legal deliveries. I request the captains of Team Monk Strikers and Team Garuda Gang, please report at the commentator's desk. Get set for the last stir. यार पिक्चर दाखल भाई दे पिक्चर तಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮೀಟರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿತ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ Selchade Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. The equation shows for them and their innings now going to start. And Lingaraj, the striker, Adesh, the non-striker. Meantime, the bowler is Abhi, and we are just waiting for the first ball of their innings. The first ball of their innings is now coming up. Abhi to Lingaraj. Here he bowls. Left side. This time, I think a chance for the deep in wicket fielder, and he took the catch successfully. इस बार उन्होंने उछाला था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके, और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है किंग का लिंगराज के रूप में, और 0 पर पहला विकेट खो चुका है। जहां तक कालाकल्की के सवाल है, अपने इस श्रृंखला से लगभग कालाकल्की बाहर हो चुका है, तो अंतिम मैच में विजय दर्ज करके एक बेहतर तरीके से इस श्रृंखला से निर्गमित होने की कोशिश में, और यहां पर अपने पहले विजय दर्ज करने की कोशिश में कालाकल्की। और जहां तक किंग्स का सवाल है, वो लगभग इस श्रृंखला के प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं, और देखना यह है कि वो इस मैच को जीतकर क्या ग्रुप के अग्रस्थानी बन पाते हैं या नहीं। तो इस वक्त गेंदबाज अभी
गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और नए बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार फुल टॉस ड्राइव किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त खेला था मिड ऑन फील्डर की दाईं ओर से, कोई प्रोडक्शन मौजूद नहीं, वाइड स्लंग ऑन पर और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है और अभी एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार पल्स एट दिस टाइम he just swings it away and got the distance at last. Fantastic struck came from the bat of him और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 10 for the loss of 1 विकेट। तो पहले गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद 10 रन चौके और छक्के के रूप में प्रदान कर चुके गेंदबाज अभी अगली गेंद लेकर तैयार ऑफ स्टंप से काफी बार स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, बॉल 2 फॉर और साथ ही ऑफ स्टंप और गेंद को फील्ड कर लिया गया। इस वक्त विकेट कीपर द्वारा विकेटों के पीछे वाइड का इशारा अंपायर का और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार अभी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज हेम के लिए ये गेंद उछाला गेंद को उछाला अच्छा करना पड़ेगा, not quite get that one right from the middle of the bat at the last moment और गेंद काफी ऊंची उछली और एक बेहतर जजमेंट के साथ लंग ऑफ सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपक लिया फील्डर ने और इसी के साथ हेम की छोटी मगर बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका। 10 रन हेम ने बनाए 3 गेंदों पर 333 स्ट्राइक रेट की औसत से और एक छोटी मगर बेहतर पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौट चुके। 11 रनों पर पहला विकेट खो चुका है किंग्स। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। So सुप्रीत the new batsman is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अभी की गेंदों का और अभी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुप्रीत के लिए ये गेंद बैकफुट पर गए कट किया खूबसूरती के साथ into the gap as well, ball running down to back of the third man and it's crossed over the fence for a boundary. Fantastic square cut from the batsman. ऐसा कहना पड़ेगा just rocked to the back foot and punched it away through the offside. 15 for the loss of 2 wicket. And this is an absolutely fantastic struck came from the right-handed batsman और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज का एक बार फिर से अभी तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्विच इट 21 runs scored in this over. Except he got a couple of wickets, but he conceded 21 runs in the first over from Abhi. And except they lost their 2 wickets, they managed to score 21 runs on the board after completion of first over. This is an absolutely terrific start for Kings. Now, just they have to score 15 runs in remaining 3 overs. And now it's going to be raining heavily on the ground. और बारिश काफी हद तक तेज हो चुकी है और देखना है कि इस बारिश तले इस भीगे हुए वातावरण का किस तरह बल्लेबाज फायदा उठा पाते हैं और काफी जोरदार बारिश इस वक्त मैदान पर होते हुए 3 ओवर का खेल बाकी 15 रन और चाहिए विजय के लिए और इस वक्त बारिश की वजह से कुछ मिनटों के लिए इस वक्त मैच को रोक दिया गया है। तो 3 ओवर का खेल बाकी है 18 balls left 16 runs required for Kings for victory and we'll be back right after a short break when rain will stop. Thank you. धन्यवाद।
ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ಬೈದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮೀಟರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿతే ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ఒక ఈ ఊరితనయావు ఏర్ల వరైర్ Once again after a short break and 15 runs required in remaining 3 overs for Kings, and what a fantastic over in Kings point of view. Games 21 runs scored in that over, except they lost 2 wickets. They managed to score 21 runs in the first over. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से दिवेश, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज आदेश यानी आदि, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए फील्डिंग में जमावट यहां पर करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए जस्ट स्लिप्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, और वहां पर जो वर्षा गिरने के कारण वहां पर कुछ गेंदबाज फिसले थे गेंदबाजी करते समय, और तुरंत अपने आप को उन्होंने संभाल लिया, अंतिम क्षण में अपने शरीर पर संतुलन कायम रखा और फिसल कर गिर पड़ने से बचे इस वक्त, और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, और गेंद को उछालना चाहा और आखिरकार चूकते हुए गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक डॉट गेंद निस्संदेह कल्की के गेंदबाजों को अगर कमबैक करना है तो डॉट गेंदें लगातार यहाँ पर फेंकने होंगे, विकेटें उखाड़ने होंगे, और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार चिप गया, स्कोर ऑफ द विकेट inside the fence, and that is the end of आदेश। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था, लेकिन स्ट्रोक में इतना दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके, और प्लेसमेंट भी बिल्कुल गलत था, और आखिरकार डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका फील्डर ने, और इसी के साथ आदेश यानी आदि का विकेट गिर चुका है, दूसरा विकेट खो चुका है यहां पर किंग्स 21 रनों के योग पर। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ, तो नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। रक्षित इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, गेंदें बाकी हैं अब कुल मिलाकर 16, रन्स बनाने हैं 15, और मैच जो कि अभी भी बराबरी पर रुक चुका है, और गेंदबाज दिवेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रक्षित के लिए इस बार गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर भी चूके रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 22 रनों पर, और 2 विकेट के नुकसान पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
And now just 14 runs they have to score for victory in remaining 15 deliveries. Again. Full toss, lost it. This could be one more wicket. Just we have to wait and see. Fielder, oh! इस बार कैच को लपकने में सफल. हालांकि कोल्यूशन जरूर हुआ था अंतिम क्षण में दोनों फील्डरों के बीच, लेकिन दोनों फील्डर टकरा गए थे, लेकिन आखिरकार कैच को उनमें से एक फील्डर लपकने में सफल बाखूबी. तो एक और विकेट गिर चुका है. अब गेंदे बाकी हैं 14, रन्स बनाने हैं 14. 14 of 14 डिलीवरीज दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. तो आक्रामक स्ट्रोक लगाने का प्रयास करने के चक्कर में 2-3 विकेट यहां पर खो चुके हैं किंग्स के बल्लेबाज. और यहां पर अगर वापसी करना है तो कल की गेंदबाजों को इस वक्त, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, लगातार डॉट गेंदे फेंकनी होगी और विकेटें यहां पर उखाड़ने होंगे. तो देखते हैं यहां पर उनके बल्लेबाज, किंग्स के बल्लेबाज आने वाले गेंदों में किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं. तो इस बीच दिवेश गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. ऋत्विक सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद अच्छी गेंद, ओह जस्ट वाइड ऑफ विकेट कीपर, जस्ट वाइड ऑफ विकेट कीपर. ही गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट. लेकिन विकेट कीपर श्रवण के दाईं ओर से गेंद इस वक्त निकली और जब तक गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. कुल मिलाकर एक बेहतरीन ओवर अब तक साबित हो चुका है दिवेश का, जिसमें सिर्फ 2 रन अब तक उन्होंने प्रदान किए हैं. और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार दिवेश. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. फुल टॉस जस्ट ओवर द बॉलर सेट डाउन टू लॉन्ग ऑन, नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर. 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. सो व्हाट अ फैंटास्टिक ओवर केम टू एंड फ्रॉम दिवेश. जस्ट 3 runs he conceded and he bagged 2 wickets in this over, and because of this over Kalakalki are now back in the game, and now 12 balls remaining and 12 runs needed. 12 गेंदे 12 रन चाहिए विजय के लिए. और जहां तक का सवाल है इस वक्त विकेटों का, तो 4 विकेटें गिर चुके हैं, 6 विकेटें सुरक्षित. 6 wicket they got in their hand and they have to score 12 runs in remaining 2 overs. That means in 12 deliveries. हालांकि कुछ हद तक वर्षा यहाँ पर हुई थी, लेकिन उसके बाद वर्षा यहाँ पर रुक चुकी है और खेल एक बार फिर से पुनरारंभ होकर 1 ओवर बीत चुका है. और कुल मिलाकर इस ओवर में 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी. और गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए विशाल इज नाउ स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड. और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. 12 of 12 now. Still the match is now equally balanced. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए कलकल के खिलाड़ी. और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार. फर्स्ट बॉल विशाल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. Full toss, top it, and it fell short of a fielder square leg. In fact, single run added, and now 11 needed in remaining 11 balls. 11 balls remaining, 11 runs required. और मैच अभी भी जो कि बराबरी पर रुक चुका है. फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए विशाल दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. पटकी विकेट पुल किया इस वक्त डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर. 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. Ten balls, 10 runs. Vishal bowls. Shot and this time taken at deep mid wicket. शॉट गेंद पर पुल शॉट खेला था, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और यहां पर गेंद को लपक लिया गया डीप मिड विकेट पर. और इसी के साथ अब 10 रन बनाने हैं, गेंदे बाकी हैं सिर्फ 9 और मैच का तख्ता धीरे से इस वक्त पलटता हुआ. 4 विकेट यहां पर गिर चुके हैं, 5 विकेट गिर चुके हैं. 5 विकेट्स डाउन. 26 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. 10 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 9 डिलीवरीज.
New batsman, number 7 batsman is now comes out to the middle for Kings. सुरेश जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार विशाल की गेंदों का, और विशाल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर विकेट पटकी विकेट, ओ विकेट कीपर चुके इस वक्त, विकेट कीपर ठीक से गेंद को गैदर नहीं कर पाए, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर, 5 विकेट के नुकसान पर, 27 for the loss of 5 wicket, 9 runs to get from remaining 8 deliveries. Still the match is now in balance. The equal battle is now continuing here. विशाल अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधते हुए और इस वक्त तैयार अपनी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए। दाहिने हाथ के छोटे कद के खिलाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। कट्स दिस टाइम डाउन टू कवर पॉइंट, फील्डर खड़े हुए वहां पर, क्लीन कलेक्शन, दूसरा रन नहीं मिलेगा, और आखिरकार एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर। 7 गेंदें बाकी हैं, 8 रन चाहिए विजय के लिए, 8 रन टू गेट इन रिमेनिंग 70 डिलीवरीज। अभी भी बराबर का टक्कर, बराबर का संघर्ष यहां पर जारी। विशाल दाहिना तो ऊपर द विकेट, रिवर्स शॉट बॉल, batsman, and now the target, the equation seems to be a stiffer a little bit now for Kings in the last over. 8 runs required of last 60 deliveries. So fine over came student from the bowler Vishal, who conceded just 4 runs in this over and captured 2 wickets. And because of this over, Kalkalki are now looking just a little bit of higher in this situation. 8 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी, लास्ट ओवर रिमेनिंग, 8 रन मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और देखते हैं अंतिम ओवर कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। मिथुन द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक। लास्ट ओवर इन द इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट। 8 runs required of last 6 deliveries. और फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मिथुन, ओवर की पहली गेंद, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहां पर दिखाई देता हुआ। लॉन्ग ऑन डीप इन विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप इन विकेट के दरमियान एक फील्डर तैनात ऑन साइड पर सीमा रेखा के अंदर, जबकि ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में। फर्स्ट बॉल, पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद, स्विंग किया, गेंद इनटू द गैप एज वेल, इट्स गुड बी गॉन आउट बिफोर दैट कम बैक फॉर द सेकंड रन। बेहतरीन स्टॉप इस वक्त किया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर ने, लगभग 12 से 15 कदम दौड़ते हुए गेंद को उन्होंने ढकेला सीमा रेखा के अंदर और 2 रन अपनी टीम को बचाने में सफल। अब 6 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी, 6 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 5 डिलीवरीज। व्हाट अ मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। The pressure is now building up on both sides. और इस बीच बल्लेबाज तैयार, मिथुन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार फुल टॉस, गेंद को खेल दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, 1 रन मिलेगा, मिसफील्ड, और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पर, स्ट्राइकर रन पर तो पहले के बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचा, सीधा थ्रो पहुंचा हुआ एक्स्ट्रा कवर फील्डर का गेंदबाज के हाथों में, और गेंदबाज ने थ्रो को रिसीव करने के बाद तेजी के साथ विकेट चटका दिया। अब 4 गेंदें बाकी, 5 रन चाहिए, 5 नीडेड इन रिमेनिंग 4 डिलीवरीज, 4 for tie, 5 for win and 4 balls left in their innings. अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा बराबर का संघर्ष, टक्कर यहां पर जारी है। तो नए बल्लेबाज विघ्नेश का आगमन यहां पर हो चुका है। ऋतिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मिथुन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार स्विंग करना चाहा, चूके विकेट कीपर चूके, रन मिल सकता था शायद, तो गेंद को देखते रह गए विकेटों के पीछे, कुछ हद तक देर से दौड़े, लेकिन आखिरकार
एक रन प्राप्त करने में सफल और 2 रन उनके खाते में जुड़े और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 33 रनों पर। अब ये तो बोलो 4 गेंदें बाकी हैं यहां पर। ये गेंद इस बार ओह बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल एट दिस सिचुएशन, डॉट डिलीवरी। 3 balls now remaining, 3 runs now they have to score for victory. Good comeback made by the bowler in the previous delivery, much straighter delivery और गेंद को खेलने के प्रयास में बल्लेबाज चुके थे। दोनों बल्लेबाज इस वक्त कुछ बातचीत यहां पर करते हुए और इस वक्त देखना यह है कि अगली गेंद पर बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाज यहां पर अपनाते हैं। 3 गेंदें 3 रन। द इक्वल बैटल इज नाउ स्टिल कंटिन्यूइंग हियर। मिथुन दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद इस बार चूके शरीर पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा और इस बार 1 रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 गेंदें बाकी हैं, अब 2 रन और चाहिए। 2 of 2 deliveries. What a fantastic match is now progressing here. और मिथुन इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ऋत्विक सामना करते हुए इस वक्त। ये गेंद फुल टॉस, swings out. Their 4th victory in this tournament and they are through to the playoff round of this competition. वहां पर मुश्किल सा मौका था लेकिन गेंद के आगे टिप्पा खाती हुई और इसी के साथ ये मैच किंग्स 11 रोमांचक तरीके से जीत चुका है, सिर्फ 1 गेंद बाकी रखते हुए और इस श्रृंखला के प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। और जहां तक काला कल्की का सवाल है वो इस श्रृंखला से बाहर हो चुका है। तो अगला मैच यहां पर खेला जाएगा, मैच नंबर 15, the last match of the league stage of this competition will be played between Garuda Gang versus Monk Strikers और इस लीग दौर का अंतिम मैच यहां पर शुरू होगा। मैच नंबर 15 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट तांडव प्रीमियर लीग 2023-2023 के अंतर्गत द लास्ट लीग मैच ऑफ द लीग स्टेज विल बी प्लेड बिटवीन गरुड़ा गैंग वर्सेस मॉन्क स्ट्राइकर्स और वो मैच शुरू होगा चैनल बोपा। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने हाजिर होंगे। SL Chain, Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. पिक्चर दखल बैदे पिक्चर तಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮುಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ पिक्चर तक ಗೊತ್ತುಂಡತಾ पिक्चर तकलता ಮಿಲಿಟರಿ ತಕಲತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿ ನಿಗ್ಲೇಗಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪುಗ Struck! High in the air, chance of a catch and
taken. And the very first legal delivery, Nishant is walking back to the pavilion. So that was the first breakthrough. The first blood has been drawn by Mr. Vijay. Mr. Vijay. So the new man in comes is Mr. Nitin. Well played in the gap, certainly. Garuda gang, your 12th man, please. We need the 12th man of Garuda gang. It's again a single-eyed. The delivery behind the air. That was a reverse sweep, certainly. Good effort, very good effort by the fielder. Probably 2 more runs added to the scorecard, but that was a very good effort by Mr. Lakshmish, certainly adding 2 more runs to the scorecard. And the score now moves on to 2 on the board after the completion of the first 3 legal deliveries. Struck! That is high in the air. Is it a clearance? And that is a maximum. A wonderful connection by Mr. Nitin, making no mistake, lofting it over the long off region for a maximum. That was a handsome connect. That's very good delivery as well, but unfortunately the batsman had a better answer and executed it really well out of the park. Good delivery, very good delivery that is. Certainly inside the line. It's the last legal delivery in progress of the first over. Just 8 on the board so far. Good delivery, very good delivery. That is a dotted delivery straight to the hands of the keeper. So after the completion of the first over, the score moves on to 8 on the board for the loss of 1. The second over in progress, Mr. Ashwath taking the responsibility of the second over. Good delivery, very good delivery. That was a good length ball. Yeshwan trying to well played, beautifully played by Mr. Yeshwan, certainly in the gap, a chance of an extra run as well. But fortunate enough, just a single getting added to the scorecard. It's the second legal delivery in progress. Very good delivery, a big appeal coming up. But fortunate enough, there was no connection between the bat and ball. So now the dotted delivery getting added to the scorecard.
Another short ball, and that's a wide. That is a non-legal delivery away from the batter. Without the reach of the batsman, the ball just travels towards the keeper's hands, and that is another wide call by the official. Struck well, but probably finding a little deflection of the bat and pad. I think the batters of Team Garuda Gang are doing their best here, certainly, because after the completion of 1.4 overs, the score has moved up to 11 on the board. Last two more to go. Last two more legal deliveries remaining in this innings. Pardon, in this over. Beautiful play that was by Mr. Yashwan. Just a gentle touch and run. So certainly another single getting added to the scorecard, and the score now moves on to 11 on the board. Well played, very well played by Mr. Nitin. Probably they are just happy with the single, I think. So with that note, that's the completion of over number 2, and the score moves on to 13 on the board. There was a miscommunication in the previous delivery, so after the completion of 2 overs, the score moves on to 13 for the loss of a 1. It's Sagar taking the responsibility of the third over for Team Monk Strikers. Struck in the air, and that is a maximum. A wonderful connect by Mr. Nitin, making no mistake. Lofting it over the fence of the deep square leg region for a maximum. So 6 more runs added to the scorecard. And the score now moves on to 19 on the board after completion of 2.1 overs. Struck well, another one. Is it another big one? No. That was a wonderful effort by the fielder, Mr. Ashwath, running in from the mid-wicket region towards his right and taking a brilliant catch and sending Mr. Nitin back to pavilion. So the new man in comes is Mr. Jatin in place of Nitin. So after the completion of 2.2 overs, the score moves on to 19 on the board. They still have 10 more legal deliveries remaining to accelerate themselves and put up a better total on board. Good delivery, very good delivery, a good line. Straight to the hands of the keeper probably, and so it's a 4th legal delivery in progress. Another short ball there. Probably that was a fumble by the keeper. That was a very good delivery by Mr. A very good delivery by Mr. Sagar, certainly by beating the batsman. Last 2 more to go in this over. High in the air, chance of a catch. Will it be taken? And that's a fumble. Sachit. That is a fumble.
So it's the last legal delivery in progress of the third over. Good delivery, very good delivery that was, but calculative connections happening by Mr. Yashwant there. Without making any mistake, driving well and taking some quick singles to add up to the total. So it's Mr. Lakshmish taking the responsibility of the final over for Team Monk Strikers. Wonderful connection that was, probably straight to the hands of the fielder there. Brilliant running between the wickets and a big appeal coming up and given. Jatin is walking back to the pavilion. That was a brilliant fielding effort by Mr. Ashwath. So certainly just adding a single to the scorecard. The score now moves on to 24. Ipatanalko. They still have Jitesh is a new man in at the non-strikers end. So it's Jitesh at the non-strikers end, pardon. It's another dotted delivery, a very good bowling effort that was by Mr. Lakshmish, following the batter. Following the batter as he shuffles himself. Good delivery, very good delivery. That is a pitch. I think Lakshmish is doing his job really well so far for Team Monk Strikers. Because certainly bowling some judgmental deliveries. Bowling his line in the length right, and another good delivery. Fumble by the keeper. But fortunate enough, just a single has been given away by the fielders. So the score now moves on to 25 on the board. Two more legal deliveries to go. Will the batters in the next... Last two ball. First ball single run out. Okay, so the score is 25. And last one legal delivery to go. And given. So Chitesh is walking out of the ground. So the wide call by the official as well. A non-legal delivery getting added to the scorecard and a single getting added to the scorecard there. And the score now moves on to 26 on the board. It's the last illegal delivery in progress. It's Saurav at the strikers end to face the final delivery of this innings. So that's the completion, that's the conclusion of this innings as the score moves on to
27 on the board. 28 is the target for team Monk Strikers in the next 24 legal deliveries. ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿದ ಜನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ఒక ఈ ఊరిత్తున యావు ఏర్ల వరైర్ Selchit Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. यार पिक्चर दाखल बैदे ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ For Mom Strikers, and the innings now going to start, and the bowler starts off with a wide, and the runs account begin for them. One without loss in the first over. 28 रन Mom Strikers को इस वक्त बनाने हैं और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, और इस बीच गेंदबाज निशांत गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को हल्के से स्कूप कर दिया, रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह यहाँ पर एक सतर्क शुरुआत की जरूरत मॉन्क स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक अपने 28 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दर्शन, जबकि निशांत इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। लव्ड इट इन द एयर, दिस कुड बी अ चांस, और यहां पर कैच को लपक लिया गया है। गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा था, लेकिन कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए गेंद टिप्पा खाने के बाद टॉप एज पर टकराई, ऑफ साइड पर गई, और ऑफ साइड पर जो फील्डर गेंद के ताक में खड़े हुए थे उन्होंने कोई गलती नहीं की। लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपकने में सफल, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। दर्शन की पारी समाप्त हो चुकी है पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में, और 2 रनों के योग पर यहां पर मॉन्क स्ट्राइकर्स अपना पहला विकेट खो चुका है। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। The last match of the league stage of this prestigious cricket tournament, Tandav Premier League 2023, is now progressing here. और इस मैच के बाद प्ले ऑफ मैचेस खेले जाएंगे, और प्ले ऑफ मैचेस के तौर पर पहला मैच क्वालिफायर मैच नंबर 1 ग्रुप के दोनों अग्रस्थानी टीमों के बीच में खेला जाएगा। उसके बाद एलिमिनेटर मैच ग्रुप स्टेज पर तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले टीमों के बीच खेला जाएगा। और उसके बाद क्वालिफायर नंबर 2 यानी क्वालिफायर मैच नंबर 1 में हारे हुए टीम और एलिमिनेटर मैच के विजेता टीम के बीच खेला जाएगा। उसके बाद आज शाम को ग्रैंड फिनाले इस श्रृंखला का खेला जाएगा। इस बार गेंद को उछाला बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
टॉप एज पर गेंद टकराई थी आखिरकार, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद सीमा रेखा को पार कर सके 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर 8-6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। निशांत, ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया, स्टंप्स को कवर करने के बाद शॉट स्कोर की दिशा में गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 7 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस और निशांत एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद स्वीप करना चाहा, जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्वीप एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड, pretty slow delivery from the bowler और अगेन सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार निशांत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद एक बार फिर से गेंद को उछालना चाहा, लेकिन इस बार भी सफलता बल्लेबाज के पक्ष में नहीं आई। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन जोड़ चुका है मॉन्क स्ट्राइकर्स। So after completion of first over, Monk Striker scored 7 runs for losing 1 wicket, just chasing the victory target of 28 in 4 overs. प्रेजेंट रन रेट 7 रन प्रति ओवर, रिकॉर्ड रन रेट है वो भी 7 रन प्रति ओवर, यानी 18 गेंदों में 21 रनों की और दरकार। 21 runs to get from remaining 18 deliveries. Fantastic live coverage on YouTube. We are just watching here from V4NEWS 24/7 channel under the great leadership of Mr. Manik. और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है तो ये श्रृंखला तांडव प्रीमियर लीग 2023-2023 एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए, धूप हल्की सी प्रकट हो चुकी है मैदान पर, सूरज कुछ हद तक बादलों की आड़ से निकलकर अपने किरणों को मैदान पर फैला चुका है और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण अब इस मैदान पर छा चुका है इस वक्त। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज सौरभ फील्डिंग में जमावट करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द बैट एट द लास्ट मोमेंट, इट्स गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए नंबर 15 जर्सी पहने हुए बल्लेबाज विजय सौरभ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सौरभ की गेंदों का फुल टॉस, टॉप एज, लेकिन गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस बीच गेंदबाज सौरभ अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, सामना करते हुए इस वक्त अश्वत्थ और 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट, टॉप एज, मौका गली फील्डर के लिए और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। रिवर्स शॉट खेलना चाहा था लेकिन गेंद इस वक्त टकराई बल्ले के ऊपरी भाग पर यानी टॉप एज पर और गली फील्डर को हालांकि 2-3 कदम दौड़ जरूर लगाने पड़े अपने दाईं ओर, लेकिन एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को उन्होंने लपका और यहां पर विकेट गिर चुका है। दूसरा विकेट 9 रनों के ऊपर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अश्वत्थ की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। सचित इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 18 रन और चाहिए विजय के लिए और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा बराबर का संघर्ष जारी इस वक्त। और सौरभ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लंबे रन अप के जरिए दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद पटकी, विकेट स्विंग किया मिड विकेट पर, इनटू द गैप एज वेल एंड इट्स गॉन फैंटास्टिक स्ट्राइक का, ऐसा कहना पड़ेगा एक्सक्विजिट फुटवर्क का, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड। गेंद जैसे ही शॉर्ट गेंद थी उछाल लेने के बाद उनकी ओर आए, तुरंत अपने एक्सक्विजिट फुटवर्क के द्वारा गेंद को उछाल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए बल्लेबाज ने। और इस छक्के के साथ समीकरण कुछ हद तक आसान होता हुआ अगली गेंद लेकर तैयार सौरभ, अगेन दिस
21 for the loss of 2 wicket. Consecutive sixes for Sachit. और इस छक्के के साथ समीकरण अब बिल्कुल आसान बन चुका है. सिर्फ 6 रन चाहिए और विजय के लिए, 7 रन चाहिए माफ कीजिए और विजय के लिए. और इस ओवर में अंतिम बार सौरव गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए शॉट कट करना चाहा, चूंकि सही गेंद, डॉट बॉल टू एंड द ओवर. फैंटास्टिक ओवर इन मॉन्क स्ट्राइकर्स पॉइंट ऑफ व्यू. गेम्स रन एंड over completed. 2 overs completed. 21 runs on the board. They are looking in a commanding situation. Just 7 runs they have to score for victory. Remaining 12 deliveries. That means in 2 overs with a required run rate of exactly 3.5 runs per over. Jatin, the bowler, is now brought into the attack, starting a fresh over from the commentator box end. 7 रन सिर्फ बनाने इस वक्त मॉन्क स्ट्राइकर्स को विजय के लिए. और ओवर की पहली गेंद लेकर जतिन तैयार और सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज. और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए 12 गेंदों का, तो देखते हैं किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज डालते हैं इस वक्त बल्लेबाजों को रोक कर रखने के लिए. Sunshine Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, चूंकि गेंद कुछ लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा. और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर. 2 विकेट के नुकसान पर 6 रन चाहिए विजय के लिए. ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, कलाइयों के सहारे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल. और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर. 23 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर इन फैक्ट. और जतिन एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, पिचिंग ऑलमोस्ट ऑन द ब्लॉक होल. बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को खेला इस वक्त. जब तक शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है. और हर गेंद पर अगर सिंगल्स भी बनाते हैं तो निस्संदेह आसानी के साथ लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं बल्लेबाज. यह गेंद बेहतर गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में, निशाना दागा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना क्रीज पर बल्ला रख चुके थे और निशाना भी चूक चुका है गेंदबाज का. और स्कोर रुक चुका है 24 रनों पर. 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस.
डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त कम बैक करने के लिए गेंदबाज को। बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, और उतनी ही बेहतर तरीके से गेंद को इस वक्त खेल दिया ऑफ द टोज लंगोल पर बल्लेबाज ने, और 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। Lofted, this time I think this could be end of the match, and he just finished the match in a style with a 6. So Monk Strikers registered a 8 wickets comprehensive victory with the 7 balls to spare, and with that 8 wickets comprehensive victory, and now they registered a comprehensive victory by 8 wickets. तो अब यार पिक्चर दाखल भाई देर पिक्चर तಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮುಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲೆ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿతే ಜನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ఒక ఈ ఊరితిన యావు ఏర్ల వరైర్ Sunshine Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. यार पिक्चर दाखल भाई देर ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮುಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲೆ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ
ತಿರುಗಿದ ಜನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ Selshade Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ಬೈದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿದ ಜನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ Selshade Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore.
ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಕಲು ಬೈದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿತ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ Sunshade Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಕಲು ಬೈದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿತ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್
Associate Jewelers and Diamond House, KS Rab Road, Ampankatta, Mangalore. ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ಬೈದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿತ ಜನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ Associate Jewelers and Diamond House, KS Rab Road, Ampankatta, Mangalore.
ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಕಲು ಬೈದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆದೆರ್ತಡು ತರ್ಕದು ತಾಂಗದು ಬಾಮಿತು ಬೊಮ್ಮನೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮತ್ತರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೆರಿಯಕುಲು ಪಂಡಿ ಪಾತ್ಯರ ಎಂಚ ಕೇಂಡ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪಿನಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಗಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನವು ಏಕರೂಪ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರಗೆ ಆರೋರಿ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಪ್ಪಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ತೋಜಿನ ಮೋದಿಜಿ ಯೋಗಿಜಿನ ರೂಪ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನಡುಟು ಬತ್ತದು ಪಿಜಿಂದ ದಾರಿದಂಜ ಸಾಲಾದು ಉಂತೊಡಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ನಡುಟು ಲೈನಪ್ ಆವೋಡಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮೋದಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರು. ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸನ್ನಿಟ್ಟು ಬಂದಾನಿವನು. ಸಂಘಟನಾ ಚತುರಾನಿವನು, ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯೂ ಇವನು, ನಮ್ಮೂರ ಕಾಯಲು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನಿವನು. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಶಿವ ನೀಡಿದ ವರವೋ ಶ್ರೀರಾಮ. ವೈರಿಯೆದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಹರಿಯುವನು, ನಂಬಿದವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ. ಈ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪುತ್ತಿಲ ಪನ್ಪಿನವು ಪುತ್ತಿಲರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂದು ಎಂಚ ಸಕಾಯ ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪುತ್ತಿಲ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪಿನವು ದೇರ್ತು ತೋಜುಂಡು. ಇಂಚಿಪಗ ಸುಮಾರು ಲೇಸಲು ನಡೆತಂಡು ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಪುತ್ತಿರ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಲೋಡು ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಣದ ನಿಲಿಟಿ ಅನ್ಪೋದಿತೆ. ಆನಿ ನಾಲರಿಗ ನಡಪೊಡಿತ್ತಿನ ಲೇಸಡ್ 4-15 ಮುಟ್ಟಲ ಹಾಲಿಡ್ ಜನ ಇತ್ತಿಜೇರು ಅಂಡ ನನ್ನ ದಾನ ಅರುಣನ್ನ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರುಗು ಒಂಜರೆ ಸಾರುತ ಜನತ ಹಾಲಿಡ್ ರಡ್ಡರೆ ಸಾರುದಾತ ಜನ ದಿಂಚಿಡ್ ರೋಡಲ್ಲ 500 ಜನದಾತ ಸೇರ್ದೇರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅರುಣಣ್ಣನ ಮೋಕೆ ಅರುಣಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಗಳು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಗಳು ದೀಪತಿನ ಮೋಕೆ ಅಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ತಾಂಡವದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬತ್ತಿ ಪುನಃ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗ ಆದಿಪುನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಕುಡರ ನನರ ಮೋಕೆಡು ಎದುಗೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವರ ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಕುಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ನಡುಟು ಲೈನಪ್ ಆವಡ್ ಅಂದದು ಟೀಮ್ ತಾಂಡವ ಪರವಾದ ಕೇನೋದುಲ್ಲೆ. ಟೀಮ್ ಮಾಂಗ್ ಬೊಕ ಗರುಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಿಕುಲ ಬತ್ತದು ಲೈನಪ್ ಆವಡ್ ಅಂದು ಕೇನೋನುವ.
ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಡಕೆಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಪ್ಪ ಅಧರ್ಮ ಮೆರೆಯುಂಡ ಅಪಗ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವತಾರ ತಾಳುದು ಬತ್ತುಂಡ ಇನಿ ತಾತದಿನೊಟ್ಟು ಭಾರತಾಪುನ ಒಂಜಾತ್ ಅಂಜೋಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಯೋಗಿಜಿ ಎಂಚ ಆದರ್ಶ ರೂಪವಾದು ಉಂತುದೆರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಡಲ ತಡಿತ ಮನ್ನಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯದಕ್ಲಿಗ್ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರಿಗ್ ಬಿರಿಸಾಯ ಅದು ಉಂತುದುಪ್ಪುನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬುತ್ತಿಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂದರು ಒರ ಎಂಕು ಒರ ಮಾತಾಡ ಪಾತೆರದು ಕೆಬಿ ಹಾಕವಲ್ಲಿ. ಟೀಮ್ ತಾಂಡವ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಡುವೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳು ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಯುವಕರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಟೀಮ್ ತಾಂಡವ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಆ ನೋವು ಅಪಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಗೆದ್ದಿರುವ ಮತ್ತು ಸೋತಿರುವ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಮಾನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋತವರು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮರಸ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೇಳೈಸಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮೋಕೆದ ನುಡುಕ್ಲೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಸಬಿಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಾಂಗ್ ಬೊಕ ಗರುಡ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಪಿಚ್ಚದಲ್ಪ ಲೈನಪ್ ಆಂಡ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಆರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯನು ಕೋರುಡು ನನತ ಪಂತನು ಗೊಬ್ಬರ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಉಡಲರ್ತಿದ ಶುಭಾಶಯನು ಕೋರುಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬತ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜಿನ ದೀಪಂದು ಪನೊಂದು ಉನಿತೆ ಟೀಮ್ ಮಾಂಗ್ ಬೊಕ ಗರುಡ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಮೇರು ಉಡಲರ್ತಿದ ರಡ್ ಬಾಯ್ಪಾತಿರ ಅತ್ತಂಡಲ ಮೋಕೆದ ಶುಭಾಶಯನು ಕೋರೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮೋದಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರು. ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಗಾಗಿ, ಹಿಂದುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸನ್ನಿಟ್ಟು ಬಂದಾನಿವನು. ಸಂಘಟನಾ ಚತುರಾನಿವನು, ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯೂ ಇವನು, ನಮ್ಮೂರ ಕಾಯಲು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನಿವನು. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಶಿವ ನೀಡಿದ ವರವೋ, ಶ್ರೀರಾಮ ಕಳಿಸಿದ ಭಂಟನೋ ಇವನು. ವೈರಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಗಂಡ
ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ಶೂರ ಜಾತಿ ಭೇದ ನೋಡದೆ ಕಾಯೋ ವೀರ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪುತ್ತಿಲನೇ ನಾಯಕನು ನಮ್ಮ ಮತವು ಅರುಣಣ್ಣನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪುತ್ತೂರಿ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಅಖೇರಿದ ದಿನಟುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗಲಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಡು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲಾಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿರು ಹೊರ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಅರೆಗು ಜೋರಾಯಿನ ಉಮ್ಮದಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ನಂದು ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಮೇರೆನ ಕುಡೂರ ಇವಂಜಿ ಕುಡಲದ ಕಡಲ ಬರಿತ ಇವಂಜಿ ಉರುವದ ಮಣ್ಣಡು ಮಿತ್ತು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ತಾಂಡವ್ ಮೆಕ್ಲೆನ ಆಯೋಜಕತ್ವದ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಈ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಇರಗಾದ ದೀತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಮೋಕೆಡು ಓಲಗ ಆ ಒಡಂದು ಟೀಮ್ ತಾಂಡವ್ದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಐಸಿರದ ಗಳಿಗೆದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕನ್ನ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗತ್ತದ ಪರವಾದ ಮುತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಲನು ಪೊದೆಪಾದ ಪೇಟೋನು ದೀದ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ತಾಂಡವದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮೋಕ್ಯದ ಕಾಣಿಕೆನ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊರಡಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆನ ಜೋರಾಯ್ದ ಕೈ ತಾಟದ ಉರುತ ಮೋಕ್ಯನ ತೊಚ್ಚಪಾವಡಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಚಿ ಗೌಜಿ ಗರ್ದದ ಸೌಭೂರ್ದದ ಗಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತ ಕಣ್ಣಾತ ಕೆಬಿಯಾತ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೋಖೇನ ಸಂತೋಷನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸಂದೆ ನನ್ನ ನೇರು ಮ್ಯಾಚ್ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ.
So yes, getting back to the game, the qualifier one. Good delivery, very good delivery. That was pretty much angling towards the stumps. The batsman had a very good answer. He was trying to sweep it towards the deep square leg region, and a single only added to the scorecard in the very first legal delivery. So the new man in comes, at the striker's end is Mr. Darshan to face the second legal delivery of the first over. He strikes it well in the air. Chance of a catch in. That is a boundary added possibly to the scorecard. A wonderful connection by Mr. Darshan without wasting a single moment. In the very first legal delivery he faces, he lofts it over the air towards the deep square leg region, and a boundary added to the scorecard. One bounce over the rope, and the score now moves on to 5 on the board after completion of the first 2 legal deliveries of the first over. It's a very good start for team Monk Strikers so far in the first 2 legal deliveries. 5 already scored. It's a third legal delivery in progress. Right arm over. Full toss delivery. High in the air. Shots of catch. Fielder coming underneath it. And the ball lands in the no man's area. So another survival, an option or a life given to Mr. Darshan, because the ball was definitely high in the air. There was a chance of a catch, but the fielders weren't able to reach there. So with that note, that is another single getting added to the scorecard, and the score now moves on to 6 on the board. And he lofts it. He lofts it in style. But unfortunately he wasn't able to execute it or clear the fence. But fortunate enough, what a running. What a running between the wickets. That was brilliant by the batters of Monk Strikers, Vijay and Mr. Darshan. Brilliant running between the wickets, and the score now moves on to 9 on the board after the completion of first 4 legal deliveries. Another good delivery, a big appeal coming up, and Darshan departs. And that was definitely an ample of opportunity for the batter to connect it well. But unfortunately, he finds the thick edge, and the ball just travels and lands in the safer hands, Mr. Yeshwan of team Garuda Gang. So with that note, the first blood has been shedded of the team Monk Strikers. So it's the last legal delivery in progress. The new man in comes Mr. Ashwath. So Ashwath comes in place of Darshan at the striker's end to face the final delivery of the first over. And the score has already moved up to 9 on the board. So far, it's a really good utilization of the power play over by the batters of team Monk Strikers. Another good delivery, another dotted delivery. So with that note, that is the completion of over number 1, and the score is stagnant at 9 on the board with the loss of 1 wicket. So it's Jatin taking the responsibility of the second over for team Garuda Gang. It's the first legal delivery in progress of the second over. Good delivery, very good delivery. I think Vijay Saura was trying to save his wicket or trying to sweep towards the deep square leg region, but unfortunately finding the pads, the deflection of the pads probably giving a single to the scorecard. And lofted in the air, chance of a catch, and it's dropped. It's dropped. A fumble has been added to the scorecard because there were 2 fielders coming underneath it. The miscommunication. There was no call from any of the fielder maybe. So that is the reason the fumble happened and a drop catch. ಟೀಮ್ ತಾಂಡವ್ ಆಯೋಜಕತ್ವದ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬತ್ತು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಮೇರೆನು
మీరు నన్న దుంబత్త కార్యదంచి 18 లేరు ಒರ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದು ಮೋಕಿಡು ಅರಿಗು ಸೋಲೈತ್ ಸೋಲ್ಮೆಲೆನ ಈ ಮೂಲಕ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ I request the officials to please hold on to the match. So thank you so much, sir. Getting back to the game. It's the last legal delivery in the second over. And he lost it. That is a handsome connect bat. And possibly that's a boundary added to the scorecard. A very good connect by Mr. Ashwath. Making no mistake. Lofting it sweetly towards the deep mid-wicket region. And a boundary added to the scorecard. One bounce over the rope. And the score now moves on to 18 on the board after the completion of 2 overs. So far, it's a really good start for Team Monk Strikers. Still 2 more overs remaining. Let's wait and watch how well the batters of Team Monk Strikers can accelerate themselves in the next 12 legal deliveries and put up a better total in this qualifier 1. The winners of this match will qualify directly for the finals, and the losers will have another chance to compete and get into the final stage. So that's a real important opportunity for both the teams here. The winners will qualify directly to the finals. So with that note, it's the third over in progress. Mr. Saurav taking the responsibility of the third over. Right arm over to Mr. Vijay. He strikes! Is it a big one? Oh. Unfortunately, Mr. Vijay wasn't able to execute it or deliver it out of the park. He connected it really well, but unfortunately wasn't able to clear the fence, and the ball just lands in the safer hands of the fielder at deep long on region. So Mr. Vijay Saurav is walking back to the pavilion, and the new man in comes is Mr. Sachit. So yes, Sachit and the strikers end to face the second legal delivery of the third over. He strikes! And he strikes it well in style. A boundary added to the scorecard. Sachit is the man. He would have been definitely predetermined to strike each and every delivery. If the ball is in the slot of Mr. Sachit, he will deliver it out of the park. It's 22 on the board after completion of 2.2 overs. And he strikes it again in the air. Tandav again. Another boundary added to the scorecard. Back-to-back boundaries are coming on the way of Team Monk Strikers, and Sachit is the man coming into the middle
without wasting a single delivery. He is delivering it what Monk strikers are required of. The third, fourth legal delivery in progress, and the score has already moved up to 26 on the board. Beautiful delivery. That was a great comeback by Mr. Saurav. Pretty much onto the block hole, a Yorker and delivery. A batsman who wasn't able to do much either. He was just able to knock it towards the mid-on region for a single. So it's the fifth legal delivery in progress. Saurav to Ashwath. And he lost it. And that is in style. Another maximum. What a connect that was by Mr. Ashwath. The ball was pretty much away from the batter down the leg side. The batsman really swept it well and delivered it out of the park. Another maximum towards the deep square leg region, and the score now moves on to 33. Muvattamuru. It's the last legal delivery in progress of the third over. Kone Eseta. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33. And he lost it again. Chance of a catch this time. And that's a fumble by the fielder, probably. 2 more runs added to the scorecard, and that's a completion of over number 3, and the score moves on to 35 on the board. So it's the last over in progress. Certain discussions happening between the players there. So Yashwan, the captain himself of team Garuda Gang, taking the responsibility of the final over. Yashwan to Sachit. It was a full toss delivery. He definitely had a chance, but wasn't able to utilize that really well. Just a single added to the scorecard. The score now moves on to 36 on the board. And gone. Finding an edge. Ashwath trying to play some cheeky shot, but unable to find the gap, and he has to depart. And he lost it. Lakshmi strikes it well, but straight to the hands of the fielder there. And that lands in the hands of the fielder at deep square leg region. Another wicket down. Back-to-back wickets will definitely hurt Team Monk strikers. So the new man is Mr. Sagar at the striker's end to face the fourth legal delivery. And he strikes. This is huge. This is huge. Because the ball was definitely in the slot of Sagar. And Yashwan gets the punishment.
Last 2 more to go, and he lofts it again in the air, and catch was taken. Again, Mr. Sagar departs. Unfortunately, Sachit is still at the non-strikers end, waiting for the opportunity. The last legal delivery in progress still, and 42 on the board so far. The new man in comes Mr. Pranam. It's the last legal delivery in progress of the final over. Yes, one to Mr. Pranam. And he lost it in the air. Is it a big one? And that is it. What more is required? He was sent to do that, and he has executed it really well. With that note, the score now moves on to 48 on the board. 49 is the target in the next 24 legal deliveries for team Garuda Gang. The winners of this match will qualify directly to the finals of Tandav Premier League 2023. Selshade, Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. Right, the running starts at first ball and drop that one. Drop by wicket keeper. Difficult chance, call in vain. तो पहली गेंद पर इस वक्त उछालना चाहता, विकेट कीपर ने जीतोड़ कोशिश जरूर की अपनी आगे की ओर आकर गेंद को लपकने की, लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए, गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और पहली गेंद पर बल्लेबाज जीवदान न प्राप्त कर चुके हैं। तो इस वक्त मैच चल रहा है, क्वालिफायर मैच नंबर 1 और गरुड़ा गैंग और मॉन्ग स्ट्राइकर्स के बीच में यह गेंद बेहतर गेंद थी और गेंद कौन साइड पर स्विंग करना चाहा चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। 49 रनों का लक्ष्य, स्टुपेंडस टास्क इन फ्रंट ऑफ Garuda gang set by Monk striker. They batted first, they managed to score 48 runs and they set a huge target in front of Garuda gang. 49 they have to score for victory in their stipulated 4 overs. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहा, ऑफ कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह जहां तक गरुड़ा गैंग के विजय का सवाल है, इस वक्त उन्हें ऐसा कहना पड़ेगा एक चमत्कारी बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी ही इस मैच में मंजिल तक पहुंचा सकती है। और इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर इस बार सही गेंद घोषित और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 2 रन बिना किसी नुकसान के। क्वालिफायर मैच नंबर 1
तांडव प्रीमियर लीग 2023-2023 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ मॉन्क्स की गेंद, अगली गेंदबाज की कट किया इस वक्त, इस बार बेहतर स्टॉप गली की दिशा में, बाईं ओर डाइविंग लगाते हुए गेंद को इस वक्त रोका 20 गज के दायरे के अंदर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज विजय सौरभ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और निशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, इस वक्त गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछाला, लगो और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। वहां पर फील्डर शायद थोड़े से स्क्वायर तैनात थे और गेंद को उछाला था बिल्कुल सीधा, और आखिरकार गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और इसी तरीके की बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है गरुड़ा गैंग को, अगर उन्हें 49 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और इस बीच गेंदबाज इस बीच दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद कट गया, इस बार इनटू द गैप एज वेल। गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करे। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। 9 विदाउट लॉस फॉर गरुड़ा गैंग scored after first over, chasing the victory target of 49 in 4 overs. Still they have to score 40 runs more. They have to score for victory with the required run rate of exactly 13.33 runs per over in their remaining 3 overs. Qualifier match number 1 in playoff round is now going on here in this prestigious cricket tournament, Tandav Premier League 2023, which proudly organized by students of Kendra College, Bangalore. 6 franchise teams are participating in this tournament, and now in a playoff round, the first qualifier is now progressing here between Gauda Gang versus Monk Strikers. Winners of this match straight away will go into the mega final of this competition. इस बार गेंद को खेला स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर पॉइंट की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। सिंगल से अब काम नहीं चलेगा, स्कोर रन रेट इस वक्त बढ़ता हुआ और हर गेंद पर करारा प्रहार करना जरूरी बन चुका है बल्लेबाजों के लिए। और गेंदबाज अश्वत्थ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद पटकी हुई गेंद साइड पर उछाला, गेंद को मिड विकेट की ओर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। थोड़े से शफल होते हुए गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन स्ट्रोक पे इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके, और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपक लिया गया। तो पहला विकेट गिर चुका है, निशांत की पारी समाप्त, और यहां पर 10 रनों के योग पर पहला विकेट खो चुका है गरुड़ा गैंग। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अश्वत्थ की गेंदों का, और अश्वत्थ अपने हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त उछालने में चूंकि ठीक तरह से गेंद को उछाल नहीं पाए, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला। इससे पहले कि शॉर्ट कवर पर स्वयं गेंदबाज जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी गरुड़ा गैंग के लिए। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज अश्वत्थ गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, this time just call for a big one, not connected that one properly, और गेंद को फील्डर ने फील्ड कर लिया। इस वक्त रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए मॉन्क स्ट्राइकर्स के गेंदबाज इस वक्त फलस्वरूप गरुड़ा गैंग के बल्लेबाज रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए, और फिर से एक बार अश्वत्थ अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार उछाला लंबा पर फील्डर, इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है।
यशवंत के पानी समाप्त। गेंद को उछाला था जरूर काफी ऊंचा, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और लंगॉन पर फील्डर पे दाईं ओर दौड़ते हुए एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है गरुड़ा गैंग का। और ऐसा कहना पड़ेगा इस विकेट के पतन के साथ द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम। परेशानियां उनके लिए और बढ़ चुकी हैं। तो जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद का अश्वत्थ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद पैरों पर टकराने के बाद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। बेहतर ओवर की समाप्ति और 2 ओवर के समाप्ति के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा द बैट्समैन ऑफ गरुड़ा गैंग आर नाउ स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। सिर्फ 2 रन इस ओवर में अश्वत्थ ने प्रदान किए। जस्ट 2 runs came from this over and Ashwath got 2 wickets and after 2 overs they are still struggling. 11 for the loss of 2 wickets. 38 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs and the required run rate is now gone up to exactly 19 runs per over. शाम का वक्त लगभग 4 इस वक्त बचते हुए, धूप अभी भी गायब मैदान से, घने बादल नील आकाश को इस वक्त ढक चुके हैं और गर्मी कुछ ज़्यादा तीव्र नहीं इस बदली भरे वातावरण तले। और जहाँ तक का सवाल है इस श्रृंखला का, तो इस टूर्नामेंट का क्वालिफायर मैच नंबर 1 यहाँ पर खेला जाता हुआ और इस वक्त इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के संघर्ष जारी है मॉन्क स्ट्राइकर्स और गरुड़ा गैंग के बीच। ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। लक्ष्मीश एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर। 13 now for the loss of 2 wickets और फिर से एक बार गेंदबाज लक्ष्मीश, थर्ड वाइड, 3 wides. He just searching for his right length and line at the situation for bowler लक्ष्मीश। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर और जहां तक सवाल है गेंदें बाकी हैं 12, रन अभी भी बनाने हैं 35। तो अंपायर इस वक्त कुछ कहते हुए गेंदबाज से और दोनों अंपायर इस वक्त आपस में बातचीत करते हुए, शायद सस्पिशियस एक्शन जो है इस वक्त गेंदबाज का, तो उसके बारे में बातचीत करने के बाद इस वक्त दोनों अंपायर अपने स्वस्थान पर लौटते हुए। तो इस वक्त गेंदबाज तैयार, लक्ष्मीश That's better. That's the line he has to bowl at this situation. After being bowling at 3 consecutive wides, he bowled a first right delivery. और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में। लक्ष्मीश फ्लाइटेड, लेकिन इस फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। वाइड अगेन, तो 14 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। अगली गेंद लेकर लक्ष्मीश तैयार। ये गेंद एक बार फिर से वाइड का इशारा, वाइड नंबर 5 इन दिस ओवर। तो काफी लंबा ओवर उनका यहां पर प्रगति पर रहा और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वाइड के रन के साथ 16 रनों पर 16। और फिर से एक बार लक्ष्मीश तैयार अपने सही लेंथ और लाइन की तलाश में अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार बेहतर गेंद नहीं, वाइड का इशारा, वाइड नंबर 6 इन दिस ओवर, 6th वाइड इन दिस ओवर। और निस्संदेह यहां पर काफी दिक्कतों का सामना करते हुए गेंदबाज लक्ष्मीश 6 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं।
और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। सिर्फ एकमात्र सही गेंद इस ओवर में अब तक वो फेंक चुके हैं। इस बार स्विंग किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। एक रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। प्रोलॉन्ग ओवर प्रोग्रेसिंग हियर सो फार फ्रॉम लक्ष्मीश और 9 गेंदे अब तक इस ओवर में वो फेंक चुके हैं। 3 गेंदे इस ओवर में फेंके जा चुके हैं। 3 सही गेंदे कहना पड़ेगा और एक बार फिर से लक्ष्मीश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार बेहतर स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, गेंद को इस वक्त खेला स्ट्राइट हिट एरिया पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार लक्ष्मीश तैयार। ये गेंद इस बार सफल होते हुए गेंद को उछालना चाहता, चूंकि शॉर्ट थर्ड मैन फीडर के हाथों में गेंद पहुंची और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स नाउ। Still a ball left in this over. Or Lakshmish. Lost it. This time I think it's got the distance. In fact, it's taken inside the fence. So at last, finally a long over came to an end with a wicket for Lakshmish. 3 overs completed, 21 runs on the board and 28 required in last over now. 6 wides bowled by Lakshmish in the previous over and overall 12 deliveries bowled in that over, including 6 wides. And now just the last over remaining, 28 runs required for Garuda Gang for victory. So the last over of the match is now going to start. सागर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, जहां तक गरुड़ा गैंग्स के विजय का सवाल है इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही इन बचे हुए 6 गेंदों में अब उनके टीम को विजय दिला सकते हैं। हर गेंद पर चौका या छक्का यहां पर लगाना होगा बल्लेबाजों को। और पहली गेंद लेकर सागर इस वक्त तैयार। जतिन सामना करते हुए, पहली गेंद lofted and this time drop that one, drop misjudgment and a couple of runs added to their total now. और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर। 26 needed in remaining 5 balls, almost 5 sixes required. Lofted down to long on, but not more than a single. Slight bit of fumble and because of that the batsman come back for the second run easily. 2 run बन चुके। Last chance in front of the Garuda Gangs batsman. 4 sixes required in the remaining last 4 deliveries. 24 needed in 4 deliveries. Misses, that's it. अगर बचे हुए 3 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो निस्संदेह यहां पर मॉन्क स्ट्राइकर्स की विजय निश्चित है। और इस बीच सागर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, bowled him, lost his leg stump and that is the wicket number 4 now for Garuda Gang. Just gone for a mighty heave. It's got a gap between his bat and leg and the ball passed in that gap, stuck to his leg stump. Bells are disturbed and that is the wicket number 4. 25 for 4, 24 required in remaining 2 deliveries and this is an absolutely impossible task for them. We are just waiting for the number 6 batsman of Garuda Gang. और इस बीच गेंदबाज
गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बार ड्राइव किया मिसफील्ड और गेंद पहुंची मिड विकेट पर। एक रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन प्राप्त कर चुके हैं। 27 now. The last ball now remaining. 22 required of last delivery. Absolutely impossible task. Lofted and 6 runs, but that is not enough for them. And that's it. Monk Strikers are through to the grand finale of this competition, defeating Garuda Gang by 21 runs in the qualifier match number 1, and with that victory they are straight away go through into the mega final of this competition. Next match, Kingsville takes over. We're going to win this match in an eliminator round to face Garuda Gang in the qualifier match number 1. So eliminator match in a playoff round is now going to begin between Golden Garuda versus यार पिक्चर दाखल भाई देर पिक्चर तಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮುಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿದ ಜನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ Selchit Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore.
Team Garuda Gang. And the losers will have to go home back with the satisfaction of the participation in the tournament. And that's a wide. That's a wide call by the officials. Again a non-legal delivery. Lofted and taken. Adish is also walking back to the pavilion, and the match is turning around again and again because the batters are giving away their wickets. And it's really to face the second king so far. So after the completion of the first 4 legal deliveries, the score is still at 4 on the board for the loss of 2 big wickets. That is Lingaraj and Adish back in the pavilion. So the new man in comes is Mr. Supreet. Good delivery. That was a piece of a delivery by Mr. Shanmugh. I think the batter having no answer. That was just traveling towards. It's the last legal delivery in progress. The ball was just traveling towards the body line of the batter. Full toss delivery and wasn't executed well, but the ball is traveling towards the fence and very good effort. Very good effort that was by Mr. Darshan again. Possibly 3 more runs added to the scorecard. 3 runs getting added to the scorecard, and the score now moves on to 8 on the board. So after the completion of the first over, the power play is completed and 8 on the board so far. It's Mr. Darshan taking the responsibility of the second over for team Golden Garudas. Good delivery, very good delivery. That was straight to the bowler's hands. And that is a dotted delivery added to the scorecard in the very first legal delivery of the second over. Another good effort by the batter, but unfortunately wasn't able to connect it well or execute the plan he had. Unfortunate enough, that is just a single adding to the scorecard. I think Golden Garudas would be really happy with their bowling performance so far, because they have just conceded 9 runs in the first 8 deliveries. Not at all a bad score or a bad bowling performance.
It's a wide +1. So 2 more runs getting added to the scorecard. I think the extra runs would definitely help a team. Kings to good delivery, very good delivery. Again, directing towards the pads of the batter. The batsman wasn't able to do much. The deflection of the bats, again giving them an extra run. Another good strike that was possibly straight to the hands of the fielder at covers region. It's a 5th legal delivery in progress. And that's again down the leg side. A wide call by the officials. Definitely, as there's no connection between the bat and ball. So definitely the ball was just traveling away from the batter. Down the leg side and a wide call by the officials. And he strikes. But unfortunate and fumble. Fumble by the fielder there at long off region. Mr. Shanmukh possibly wasn't able to hold on to that, and the ball just traveled towards the fence, closer to the fence. Another single getting added to the scorecard, and the 16 is the score at the moment. It's the last legal delivery in progress. Another short ball, another dotted delivery. So that's a completion of over number 2. 16 on the board for the loss of 2. Still 2 more overs remaining. The score moves on to 16 on the board after the completion of the first 2 overs. So it's Mr. Pranav taking the responsibility of the 3rd over for Team Golden Garudas. So it's Pranav taking the responsibility of the 3rd over. The first legal delivery in progress to Mr. Hrithwik. And he strikes. In the air, a chance of a catch and takes it well. Shanmukh this time takes a brilliant catch. Running towards his left from the long off region, and he takes a brilliant one. So sends back Mr. Hrithwik back to the pavilion. So the new man in comes is Mr. Haim in place of Hrithwik. So the second legal delivery in progress of the 3rd over. Run out to Mr. Haim. And struck. Is it a big one? And that is a boundary added to the scorecard. Probably the power was not enough, or
The execution was not enough. End of the day, that's a boundary added to the scorecard. Finding the gap, finding the fence. And 4 more runs added to the scorecard, and the score now moves on to 20 on the board. Another good delivery, and that is the deflection of the stumps. Haim departs. He tries to smack a big one towards the deep square leg region, but unfortunately the ball just travels in between the pads and deflects the stumps. So he must depart back to pavilion. So the new man in comes Mr. Nagraj at the strikers end in place of Heima. It was a full toss delivery and in the gap and take it. That's in the gap. But it just locked out in the hands of the fielder of Ubaid. Takes a brilliant one. Nagraj was definitely trying to place it in the gap and take some cheeky runs, but unfortunately wasn't able to do that. And the new man in comes is Mr. Suresh in place of Nagu. The score moves on to 20 on the board after completion of 2.4 overs. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಈ 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಸಿಪಿ ಆಗಿರುವ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗೋಡೋಳಿ ಲಗ್ನದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸಿನ ಎಸಿಪಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಟೀಮ್ ತಾಂಡವ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. So 3 more runs getting added to the scorecard. Brilliant running between the wickets by the batters of Team Kings. Certainly getting up to 23 on the board. Good delivery, very good delivery that was. A slower delivery and the batsman misses. So that's a dotted delivery added to the scorecard, and the score now moves on to 23 on the board after completion of 3 overs. ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ
ಶಶಾಂಕ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. So it's Prathamesh taking the responsibility of the final over for Team Golden Garudas. Good delivery, very good delivery. That was pretty much onto the block hole, targeting the bat, and that's again the fumble in the field. Probably the ground wasn't right. That was an unfortunate way to give away that extra run. So that's okay. That's a fortunate run for Team Kings. So one run added to the scorecard, and the score now moves on to 24 on the board. That was an easy delivery and a fumble by the batters. Nevertheless, another single getting added to the scorecard. I think the batters are not able to strike some big hits for Team Kings here. They're expecting one big hit at least at this point of time. And he strikes it well, but straight to the hands of the fielder at long on region. Another single only. 3 more legal deliveries remaining. One big hit is definitely required for Team Kings. It's 26 already and 3 more to go. Full toss delivery and he lost it. Probably in the gap, but fielder finds it really well. So another 2 more runs added to the scorecard, I think. With that note, 28 on the board. 2 more legal deliveries remaining. I repeat, the winners of this match will qualify for the qualifier 2 against Garuda Gang, and the losers will have to go home back. So both the teams are struggling to win this match. 2 more to go. 28 on the board. A big appeal coming up and given. Supreet is walking back. The new man in comes is Mr. Vignesh. It's the last legal delivery in progress. And he strikes it well, probably finding the gap and trying to sneak some extra run and gone. Yes, only a single getting added to the scorecard. With that note, that's a completion of over number 4, and the score moves on to 29 on the board. 30 is the target. 24 legal deliveries to go. 24 ಸಿದ್ಧ. 30 ಗುರಿ. The winner of this match will qualify for the qualifiers 2 against Garuda Gang, and the losers will have to go home back. So the chase will commence within a short while, and let's have an intense match coming your way. Get set for the lobster. यार पिक्चर दाखल बैठे. पिक्चर तो पुदर सर्कस. ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತನ
मुझे प्राणीला ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿದ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರು ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಸಿಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾವೂರು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಒಲುಮೆಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನಡುವಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
30 टारगेट इन 4 ओवर्स. Right. The second session of the eliminated match is now going to start. Exactly 30 the target for Golden Garuda set by Kings. And as far as the required run rate is concerned, exactly 7.5 runs per hour they have to score for victory to qualify for the qualifier match number 2 to face Garuda gang. First ball, पहली गेंद, इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए और गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो निस्संदेह यहाँ पर क्वालिफायर 2 में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष इस वक्त जारी है किंग्स और गोल्डन गरुडास के बीच में. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो आदेश यानी आदि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए प्रथमेश जो कि सामना करने के लिए तैयार. नॉन स्ट्राइकर पर प्रणव, यह गेंद इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में खेला, गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद पहुंची मिड ऑन पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर आदेश फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए जहां तक 30 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, तो गोल्डन गरुडास के सलामी बल्लेबाजों को एक बेहतर शुरुआत यहां पर देनी होगी. और जहां तक 29 रनों के स्कोर के अंदर रोक कर रखने का सवाल है, तो यहां पर किंग्स के गेंदबाजों को काफी कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी. यह गेंद उछाला लंबा, काफी ऊंचा, इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके. और लॉन्ग पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें थोड़ी सी दौड़ जरूर लगानी पड़ी अपनी बाईं ओर, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए गेंद को लपका बखूबी सीमा रेखा के अंदर लॉन्ग पर. और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. आउट होने वाले बल्लेबाज प्रणव आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए 0 पर गोल्डन डक के रूप में, और पहला विकेट यहां पर खो चुका है गोल्डन गरुड़ा 1 रनों के योग पर. इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. Shanmukh, the number 3 batsman, is now comes out to the middle with lots of responsibility. और यहाँ पर वो साथ इस वक्त निभाएंगे प्रथमेश का. और आदेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, बदली भरा वातावरण अभी भी मैदान पर छा चुका है. शाम के 4:30 यानी 4:30 इस वक्त बच चुके हैं. और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी भी इस मैदान पर कम होती हुई. कुल मिलाकर एलिमिनेटर दौर का मैच इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत तांडव प्रीमियर लीग 2023-2023 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ. और इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के क्वालिफायर 2 में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है ये दोनों टीमों के बीच में. यह गेंद आदेश के टॉप एज, इस बार गेंद निकल चुकी है. एनफील्ड क्लियर करते हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. गेंद को ज्यादा हद तक उछाल लेते हुए अंतिम क्षण में बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को इस वक्त स्कूप किया था और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर. एक बार फिर से आदेश, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते कट करना चाहा चूंकि अंतिम क्षण में, और यहां पर बल्लेबाज को कोई रन नहीं मिला. अंतिम गेंद पर अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचना चाहा था लेकिन नहीं पहुंच पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज आदेश यानी आदि इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी और आदेश इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, लेकिन गेंद वहां पर पानी पर गिरने के बाद अपने रफ्तार को खोकर जब तक फील्ड और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का.
वर्षा के कारण वहां पर आउटफील्ड पर पानी जमा हुआ था और उस पानी पर जाकर गेंद गिरी और अपने स्पीड यानी रफ्तार को खोती हुई जब तक फील्ड डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्टेडी स्टार्ट जिस अंग्रेजी में कहते हैं इस वक्त कर चुका है गोल्डन गरुडास 5 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। तो सीधे समीकरण पर आते हैं 30 से 5 अगर घटा दिया जाए तो 25 रन और बनाने हैं और गेंदें बाकी है 18 यानी 3 ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट 8.33 रन पर ओवर एंड स्टिल दे गॉट 9 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट 9 विकेट्स दे गॉट इन देयर हैंड। रक्षित गेंदबाजी शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से और देखते हैं यहां पर किस तरीके की गेंदबाजी वो अपनाते हैं। तो सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रथमेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और रक्षित ओवर की पहली गेंद लेकर 25 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 18 डिलीवरीज। द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स उनके प्लेयर के डगआउट में इस वक्त अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के साथ सीटियों के साथ झंडे लहराते हुए और इस बीच ओवर की पहली गेंद रक्षित इस बीच गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फुल टॉस गेंद को स्वीप कर दिया स्क्वायर लेग पर मिसफील्ड गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बेहतर फील्डिंग 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 for the loss of 1 wicket at the start of the second over. In fact, रक्षित एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज षणमुख इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और जैसे ही षणमुख स्ट्राइक कर पाए फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली इस वक्त की गई है। षणमुख के लिए इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ठीक सीमा रेखा के पास ऑन साइड पर एक फील्डर को तैनात किया गया है। डीप मिड विकेट पर एक फील्डर मौजूद, सीमा रेखा के पास लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर तैनात और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट बट स्ट्रेट टू फील्डर, ब्रिलियंटली टेकन। This is an absolutely stunner taken by the fielder at deep cover point. स्ट्रोक दमदार था लेकिन पीछे की ओर दौड़ते हुए अपने एक हाथ से इस कैच को लपका और इस बेहतरीन कैच की बदौलत यहां पर षणमुख का विकेट गिर चुका है। ऋत्विक जो कि कैच लेने वाले फील्डर और उस बेहतरीन कैच की बदौलत यह विकेट यहां पर गिर चुका है षणमुख का। तो दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ हद तक इस वक्त गोल्डन गरुडास की पारी लड़खड़ाती हुई इस मैदान पर दिखाई देती हुई। तो इंतजार है इस वक्त नंबर 4 बल्लेबाज का और देखते हैं कौन सा बल्लेबाज नंबर 4 के तौर पर क्रीज पर उतरते हैं। सुप्रीत इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरते हुए एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है V4 न्यूज 24/7 चैनल पर के द्वारा यूट्यूब पर श्रीमान मानिक इनके सारथ्य में। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, सुप्रीत इस वक्त क्रीज पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार और रक्षित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दर्शक काफी मात्रा में इस वक्त मैदान पर दर्शकों की संख्या बढ़ चुकी है। सुबह जितने दर्शक दिखाई दे रहे थे उससे कई ज्यादा दर्शक यहां पर दिखाई देते हुए कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा रविवार की इस शाम को और रंगीन यहां पर बनाते हुए इस मैदान पर। और इस बीच रक्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद हल्की से धीमी गेंद थी, धीमी फुल टॉस, रक्षात्मक तरीके से गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त पुश कर दिया। शॉर्ट कवर पर 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर रक्षित फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार प्रथमेश। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर रक्षित तैयार। दाहिने तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई ऑफ कटर गेंद थी, ऑफ ब्रेक गेंद थी लेकिन लेग स्टंप से बाहर की ओर निकली। वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार गेंदबाज रक्षित
दाहिने हाथ ओवर द विकेट, परफेक्ट टॉक वाटर कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद पंचों पर उछलते हुए गेंद पहुंची इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर। जब तक गेंद को थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद फील्डर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ಈ ಒಂದು ಗೋಧೋಳಿ ಲಗ್ನದ ಟೀಮ್ ತಾಂಡವ್ ಆಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶರತ್ ಹಾಗೂ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಇವರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಇವರಿಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ. थैंक यू मैडम। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो रक्षित इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक्स्ट्रा क्विक वन जस्ट मिसिंग आउट ऑफ स्टंप, वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, और वाइड के 1+1 in fact 2 runs added to the total, and with that couple run the scoreboard moving up to 12 for the loss of 2 wickets now in the over number 2 in progress. Still the equal battle is now continuing here. 18 more runs now they have to score for victory in remaining 14 deliveries. और रक्षित इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। रक्षित फिर से एक बार तैयार, ये गेंद क्रीज के कोने से रक्षात्मक तरीके का खेल, फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को खेल दिया इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट। दूसरे रन के लिए दौड़ पर स्ट्राइकर पर कतरा थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो काफी धीमा, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 16 रन्स नीडेड इन रिमेनिंग 13 डिलीवरीज। 13 गेंदें बाकी, 16 रन चाहिए, ऐसा कहना पड़ेगा। इट कुड बी एनीबडीज गेम एट दिस सिचुएशन। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर, और दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत इस वक्त करते हुए, और बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए इस ओवर में अंतिम बार रक्षित इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और सामना करने के लिए तैयार सुप्रीत रक्षित। दिस टाइम परफेक्ट लेग ऑफ कटर डिलीवरी, जस्ट शफलिंग अक्रॉस द लाइन, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, और यहां पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। हालांकि स्टंप्स को एक्सपोज कर चुके थे इस वक्त बल्लेबाज, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहते थे, चूंकि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकले और वाइड का इशारा अंपायर का। 15 रन बन चुके हैं, 15 रन स्कोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स नाउ। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रक्षित, ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट लेग कटर, एंड दिस टाइम he's got a deflection on that, caught behind the wicket, and Rakshit got the breakthrough. Third wicket gone in fact. 2 overs completed, 15 runs on the board, 2 overs left, and still 15 more runs now they have to score for victory. 2 ओवर पूर्ण हो चुके हैं, 15 रन बन चुके, 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर बाकी, 15 रन और बनाने हैं, और 7 विकेट सुरक्षित। 10 रन इस ओवर में बने। गुड ओवर in Golden Gadoa's point of view came to an end, except they lost their wicket in this over. They managed to score 10 runs in this over. तो बराबर का संघर्ष यहां पर जारी है, और 12 गेंदों में इस वक्त बनाने हैं 15 रन, और काफी लंबी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज सुरेश के हाथों में, और सुरेश इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रथमेश के लिए, और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स की गूंजे सीटियां इस वक्त सुनाई देती हुई मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर यहां पर रुक चुका है, और नया ओवर इस वक्त शुरू करते हुए सुरेश। कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। मिड ऑफ इस वक्त एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड बैन, शायद एक्स्ट्रा कवर को इस वक्त हटा दिया गया है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर को भेजा जा रहा है। एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद। गली, शॉर्ट फाइल लेग और मिड विकेट इस वक्त तैनात इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल, और ओवर की अगली गेंद लेकर, पहली गेंद लेकर सुरेश इस वक्त तैयार।
तो इस वक्त 12 गेंदें बाकी हैं और 15 रन चाहिए विजय के लिए. So fantastic match is now progressing here. और सुरेश पहली गेंद, first ball of the third over of the innings is now coming up. दाहिना तो over the wicket. Lofted! This time I think it's that is an absolutely fantastic strike. Just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style after being shuffling across the line. And the ball went over the fence for a huge one. और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा, गोल्डन गरुडास आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द मैच. 21 for the loss of 3 wickets, 9 runs to get and 11 balls remaining. अब ऐसा कहना पड़ेगा किंग्स के लिए कमबैक करने के लिए इस वक्त डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त दरकार. और अगली गेंद lofted again, but this time golden right on top. 2 back-to-back sixes from Prathamesh, and now equation seems to be much easier for them. 3 needed in remaining 10 balls. और अब ऐसा कहना पड़ेगा किंग्स को कुछ चमत्कारी गेंदबाजी, मैजिकल बॉलिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है. Again lofted and this time हैट्रिक छक्का लगाने के प्रयास में अपना विकेट यहां पर खो बैठे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बाखूबी निभाई प्रथमेश में. He's out for 15 including 2 sixes after being playing a fantastic knock off their side. He is back into pavilion और प्लेयर्स डगआउट में टीम के अन्य खिलाड़ी और समर्थक सपोर्टर्स झंडे लहराते हुए उनका स्वागत इस वक्त करते हुए और निस्संदेह अपने टीम को सही तट के अति निकट लाकर ठहराने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी बाखूबी अदा करने के बाद पवेलियन वापस लौट चुके हैं. अब 9 गेंदें बाकी हैं, 3 रन चाहिए और तख्ता काफी हद तक भारी लगता हुआ यहां पर गोल्डन गरुड़ा का. Still 3-4 victory for Golden Garudas to qualify for the qualifier match number 2 of this competition, Tandav Premier League 2023. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट सुरेश. ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, शॉट कवर पर गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा. शॉट पॉइंट पर कहना पड़ेगा गेंद को, जब तक थोड़ी सी मिस फील्ड के बाद फील्ड करे 1 रन का इजाफा हो चुका है. And with that single scoreboard moving up to 28 now, just 2 runs to get from remaining 8 deliveries. और सुरेश इस वक्त अपने गेंदबाजी पर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. इस बार बॉल्ड आउट, लेग स्टंप uprooted, just shuffling across the line, wanted to touch it away around the corner, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तेज रफ्तार के साथ उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे लेग स्टंप को उखाड़ कर ले गई. बिल्स डिस्टर्ब हो चुके हैं और इसी के साथ यह विकेट नंबर 4 गिर चुका है. It's 28 for 4 now. Datta, number 7 batsman, is now comes out to the middle. 2 runs they have to score for victory. 7 balls remaining. For the last time in this over, the bowler Suresh comes. और इस ओवर में अंतिम बार सुरेश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार दत्ता के लिए खेल दिया इनटू द गैप एज वेल. गेंद जाती हुई कवर पॉइंट पर 1 रन प्राप्त कर चुके हैं, दूसरा रन पूरा कर चुके हैं और इन दो रनों के साथ Golden Garuda are through to the qualifier match number 2 of this competition. In the qualifier match number 2, they will meet Garuda again. So 2 Garudas will clash in the qualifier match number 2, and winners of qualifier match number 2 straight away go into the grand finale of this competition. Monk Strikers and
Two Garudas will clash each other in the qualifier match number 2, and winners of the qualifier match number 2 will straight away go into the grand finale to face Monk Strikers in the grand finale of this competition, which will be played right after the Get set for the lobster. यार पिक्चर दाखल बैदे पिक्चर तಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮುಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿದ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ Shade, Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. यार पिक्चर दाखल बैदे पिक्चर तಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮುಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ
ತೆರೀತೆ ಜನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ SL Chain, Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore.
So yes, getting back to the game, it was first legal delivery was a dotted one. His second legal delivery in progress to Mr. Shanmugh. A wonderful delivery that was pretty much onto the body line. So two back-to-back dotted deliveries. Full toss delivery, and the batsman definitely had a chance. So after the completion of our first three legal deliveries, the score just moves on to 1 on the board. The qualifier 2 is happening here. The winners of this match will qualify against Monk Strikers in the finals. The fourth legal delivery in progress. Good delivery and pretty much straight to the fielder's end. A big appeal coming up. But fortunate enough, that is a dotted delivery. So this is a power play over on. Good delivery, a very good delivery. That was a run out chance as well, but fortunate enough. So it's the last legal delivery in progress. Nishant to Mr. Shanmugh for the last time in the first over. Good delivery lofted. High in the air. Chance of a catch and the fielder takes it well. The first wicket down. The first blood has been shedded of the team. Golden Garuda. So Mr. Shanmugh is walking back to the pavilion. So after the completion of the first over, the score moves on to 2 on the board after completion of 1 over, and the first wicket has been so it's Mr. Jatin taking the responsibility of the second over. So the new man in comes is Mr. Prathamesh in place of Shanmugh for Team Golden Garudas. After the completion of the first over, the score moves on to 2 on the board for the loss of 1. I request the officials to please continue the match as soon as possible. We are already at 5 o'clock. We have to finish 2 more matches and finish the valedictory as well. So I request the officials to please push the match as soon as possible. Also, the request to the captains. I request the captains to please be a little more quick enough in the field. We have to finish 2 more matches for the day. Good delivery, very good delivery. That was pretty much onto the block hole. Straight to the hands of the fielder. Probably just a single getting added to the scorecard. And the second legal delivery in progress of the second over. To Mr. Prathamesh, Jatin to Mr. Prathamesh. Good delivery, very good delivery. That was a shorter one. I believe Prathamesh was trying to swing his arms hard, but unfortunately he wasn't able to connect that delivery, and the ball just traveled beautifully towards the keeper's hands. The third legal delivery in progress of the second over. Good delivery, very good delivery again. That was pretty much onto the block hole. Straight to the hand of the fielder at long off region. Certainly a single has been added to the scorecard. I think the bowlers of team Garuda gang are doing their job really well. They've just conceded 4 runs in the first 9 legal deliveries and have picked up a first wicket that in the name of Shanmugh. Good delivery, very good delivery. That was straight down the field. A chance of a run out as well. And they definitely had a chance of a run out, but the backup wasn't at the right place maybe, so the fielder wasn't interested to try for the run out. So with that note, it is another single getting added to the scorecard.
Last 2 more legal deliveries remaining. Struck well, but straight back to the The fumble by the fielder has rewarded those 4 extra runs for Team Golden Garudas. Probably the misfield or that fumble by the fielder, will it be costly? As you always say, the catches wins matches. The misfields will also be a curse for them. 9 on the board so far. The misfields will also be sometimes a curse wherein it will be really effective for them. With that note, another dotted delivery. So that's the completion of over number 2. The score moves on to 9 on the board for the loss of 1 wicket. So it's Mr. Saurav taking the responsibility of the 3rd over for Team Garuda Gang. Pranav at the striker's end. Good delivery, very good delivery that was. Targeting the stumps, that was pretty much onto the block hole. I think Pranav had a predetermined state that he was ready for a quick single, and that was a gentle touch and run. So another run getting added to the scorecard. The score now moves on to 10 on the board. After the completion of 2.1 overs, the score moves on to 10 on the board. I request the captains to be a little more quick enough in the field. Good delivery, very good delivery that was. Another Yorker and delivery, probably finding the batsman into the low full toss, but fortunate enough, the batsman wasn't able to execute it well. The bowler gets a succession, and that's a dotted delivery getting added. It's a 3rd legal delivery in progress of the final, of the 3rd over. Full toss, lofted, chance of a catch. And that's taken, a very good catch taken by Mr. Nitin to send the big fish back to the pavilion. Mr. Prathamesh is walking back to the pavilion for Team Golden Garudas. End of the day, it's Saurav who has the last laugh against Prathamesh. They still have 9 more legal deliveries remaining in this innings. So we need to wait and watch. Will the batters of Golden Garudas accelerate themselves and put up a better total? Because now the score is just 10 on the board after the completion of 2.3 overs. Close to 15 deliveries have been completed. Legal deliveries have been completed. They've just got 10 runs. And this is the qualifier too. Winners will qualify for the finals against Monk Strikers. Good delivery, and there was a chance of a catch. A big effort, a very good effort by Mr. Yeshwan, but unfortunately he wasn't able to hold on to that. But that effort was tremendous, diving towards his left. Certainly saving a run to his team, I believe. With that note, there's still 2 more legal deliveries remaining in this 3rd over. It's the 5th legal delivery in progress of the 3rd over there. Saurav to Mr. Pranav. Good strike, very good strike that was towards the covers region, but unfortunately he finds the fielder at the right spot. So with that note, it's just a single getting added. If not, that was a very good strike by Mr. Pranav, lofting over the covers region for a single. So with that note, it's the last legal delivery in progress of this 3rd over, and the score has already moved up to 12 on the board.
It's a wide. It's a wide call by the officials. It's a non-legal delivery again. I think each and every run is really important for Team Golden Garudas at this point of time because they are way behind the over rate or the run rate there. And he strikes. Is it a big one? Is it a clearance? And maximum added to the scorecard. That is a maximum. A wonderful effort probably by the fielder at long on region, but Nitin, end of the day, wasn't able to collect it really well, but that was a tremendous effort by Mr. Nitin at the long on region. Certainly adding 6 more runs to the scorecard, and the score now moves on to 19 on the board of the completion of the 3 overs. So it's a 4th over in progress, the final over of this innings, and the score was on a 19 on the board. It's Yeshwan, the captain himself, taking the responsibility of the final over of this innings. Yeshwan to Pranav. I request the captains to be a little more quick enough, sir. We're running short of time. And struck. Will it be a clearance? And that is a boundary. 1 bounce over the rope. Pranav strikes it well just over the bowler's head. And the ball just travels in the gap towards the fence. And 4 more runs getting added to the scorecard. And the score now moves on to 23 on the board. Slowly and gradually, Golden Garudas are definitely reaching the expected scorecard, I believe, score mark. Because now they have reached up to 23 on the board after the completion of 4. And that lands in the safe hands of the fielder. That was a very good connect by Mr. Pranav, but unfortunately, he wasn't able to clear the fence or find the gap towards the deep mitigate region. And he finds the man right at the spot of deep mitigate. So certainly another wicket down. It's the 3rd legal delivery in progress. And the new man in comes is Mr. Anish. It's Anish at the striker's end. 3rd legal delivery in progress. Good delivery and big appeal coming up. A big appeal coming up. And that is a denied call. A denied appeal by the officials, and probably discussions happening between the players and the fielders as well. So with that note, just a single getting added to the scorecard, and the score now moves on to 24 on the board after completion of 3.3 overs. Still 3 more legal deliveries remaining. And the final over of this innings. 3 more legal deliveries remaining there. 24 on the board. Yeshwan. Another good delivery. That was a low full toss one. Finds the fielder. They fumbled by the fielder there. And giving that extra run for Team Golden Garudas. The fumble by the fielder. The same fielder who missed just that time. And now another fumble. Strikes it well. Straight to the hands of the fielder. Chance of run out. And another single getting added. 2 back-to-back singles getting added to the scorecard. And this is the last legal delivery in progress. And the score now moves on to 27.
27 on the board. Last one more legal jelly remaining. ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. And gone. Anish is gone. So unfortunately, that's the completion of over number 4 and the completion of the first innings as well. The score moves on to 27 on the board. 28 is the target for team Garuda Gang in the next 24 legal deliveries. I repeat, 28 is the target in the next 24 legal deliveries for team Garuda Gang. Get set for the last turn. यार पिक्चर दाखल बैदे पिक्चर तಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ मुझे ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ పిక్చర్ తక్కువ గుర్తుండేత పిక్చర్ తగలత్త మిలిటరీ తగలత్త బేన్ తిండ్ರೆ సన్ని నిగిలేదు ఓ దేవరే టాపిక్ చేంజ్ అనుకోగా Thank you. And 28 the target for Garuda Gang to qualify for the grand finale of this competition to face Monk Strikers. And their innings now going to start. 28 they have to score in the stipulated 24 deliveries. First ball, पहली गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को उछालना चाहता, चूंकि वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. तो दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स यहाँ पर तालियों के साथ सीटियों के साथ अपने टीम के खिलाड़ियों का मनोबल यहाँ पर बढ़ाते हुए, और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. गरुड़ा गैंग का एक रन 90 अंक से नुकसान के, और फिर से एक बार गेंदबाज षणमुख का गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद क्रैक्स इट अवे थ्रू द ऑफसाइड इनटू द गैप एज वेल, और कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे. ऐसा पर कहना पड़ेगा हाफ वॉली पर गेंद थी, और खूबसूरती के साथ गेंद को स्क्वायर ड्राइव कर दिया इस वक्त, और गेंद जब तक फील्ड हो डीप कवर पॉइंट और बैकवर्ड थर्ड मैन के दरमियान बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. अगली गेंद के लिए तैयार, यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन के दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. क्वालिफायर मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट तांडव प्रीमियर लीग 2023-2023 के अंतर्गत खेला जाता हुआ, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. टिप्पा खाने के बाद नीची रहती हुई गेंद, गेंद को खेलना चाहता, बल्ले और पैर के बीच लंबा अंतर, और उस अंतर को चीरती हुई गेंद सीधे जा टकराए मिडल ऑफ स्टंप पर, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. तो यशवंत अपनी पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और 4 रनों पर अपना पहला विकेट खो चुका है यहां पर गरुड़ा गैंग. तो इस शानदार श्रृंखला का आयोजन किया है स्टूडेंट्स जो कि विद्यार्थी हैं कैनरा कॉलेज मंगलूर के, तांडव प्रीमियर लीग 2023-2023 के नाम पर इस श्रृंखला का क्लाइमैक्स जो कि यहां पर गुजरता हुआ, और इस श्रृंखला के फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी है दोनों गरुड़ टीमों के बीच, गोल्डन गरुड़ास और गरुड़ा गैंग के बीच. और इस बीच
गेंदबाज इस बार ऑफ साइड पर फुल टॉस गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त फील्डर थोड़ी से पीछे वाइड लॉन्ग ऑन पर रन आउट का खतरा थ्रो पहुंचा लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज दूसरा रन वन शॉट का इशारा इनफैक्ट जस्ट अ सिंगल रन एडेड वन शॉट डिक्लेयर्ड बाय अंपायर बिना क्रीज को छुए हुए दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे और अंपायर ने इस वक्त इशारा किया कि वन शॉट है और एकमात्र रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रनों पर जबकि पहला ओवर उनके पारी का प्रगति पर और षणमुख का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार जस्टिन गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त शॉट कवर पर रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद वहां पर फील्ड की जा चुकी है रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा जतिन बल्लेबाज थे और इसी के साथ लास्ट बॉल लेफ्ट तो अंतिम गेंद अभी भी बाकी और गेंदबाज षणमुख अपने गेंदबाजी के भाग पर यहां पर आते हुए ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज जतिन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार षणमुख की गेंदों का फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अगली गेंद बेहतर एब्सोल्युटली पिचिंग ऑन द ब्लॉक होल गेंद को ड्राइव करना चाहा जगह नहीं बना पाए गेंद उनके बल्ले से टकराने के बाद घुमाव लेते हुए स्पिन होती हुई वहीं पर कुछ दूर तक जाकर रुक गए जब तक विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर झपके बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ द स्कोर इज नाउ मूविंग अप टू 6 नाउ विद दैट सिंगल फॉर लूजिंग 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर फॉर गरुड़ा गैंग तो अब रन से बनाने हैं 22 गेंदे बाकी हैं 18 22 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 18 डिलीवरीज दैट मींस इन 3 ओवर्स शाम का वक्त लगभग 5:30 यहां पर बचते हुए 5:25 यहां पर बच चुके अगर सही तरीके से कहा जाए और निस्संदेह यहां पर इस श्रृंखला के ग्रैंड फाइनल मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी है दोनों गरुड़ टीमों के बीच गरुड़ा गैंग और गोल्डन गरुड़ास के बीच और गेंदबाज दर्शन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए इस बार बेहतर गेंद थी ऑफ स्टंप पर आते हुए डॉट गेंद और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में गेंद पर कट करना चाहा था चूंकि गेंद उनके पहुंचे बाहर और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला स्कोर रुक चुका इस वक्त 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के फिर से एक बार दर्शन अपने गेंदबाजी के भाग पर जाते हुए जतिन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार इस बार बेहतर एक्स्ट्रा क्विकर मच स्ट्रेटर लाइन कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स and the batsman is now straight away under pressure after being playing 2 consecutive dot deliveries और 2 बेहतर गेंदें और पिछले गेंद के मुकाबले ये गेंद बेहतर थी काफी तेज रफ्तार के साथ टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए एक्स्ट्रा क्विकर पेस के साथ सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और बल्लेबाज को कोई स्ट्रोक्स खेलने का अवसर यहां पर नहीं मिला अगली गेंद इस बार ड्राइव किया कदमों का इस्तेमाल करते हुए यूजिंग हिज फीट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस और फिर से एक बार दर्शन अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में एक बार फिर से रन्स नहीं मिलेंगे सो डॉट गेंद और यहां पर अब ऐसा कहना पड़ेगा हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर एक बेहतरीन ओवर प्रगति पर इस वक्त दर्शन का जिसमें सिर्फ 1 रन अब तक उन्होंने प्रदान न किए हैं और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार हमसे दूर वाले छोर से काफी लंबी रनअप के साथ दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद को जाने दिया वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर जबकि दूसरा ओवर उनके पारी का यहां पर प्रगति पर ठीक 20 रन और चाहिए विजय के लिए एग्जैक्टली 20 मोर रन्स नाउ रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 16 डिलीवरीज This time absolutely fantastic delivery from the bowler. फुल लेंथ गेंद को उछालना चाहा चूंकि
लगभग बल्ले के अति निकट गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। और एक ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज दर्शन अंतिम गेंद लेकर इस ओवर में तैयार। फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर दर्शन कम्स दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ड्रिवन डाउन टू एक्स्ट्रा कवर, जस्ट गॉट अ सिंगल, लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट। और एक रन के साथ ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। सो फैंटास्टिक ओवर फ्रॉम दर्शन केम टू एन एंड, जस्ट 2 runs came from this over and after 2 overs just chasing the victory target at 2018 4 overs set by Golden Garuda. Garuda gang are now still searching for the right track. It's 9 for the loss of 1 wicket, 19 runs to get from remaining 2 overs, that means in 12 deliveries, and the required run rate is now gone up to exactly 9.5 runs per over. शाम का वक्त, रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, लगभग 5:30 बजते हुए। सूरज हालांकि बादलों की आड़ में जरूर इस वक्त छिप चुका है, लेकिन मैदान की दाईं ओर वो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वहां पर वो समंदर की ओर अपना सफर इस वक्त तय कर चुका है। और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी भी मैदान पर कम होती नजर आती हुए। और इस बीच नया ओवर प्रारंभ होता हुआ प्रणव माफ कीजिए, गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। 12 balls 19 रिक्वायर्ड। फर्स्ट बॉल, पहली गेंद लेकर प्रणव इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए छोटे रन अप के साथ। इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, डॉट डिलीवरी। और इस डॉट डिलीवरी के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज के ऊपर दबाव और बढ़ चुका है। 11 balls remaining, 19 runs required. They badly need 1 boundary or 6 at this stage to get back into this match. और फिर से एक बार प्रणव तैयार, शफल होते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया, गेंद पहुंची मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, डबल फिगर्स, 10 for the loss of 1 wicket now. Still the struggling time continuing here for the batsmen of Garuda gang. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो प्रणव गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। Full toss, lofted, and this time that is a chance for the long off fielder, and he took the catch successfully. Just wanted to heave the ball over the long off fielder. Fielder's head, not succeeded, not quite get that one right with the middle of the bat. और long off पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की। एक और विकेट गिर चुका है। इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा गरुड़ा गैंग की पारी की नैया बीच मझधार में जूझती नजर आती हुई, और तट जो कि काफी दूर, और ऐसा कहना पड़ेगा छक्के या चौके ही अब सही तट की ओर उनकी टीम की नैया को अग्रसर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो 9 गेंदे 18 रन चाहिए, 18 to get from 9 balls. And a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Golden Garudas. Or Pranav. Full toss, just but couldn't got the advantage of that one. That wasn't a juicy lollipop delivery. लेकिन इस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। और स्वयं अपने आप से नाखुश इस वक्त बल्लेबाज अपनी नाखुशी का उन्होंने इजहार किया अपने हाथों को अपने जांग पर मारने के बाद, लेकिन वक्त बीत चुका है और सिर्फ एकमात्र रन उनके खाते में जुड़ चुका है। फिर से एक बार प्रणव गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद फ्लाइटेड बॉर्डर ऑफ ब्रेक डिलीवरी, and he just got the rid of the batsman. So a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Golden Garudas. And now the equation seems to be much stiffer now for them. 17 to get and 7 balls left. 7 गेंदे बाकी, 17 रन चाहिए। अब ऐसा कहना पड़ेगा चौके या छक्के ही गरुड़ा गैंग को इस मैच में वापस ला सकते हैं। Pranav, अंतिम बार, for the last time in this over, Pranav comes. New batsman, number 4 batsman is the crease. दाहिने हाथ over the wicket. Lost it. This time, I think. Fallen. और इसी के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा Golden Garuda are now looking right on top. 17 needed of last over.
और सिर्फ चौके या छक्के ही अब बड़ौदा गैंग का भविष्य यहां पर बदल सकते हैं। सिर्फ चौके या छक्के ही अब बड़ौदा गैंग का भविष्य यहां पर बदल सकते हैं। 17 रन चाहिए अंतिम ओवर में, 17 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। प्रथमेश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, अंतिम ओवर शुरू होता हुआ गरुड़ा गैंग की पारी में फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहां पर दिखाई देता हुआ। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद। बैकवर्ड स्क्वायर लेग ना डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त प्रथमेश सामना इस वक्त करते हुए नितिन। लॉफ्टेड दिस टाइम आई थिंक लेकिन अंतिम क्षण में अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए अपने अंतिम प्रयत्न में, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और जैसे ही गेंद सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टिप्पा का है, गेंद को उछलते हुए अंदर की ओर ढकेला। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और इस ब्रिलियंट फील्डिंग की बदौलत अनीश फील्डर थे वहां पर, और इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत सिर्फ 2 मात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। अब 15 रन चाहिए 5 गेंदों पर। अगली गेंद लॉफ्टेड दिस टाइम 9 रिक्वायर्ड, 4 बॉल्स रिमेनिंग। अगर पिछले गेंद पर छक्का होता तो अब सिर्फ 5 रन बनाने होते 4 गेंदों पर, लेकिन अब बनाने हैं 9 रन जबकि गेंदें बाकी है 4। फैंटास्टिक स्ट्रक केम फ्रॉम द बैट ऑफ नितिन। और अब स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर और इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज नितिन सामना करते हुए यह गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी गेंदबाज की। 3 बॉल्स 9 रन्स। छक्के और चौके की सख्त जरूरत इस वक्त गरुड़ा गैंग को इस मैच में कमबैक करने के लिए। नितिन इस वक्त तैयार। अगली गेंद, यह गेंद इस बार fantastic piece of batting performance continuing here from Nitin. 3 to get, 2 balls remaining. It could be anybody's game. The pressure is now building up on both sides. So 3 of 2 और मैच इस वक्त बराबरी पर आकर रुक चुका है। खासकर नितिन द मैन playing a sheet anchor role for their side. और इस बीच प्रथमेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद नितिन के लिए इस बार What a fantastic match is now progressing here. और जहां तक सवाल है अंतिम गेंद का, तो मैच निर्धारित गेंद बाकी और देखते हैं इस मैच निर्धारित गेंद में विजय किसके पक्ष में जाता है। दर्शक खामोशी के साथ इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए, हालांकि वहां पर एक खिलाड़ी के पैर पर कुछ हद तक चोट आई है, दूसरे खिलाड़ी उनका उपचार शुश्रूषा इस वक्त करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। So what a fantastic second qualifier match is now progressing here.
Still the match stands in a balance. I request Mr. Shashank, please to be reported here in the commentary box. Mr. Shashank. ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಶಶಾಂಕ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Officials. So everything seems to be perfect. And the last ball remaining, 3 required, 2 for tie, 3 for win. And let's see who will be entering into the grand finale of this competition. If the match ended in a tie, it's going to be a super over. और यहाँ पर अंतिम गेंद लेकर तैयार गेंदबाज प्रथमेश, जबकि बल्लेबाज रोहन. और इस बीच द मैच डिसाइडिंग बॉल कम्स प्रथमेश टू रोहन. और इस बीच 3 to get from last delivery. Here we go. Right arm over the wicket. They are through to the grand finale of this competition after defeating Garuda gang by just a narrow margin of 2 runs. And with that victory, they are entering into the mega final of this competition. So in the mega final, they will meet Monk Strikers, and the grand finale of this match will going to begin right after 5 minutes break. And I request the captains of Golden Garuda and Monk Strikers please to be reported here for the toss procedure. Golden Garuda ಹಾಗೂ Monk ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತದನಂತರ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So the last match, a big match is now coming up, and let's see who will be the champion of Tandav Premier League 2023. And grand finale match is now going to start between Golden Garuda versus Monk Strikers. And we'll be back. We'll take a short break for the second last time in this tournament, and we'll be back right after the short break when the grand finale, mega final match of this tournament will going to start right after the 5 minutes. Thank you. Get set for the last turn.
जरा पिक्चर दाखल बैदे पिक्चर तಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮುಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿದ ಜನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲವರ ಏರ್ Selchade Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. जरा पिक्चर दाखल बैदे ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮುಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿದ ಜನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲವರ ಏರ್
SL Shade Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ಬೈದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನ ಮೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿತ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ SL Shade Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. Golden Garudas, captain to captain. A short ball, then again, he's the man in the previous matches as well, running behind from the 30-yard circle, closer to the fence and taking that brilliant one, sending back Saurav
to the pavilion. The big wicket, the icon of Monk Strikers, the captain himself, is walking back to the pavilion in the very first legal delivery. This would be really disappointing for them, but nevertheless, they definitely have a very big batting lineup. So let's wait and watch. The new man in comes is Mr. Ashwath. So the second legal delivery in progress of the first over. Shanmukh to Ashwath. Strikes it well, probably straight down to the field. A chance of run out as well, but the batsman makes the ground comfortably. So another single added to the scorecard. After the completion of the first two legal deliveries, the score moves on to just one on the board. It's Darshan getting back the strike to face the third legal delivery of the first over. Full toss and no ball call by the official. That is an extra run getting added to the scorecard. That is 1+1 probably. A lot of fumble happening between the fielders there, but fortunate enough, 2 runs added to the scorecard. It was a no ball, and now the free hit is on for Mr. Ashwath. Free hit is on for Mr. Ashwath. Another full toss delivery. Will it be taken or? So 2 more runs getting added to the scorecard. That was a brilliant effort again. So now the score moves on to and again, high in the air, the ball is just traveling towards the fence probably. Very good effort that was. Another 2 runs added to the scorecard. Brilliant running between the wickets by the batters of Team Monk Strikers, and a good fielding effort as well by the fielders of Team Golden Garudas. So certainly the score now moves on to 7 on the board after the completion of 4 legal deliveries. So 2 more to go. Good delivery, very good delivery that was. The batsman was definitely unaware of that. The ball just beats the batsman and travels straight towards the keeper's hands. It's the last legal delivery in the first over. Plays it well, and that was in the gap. And that is a boundary added to the scorecard. And now the score moves on to 11 on the board. A complete utilization of the power play over by Team Monk Strikers. In the 4 overs, we need to wait and watch how well Monk Strikers can accelerate themselves, because in the first over they have scored 11 runs. In the next 3 overs, we need to wait and watch. Will the batters of Team Monk Strikers put up a best total to challenge Team Golden Garudas in this prestigious Premier League? Tandav Premier League 2023. It's Darshan getting back the strike to face the first legal delivery of the second over. Good delivery, very good delivery. That was well inside the line. Waiting the batsman again, pretty much away from the batter, close to the off-wide line, I believe. But just travels straight to the keeper's hands, and that is a complete dotted delivery. It's the second legal delivery in progress of the second over. And he strikes it well over the bowler's head. I think the singles wouldn't hurt much for Team Golden Garudas probably, because one big hit will change the momentum for both the teams. Until and unless the singles are concerned, I think Golden Garudas will be a little more comfortable with that. The score now moves on to 12 on the board. Good delivery, very good delivery. That was pretty much
A low full toss one. Batsman trying to drive it towards the covers region, but unfortunately finds an edge and single getting added. Among strikers still have 15 legal deliveries in their hand. Another short ball there. Dre Electrician. There was a chance of a run out, but fortunate enough. Ashwath was well inside the line there. Maybe the fumble by the fielder as well, but fortunate enough, a single getting added. The spectators, a lot of spectators are watching this final match of this tournament. Who will be the champions of Tandav Premier League 2023? Good delivery that was again. A low full toss straight to the hands of the fielder. Mr. Datta feels it well. Singles are getting added in each and every delivery for team among strikers here. Pretty much comfortable with the singles, I believe, until and unless the big shots are concerned. I think the things will be really perfect for Team Golden Garudas as well. The 15 is on the board so far. The last legal delivery in progress of the second over. Strikes it well again, pretty much in the gap. The chance of an extra run and fumble by the fielder there, and the score now. 2 more runs added to the scorecard. Maybe the fumble by the fielder at long off region by Mr. Shanmukh or by Darshan. It's over number 2 completed. The ball just travels straight towards the fielder there, so a certain fumble may be adding that extra run to the scorecard, and the score now moves on to 17 on the board after completion of the first 2 overs. I request the officials to please continue the match as soon as possible. So it's Mr. Pranav taking the responsibility of the third over for Team Golden Garudas. The score moves on to 17 on the board. It's Darshan, it's Ashwath at the striker's end. Short ball, high in the air, chance of a catch and fielder, will it be taken? Yes, it has been taken really well by Mr. Supreet, and Ashwath is walking back to the pavilion. He was trying to pull it towards the deep square leg region, but unfortunately he wasn't able to do that either, finding a top edge, and he has departed. ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಗಿರುವ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡಿನ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಇವರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ. So thank you so much for getting back to the game here. The second legal delivery in progress of the third over. Run out to Mr. Sachit. The big fish, the very good cricketing striker of this cricketing ball of Team Monk Strikers. As expected in the very first legal delivery, he is trying to smack a big one. But this time he wasn't able to do that either. That was a dotted delivery. The ball just traveled beautifully towards the keeper's hands, beating the batsman. Strikes it well, probably not finding the gap. Straight to the hands of the fielder, Mr. Datta. So far, I think Team Golden Garudas are really doing a great job in the field and in the bowling side, being a little more economical. 17 so far, 2.3 overs up.
Good delivery. That was a very good delivery. Maybe the batsman shuffling in. And that's a dotted one. Still 2 more legal deliveries remaining in the third over. And the score has moved up to 18 on the board. He strikes. High in the air. Chance of a catch. Will it be taken? And yes. It's taken. And another wicket down. Another wicket fumbles. And Darshan is walking back to the pavilion. Probably Monk Strikers are in the trouble in the final match because 2.5 overs up, 18 on the board. That is 17 legal deliveries faced, 18 has been scored. It's the last legal delivery in progress. Lakshmesh, the new man at the striker's end. Good delivery, very good delivery that was. Again, appeal coming up, but nevertheless, that's the completion of over number 3 and the score moves on to 18. So far, I think the team Golden Garudas are really in a comfortable position, but nevertheless, Monk Strikers have scored their part. But in the next 6 legal deliveries, it's really important for both the teams how well they will accelerate themselves and get into a better position end of this 4th over. It's Prathamesh taking the responsibility of the final over for team Golden Garudas. And very importantly, for Team Monk Strikers, it's Mr. Sachit at the striker's end. Full toss delivery that was very well swept towards the deep square leg region and brilliantly fielded. I repeat, brilliantly fielded by Mr. Anish. A great arm he has from the deep square leg region. So just a single getting added to the scorecard. I think one big hit is definitely required for team Monk Strikers in this over. If not, it will be really difficult for them. High in the air, chance of a catch, and that's taken. That is taken. Lakshmesh is walking back to the pavilion. I think the wickets are fumbling again and again for team Monk Strikers. Until and unless they strike a big one, they are definitely in a deep trouble here. 19 so far they have scored. And 20 deliveries completed. Need to be noted because this is the final. The winners of this match will be the champions of Team Tandav presents Tandav Premier League 2023. And that's down the leg side. That is a wide call by the official. The non-legal deliveries are getting added to the scorecard. I think Monk Strikers would be expecting really more of these kind of deliveries. That would really help them. Good delivery, very good delivery. That was pretty much in the line. Beating the batsman, getting dotted. 3 more to go. High in the air again and another wicket. Sagar is also walking back to the pavilion. So the new man in comes Mr. Pranam in place of Sagar at the striker's end. Monk Strikers would be definitely expecting one big hit at least in the next 2 legal deliveries because the score is still at 20 on the board.
it would be really difficult for their bowlers to defend it. So they would be expecting one big hit. And he strikes! And he strikes! He pleased. So it's the last legal delivery in progress. 26 on the board. Can he hit one more? Can he strike one more? Pranam, will he be the man? Will he be the man to change the momentum for Team Monk Strikers? In the previous matches also he had struck 2 sixes, probably 3 or close to that. And will he be the man again? One he has already struck in the very first legal delivery he faced. Is the final delivery in this innings. That is the completion of over number 4 and the score moves on to 29 on the board. 30 is the target. 24 legal deliveries to go for Team Golden Garudas. End of the day, end of this over. Probably Monk Strikers have come to a comfortable position wherein the bowlers can defend this total. So let's wait and watch. Will it be Monk Strikers defending the total or will it be Golden Garudas with the chase? So let's get back after a short break with Mr. Gopi. छक्के के लिए रवाना किया प्रथमेश ने और इस छक्के के साथ वो और अपनी और अपने टीम का खाता खोल चुके हैं और गेंदबाज सौरभ जो थे जो कि छक्का प्रदान कर चुके हैं अपनी पहली गेंद पर। तो गेंद के लिए तलाश इस वक्त जारी है अंपायर। तो गेंद को तराशने के बाद इस वक्त गेंद को लाई गई है और 6 रन इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं प्रथमेश पारी के प्रथम गेंद पर। और इस बीच अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार प्रथमेश, जबकि इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सौरभ दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी बारी का यहां पर प्रगति पर। बेहतर गेंद थी, फुल लेंथ गेंद, गेंद को ऑन साइड पर उछलना चाहा, फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और रन से नहीं मिलेगा। खासकर पावर प्ले का फायदा उठाने का
प्रयत्न इस वक्त करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज प्रथमेश और इस बीच गेंदबाज सौरव एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो द विकेट, ये गेंद इस बार पुल किया मिड विकेट पर। So this is an absolutely fantastic strike. So 2 sixes in the 3 deliveries. Positive start for the batsman. Saurav is tayar. Reverse shot. Just wanted to play the reverse shot. Not succeeded this time. The ball stuck to his leg. गेंद उनके पैरों पर टकराई और आखिरकार रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर और निस्संदेह यहाँ पर धनात्मक शुरुआत, पॉजिटिव स्टार्ट जिस अंग्रेजी में कहते हैं, इस वक्त प्रथमेश कर चुके हैं पावर प्ले का फायदा उठाते हुए। और एक बार फिर से तैयार सौरव की गेंद का सामना करते हुए तो 16 रन बन चुके हैं, 5 गेंदें। और यहां पर देखिए गोल्डन गरुड़ा के डगआउट से किस तरीके का शोर शराबा यहां पर दिखाई दे रहा है, उनके समर्थक सपोर्टरों से। और यहां पर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर कमिंग अप। .33 runs per over, 10 required in remaining 3 overs. Absolutely marvelous start. और काफी हद तक यहां पर चीखे आवाजें इस वक्त दिखाई देते हुए गोल्डन गरुड़ा के डगआउट से, all because of this man Prathamesh, who started and blasted and got 20 runs in the first over in one and only power play over in fact. सेकेंड ओवर स्टार्ट्स, दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ। क्लाइमैक्स तांडव प्रीमियर लीग 2023-2023 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ। अश्वत्थ गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और पहली बार सामना करने के लिए तैयार प्रणव। और इस बीच पहली गेंद लेकर तैयार एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट V4 न्यूज 24/7 चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर, श्रीमान मानिक इनके सारथ्य में। और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट का क्लाइमैक्स यहां पर गुजरता हुआ। ओवर की पहली गेंद दाहिना तो ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार विकेट कीपर चुके, रन के लिए दौड़ पड़े, प्रथमेश के लिए खतरा, लेकिन निशाना यहां पर लगा जरूर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर अपना बल्ला रख चुके थे, लैंड कर चुके थे बैट। और एक रन का इजाफा, 21 विदाउट लॉस, 17 balls left, just 9 more runs now they have to score for victory. Everything going in favor of Golden Garuda now, all because of this man Prathamesh. He is looking on fire. He is now back to strike. और गेंदबाज इस बीच तैयार, अश्वत्थ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रथमेश के लिए यह गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर, 22 विदाउट लॉस। और 8 रन सिर्फ अब चाहिए विजय के लिए, जस्ट 8 more runs they have to score for victory। और अगली गेंद लेकर इस वक्त अश्वत्थ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, सामना करते हुए इस वक्त प्रणव। और दाहिना तो ओवर द विकेट अश्वत्थ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस वक्त प्रणव के लिए, गेंद को ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 23 without loss. What a fantastic progressing year for Golden Garuda. They are heading towards to their victory now.
अपने विजय की ओर अग्रसर होते हुए इस वक्त गोल्डन गरुड़ास, और ऐसा कहना पड़ेगा मॉन स्ट्राइकर्स को कुछ चमत्कारी गेंदबाजी, मैजिकल बॉलिंग ही अब इस मैच में वापस ला सकती है। और इस चौके के साथ विजय के और निकट हो चुका है गोल्डन गरुड़ा, 27 without loss. Prathamesh is now batting on 25 now. 25, he is batting on 25 in just 80 deliveries with a strike rate of 312.5. Full toss, turns it away, down to a gully, gone through a quick single and is gone. प्रणव का विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में। जोखिम भरा रन चुराना चाहता और आखिरकार भुगतान उन्हें करना पड़ा। अब रन से चाहिए सिर्फ 3 और गेंदें बाकी है कुल मिलाकर 13। तो निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट तांडव प्रीमियर लीग 2023 का क्लाइमैक्स इस वक्त यहां पर गुजरता हुआ। और जहां तक सवाल है कैनरा कॉलेज के विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने इस श्रृंखला का आयोजन किया है। 27, 3 रन्स टू गेट और निस्संदेह एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला के अंतिम क्षण हमें यहां पर देखने को मिल रहा है और गोल्डन गरुड़ास अपने विजय की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ। लेफ्टी बैट्समैन इस वक्त षणमुख का स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और गेंदबाज अश्वथ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। 3 रिकॉर्ड इन जस्ट 13 डिलीवरीज और गेंदबाज इस बीच ये गेंद रिवर्स शॉट, दैट्स इट with a strike rate of 280 plus, and with his help they become the champion of the edition 1 Tandav Premier League 2023, which proudly organized by the students of Canara College, Mangalore. So fantastic tournament has been came to an end. All cricketing actions are over and now we are taking a short break and we'll be back right after the short break, not with cricketing action but in the prize distribution ceremony. So players, spectators and players, please don't go away, stay with us and we'll be back right after the short break with in the prize distribution ceremony. And now it's time for break and also it's time for DJ. Thank you. Dhanyawad. पिक्चर दाखल बयदेर पिक्चर तಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ आतेना मुझे प्राणिला ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ पिक्चर तक ಗೊತ್ತುಂಡತಾ पिक्चर तकलता मिनिट तकलता बेंच इंद्र सन्नी निकलेगी। ओ देवरे टॉपिक चेंज होगा।
ರೀತಿಯ ಜನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಇವೊಂಜಿ ಗರ್ದ ಗೌಜಿದ ಅಖೇರಿದ ಲೇಸದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಜ್ಜಿನದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಇವೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜದ ಜವರ್ನೆನ ಗೇನದ ಸಿರಿಗ್ ಅಕ್ಲೆದ ಲಟ್ಟೆದ ಬಲಕು ನಿಲೆಯಾದು ಪುನಃ ಈ ತಾಂಡವ್ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡ ನಿಲಿಟ್ ಅವೇತೋ ಪಂತೊಲೆನ್ ಪೇರು ನೀರದ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಿದು ಒಕ್ಕಟ್ಟಡು ಮಂತದೇರು ಇನಿ ಈ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಈ ಲೇಸಿಗು ಬರುಡು ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರುಗು ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಓಕೊಂದೊಂದು ಬೈದುಪ್ಪನ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಗೌರವನು ಸಲ್ಲಾವಡಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಂಟದ ಅಡ್ಡನಿತ ನೂಲುಲೆ ಲೆಕ್ಕೋ ಹೊಂದಿಕೆಡು ಪಿಂಟಾದ ದಿತ್ತಿ ಪೂರ್ ಬಲ್ಲುದಲಕ್ಕೋ ಯುವಕೆರೆನ ಸೇರಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತಪುನ ಜಗದೀಶ್ ಮಿರಗ ಕುಡರ ಎದುಕೊನೊಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಕುಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಆದಿಪುನ ದೀಪಕ್ ಮೇರು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೋದು ಮೇರೆಗ ಸಂತೋಷ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪಿ ಮೂಲಕ ಸೌಬೀರ್ದನು ಕೊರಡಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೌರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಜೀಮ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗೋಡು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿಡ್ ಸಕಾಯ ಮಂತಿನ ಗೋಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಾಂಕ್ ಮೆಕುಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಇನ್ನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಮೇರೆಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿಶೋರ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಓಡಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಶಾಂಕ್ ಮೇರೆಗ್ ಆಕಾಶ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಡಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡುಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದಿ ಪುನಃ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ದ ACP ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲೇ ACP ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಪೂರಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತಮಗಾಗಿ ಇರಿಸಿರುವಂತಹ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಗೂಟೋಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ನಂಗೆ ಸಕಾಯನು ಮಂತುನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದಿಪ್ಪುನ V4NEWS ಮೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಕಾಯನು ಮಂತಿನ ಆಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿಶೋರ್ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸುಜಿ ನೇರ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಒಂಜಿಗರ್ದ ಗೌಜದ ಈ ಅಖೇರಿದ ಲೇಸಿಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಬತ್ತ ಸೇರೋನಗ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರನೇ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರನೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಸೌರವ್ ಗೌಡ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರು ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡ
ಒಂದು ಆಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಂತೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಗೋ ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಪ್ರಣವ್. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೀಮ್ ದ ಮಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಪದಕವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರ ಬಳಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ತಾಂಡವಿನ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮ್ ಲೀಗಿನ ಮಾಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಆಯೋಜಕತ್ವದ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಾವೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡ ಟೀಮಿನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ವಿಜೇತ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಟೀಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2023ರ ತಾಂಡವ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಓಂಕಾರ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಹಾಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿರಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ವನಿವರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಹಾನ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಕುಲ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. And also we have Varuni Nagraj Mangal Devi from Mangalore. From morning itself, she has been with us and been a great MC for us, for all the guests in here. So I also welcome you, ma'am, and thank you so much for your support. I need a big round of applause for this. So thank you so much. Thank you so much for your support. So we are signing off probably here. ಮೇರೆಗಳ ಬೆರಿಬಲನು ಕೊರ್ತಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾವೋದಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ಬೈದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮೀಟರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿರುಗಿದ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರ್